Hello and a very good morning, all of you, ladies and gentlemen. On behalf of Indian Chamber of Commerce, I welcome all of you to the 5th ICC Gems and Jewellery Summit 2023. What a beautiful day this is. And of course, ask a woman when she is talking about gems and jewelry. I believe for time immemorial, we women have been associated with gems and jewelry. For us, or let's say in the heritage of our country, gems and jewelry have, or any abhushan, had always been stridhan. Because when you do not possess money or land, jewelry is something that you hold close to your heart as your economic stability. And that is it for a woman. But in ancient times, we also saw men loving and wearing and investing in gems and jewelry. As we believe in 2023 that old times come back and fashions and trends in jewelry and gems have seen unprecedented changes, and they are coming back with equal fervor for both men and women. Ladies and gentlemen, this summit is definitely very, very important and interesting as the structure of the market is changing every day. There are changes in demand patterns, there are changes in regulations, there are changes in the kind of participants that we had in the market. And we believe this conclave will be the place where you will network in your own industry, know the changes, and pave the way for a brighter future. On that note, ladies and gentlemen, this is the time that we start off with this beautiful day. I once again heartily welcome all of you. And before I go on to the formal session, I would request all of you, it's a beautiful day, a very energetic day. You can hold back your smiles because I'm seeing so many serious faces very much in the front row. Sir, if you could really bring back your smile and feel energetic in the front row, we can have a beautiful day ahead. And I want all of you, I believe any conclave is successful when you feel the positive aura around you. And to feel that, let's give a round of applause to the conclave, to yourself. Please, everybody. Keeping with the heritage of our beautiful country, ladies and gentlemen, we believe in lighting the auspicious lamp that marks the beginning not only of a beautiful day, but a beautiful journey full of positivity. I will now take this opportunity to welcome my delegates once again to light the auspicious lamp. Please welcome Mr. Vinod Bamalwa, Chairman, ICC Expert Committee on Jewelry and Lifestyle. Please welcome Mr. Som Sundaram PR, Regional CEO, India World Gold Council. Can we please have with us Mr. Rajiv Garg, CEO, Gem and Jewelry Skill Council of India. We have with us our chief guest, Ms. Vandana Yadav, IAS, Principal Secretary, Department of Industry, Commerce and Enterprise, Government of West Bengal. Please welcome Mr. Shubhankar Sain, Co-Chairman, ICC National Expert Committee on Jewelry and Lifestyle. Please welcome Mr. Sunil Poddar. Can we please have Mr. Samar Dey? Please welcome Mr. B.A. Ramesh. Can we please have the presence of Mr. Ashok Gautam? Let's have Mr. Chirag Soni with us. Can we please have with us Mr. Aanchal Jaiswal? Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Aradhana Mishra, Deputy Director, Sectoral Association and Large Initiatives. I would request
all my dignitaries to kindly proceed towards the auspicious lamplighting that would mark a beautiful journey of all the associates and all attending the fifth ICC Gems and Jewellery Summit 2023. Thank you so much. I would request all of you to kindly take your seats, and I would request Mr. Vinod Bamalva, Chairman, ICC Expert Committee on Jewelry and Lifestyle, to kindly come towards the welcome address. But before that, I shall take this immense opportunity and grace of calling all my delegates on stage. Please welcome Mr. Vinod Bamalva. Can we please have Mr. Som Sundaram PR? Please welcome Mr. Rajiv Garg. Please put your hands together as I welcome our chief guest, Ms. Vandana Yadav, IAS. Can we please have Mr. Shubhankar Singh? I would now request Mr. Vinod Bamalva to kindly greet our wonderful guests with flower bouquets and lots of good wishes from our end. I would request sir to kindly welcome Mr. Rajiv Garg. I would request sir to kindly welcome our chief guest, ladies and gentlemen, Ms. Vandana Yadav, IAS. I would also request sir to kindly welcome Mr. Som Sundaram, PR. Now I would request Mr. Vinod Bamalva to kindly come up for the welcome address. Good morning. It's an honor for me to welcome all the speakers on the occasion of 5th Gems and Jewelry Summit organized by the Indian Chamber of Commerce. On behalf of Indian Chamber of Commerce, I would like to welcome our chief guest, Ms. Vandana Yadav, Principal Secretary, Government Department of Industry, Commerce and Enterprises, Government of West Bengal, and MD, WBDIDC, and to the forum. I would like to thank Mr. Rajiv Garg, CEO, Gems and Jewelry Skill Council of India, to the event. It is also my privilege to welcome Mr. Soma Sundaram, PR, Regional CEO, India, World Gold Council, to the summit. A soaring middle income level of consumers within the developing countries, alongside a growing fashion trend, have been significant contributors to the increase in demand for gems and jewelry in the country and around the world. In the current emerging fashion trend, diamonds are also expectedly having an increased demand these days. The increase in cross-cultural designs is one of the latest trends gaining popularity in the gems and jewelry market. Rising urbanization has resulted in changing consumer behavior related to accessories,
switching from wearing more pieces of jewelry to keeping it to a minimal and sophisticated while maintaining the style statement. Such evolving factors have led to substantial demand for fashion and lightweight jewelries in the market. Post-COVID, Indian gems and jewelry units have assimilated the revolutionary technologies into their production units, which effectively craft intricate pieces of jewelry in no time for local as well as exports. Indian gem and jewelry sector is majorly focused upon export promotion and reduction of imports, which will reduce current account deficit of the country and encourage foreign currency in the market. Such focus is primarily enhanced by the skill development of artisans associated with the sector. Focusing on that goal, a common facility center has been set up by Ministry of Commerce by Government of India. Common Facility Center is a pool of high-end and capital-intensive state-of-art machinery offering various services at affordable rates, especially beneficial to the micro, small, and medium enterprises sector of the gem and jewelry industry. This will surely help the marginal workers upgrade their products, quality, and output. Although affected by the pandemic, gems and jewelry industry have seen growth recovery in terms of jewelry sales, both via showroom, e-commerce, and other means. The growth potential of the segment is huge, and it is sure to revive and restore with adequate government support, which has taken various measures recently to promote investment and upgradation of technology and skills in the industry. Having said that, one headwind which our industry is facing is constantly changing landscape when it comes to gold prices, laws, and duty structure, which make it difficult for an average person to navigate and manage. We hope to understand more about these problems from our esteemed panel. And without taking more time, I would like to welcome on stage our next speaker for an insightful deliberation. Thank you. Mr. Somasundram, excuse me. Sorry about that. Ladies and gentlemen, next I'd like to call upon keynote address Mr. Shom Sundaram, PR, Regional CEO, India, World Gold Council. Chief Guest, Ms. Vandana Yadav, friends and colleagues in the industry, very good morning. Thank you all for being here today. I'm very glad to hear that this is the fifth conference of ICC on gold. And I'm glad that we have been supporting this every year. East is a very important market for gold. So it is important that we take the discussions forward. So I will always be quite brief about what I want to say. We have lots of panel discussions today. We'll try and cover a lot of points there. Let me set the context here. We have seen a lot of developments from the government side in the last couple of years, starting with, of course, the sovereign gold bond, gold monetization scheme, some of which did not pick up. But of late, if you see, they have made mandatory hallmarking. There are, I know, some dialogues going on about unique identification and things like that, but it is an interesting move that the government of India has made. You have also seen the government come out with an international exchange. Now, some of that may not really mean for the jewelry industry. What does it mean? So there is an exchange. So what, we were getting gold earlier, we are going to get gold now. So what is the big difference? But that's where we need to just take as a second largest consumer of gold, second largest market in gold in the global market. We spend nearly $60 billion every year on gold. We need to look at what is happening internationally. Internationally, if you see, gold is now coming back into a great significance, even with the central bankers. Sorry about that. Gold is coming back because you saw central banks buy close to 1,000 tons last year. Even during the gold standard, they did not buy 1,000 tons. Of course, driven by China, but India has been buying gold. Several central banks have started buying gold.
So on the one hand, gold is becoming a monetary asset once again, a very, very significant asset. So when you start using it for jewelry and for adornment, you're going to have a clash of interests here. Is it an asset or is it a lifestyle? Is it an ornament or is it a lifestyle? Now, we would like to treat it like an ornament, but obviously it has a financial implication. At 62,000 rupees, today Indian prices for 10 grams is 62, it's a serious investment. So it means that when some household is willing to put that much money, you have to create more trust. As a consumer, we can't simply continue to behave like a consumer in the world. We got to probably take a little stronger and a little more decisive role in the global markets. Because definitely, with the demands on resources for our infrastructure, this outflow of dollar will continue to concern any government. And we are going to be in that spotlight for a long time to come, at least, till maybe monetization picks up or we find other means of finding gold. So this is, I would just set this context. Globally, lots of things are happening in gold. And domestically, we need resources, prices are going up. So obviously, there is going to be a lot more in terms of how we use gold. I'll also give you one more data point. Recently, we all know that the tax compliance is increasing. And we know our industry has benefited from a little softer compliance. And as this gets a little tighter, you're going to have people pulling out of gold and going into financial investments. So unless, and the last one again, digitalization across the financial sector is improving. But is it such a great thing in the gold market? What's happening around the world? That's again a question for the industry. And you see, recently the government has just made a change. Anything above 5 lakhs, if you pay insurance premium, that's taxable. Now, if you say gold is a financial asset, 62,000, whatever, when other financial asset classes are getting taxed in this manner, there is a genuine question that will arise that, what kind of taxation should apply to this asset class, which is, as I said, $60 billion is flowing into this every year. This is not to say that the industry is not doing a good job. It's creating a lot of jobs. It's got an immense potential to increase exports, but it is important to understand the context here. So we have to see some of the changes that is being brought out in this light. Now, where do we stand with these high prices? Where do we stand in terms of trust? We have done surveys. It still continues to show that consumers are concerned about purity, about various aspects of gold industry, which is why we said the industry needs a unified voice. It needs to take charge of its own fate. And we are obviously working with various associations to see that we have a self-regulatory organization. We will, as time goes by, we will continue to increase awareness of that. But we see the gold industry needs a self-regulatory organization, just like a AMFI or the IT industry has a NASSCOM, things like that. We just need to take our own best practices and spread it across. That's one of the things that we want to do for this country. And the last one, as far as ICC is concerned, we have the fifth this thing, so I will stop with that, but very important. I think there is no unified voice in this industry. I have heard it even from the ministry that, one association says one thing and then immediately another association goes and says something else. It is an absolute confusion that is being created by ourselves. Not because we don't mean well, but the problem is we have other various interests that come in the way of facilitating a unified dialogue. I think that should be sorted out. And what I would request ICC is, now that you have actually got this on the 5th year in a row, and it is now becoming a fixed feature of the gold market, could we actually, as your committee, take a stand on many of the contentious issues? You don't always have to go against an association, but a HUID. Well, you've got the biggest number of artisans here. HUID, do we support it or we don't support it? If we don't support it, why don't we support it? I think it is an important thing to have a dialogue. It's not about having an argument all the time. It's just important to have a dialogue and present to BIS, to the government, that these are the issues that we face. And I can tell you, we have done this with various things. Much of what we say is a problem is a self-created problem. And I think that is where I said,
understand that compliance, tax compliance is improving. Money from the gold market will shrink. Because if you really look at it, we all know it. We have been in this industry for a long time. The laxity in compliance did help the market. Now, when the laxity is being tightened, where do we stand when prices touch 60,000 and 75,000? Very important question for all of us. Otherwise, you will be in that proverbial frog in the water as the water gets heated up. That kind of a situation. But let me once again say, Indian industry, we have seen the world. China is number one, India is number two. It has got immense potential. The handcrafting skills here is just unbeatable. At the same time, we still don't have a strong market in exports of gold. Look at diamonds, what they have done. I think it is important for us to replicate it and build again for that a unified voice where ICC can play a role. Thank you all very much. Ladies and gentlemen, now it's time that I call my next speaker. Can I please have our special guest, Mr. Rajiv Garg, to say a few words? Please put your hands together for Mr. Rajiv Garg, CEO, Gem and Jewellery Skill Council of India. Thank you, Vinodji. Thank you, Shivankar. And thank you, ICC, for having me here. थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलूंगा चलेगा because I think there are a lot of people who would want to hear in Hindi also. थोड़ा सा डिफरेंट बोलूंगा. I know this is a gold event, लेकिन मैं सेक्टर स्किल काउंसिल से आता हूं और गोल्ड पर्टिकुलरली जब हम लोग गोल्ड ज्वेलरी की और हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी की बात करते हैं तो स्किल सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. अनफॉर्चुनेटली हम उसको खाली लेबर चार्ज करके भूल जाते हैं. बट विदाउट आर्टिजन्स, विदाउट स्किल्स in crafting the jewelry, I think gold would just be another metal. So gold has its value because we want, and as she said in the beginning, every woman wants a lot of jewelry. And to make jewelry from gold, you need skills. थोड़ी सी बातें हैं जो विनोद जी ने भी बोला और सोम ने भी अपने उसमें एड्रेस में स्किल का बात किया. स्किल सिनेरियो में क्या चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और आईसीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर ईस्ट में क्या कर सकती है ताकि हम स्किल में आगे बढ़ सकें. आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू सम पीपल और वो बोले ट्रेंड कारीगर नहीं मिलता है, स्किल्ड कारीगर नहीं मिलता है. तो ये स्थिति अगर है आज की डेट में तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं. अनलेस वी गिव कारीगर इज ड्यू, ये प्रॉब्लम रहने वाली है. आई नो आपने बाहर देखा होगा तरकशी ज्वेलरी के 2 आर्टिजन बैठे हैं, वो हमने फैसिलिटेट किया, वो कटक से आए हैं. आप जाके उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे उनके बच्चे ऑटो रिक्शा चलाना प्रेफर करते हैं या कोई मोबाइल रिपेयर शॉप पे बैठना प्रेफर करते हैं, लेकिन तरकशी में बैठ के ज्वेलरी बनाना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं वहां पर उनको ज्यादा मिलता है, यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता है. तो अगर वो सिनेरियो है तो उस सिनेरियो को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज एक तरफ तो हम कंप्लायंस, टैक्स स्ट्रक्चर, गोल्ड रेट की बात कर रहे हैं, बट सोचिए कि अगर आपको आर्टिजन ही नहीं मिलेंगे और सब कुछ आप जो फैक्ट्री में भी बनाते हैं कास्ट ज्वेलरी, वहां पर भी कारीगर चाहिए. इट्स नॉट दैट कि वो सब ऑटोमेटिकली बन जाता है. तो अगर वी डू नॉट हैव sufficient number of trained people in the industry, then we will face another type of challenge in coming years. So we all need to think about it and work about it. I'll just put a few pointers. I'm not going to get into the details of those things, but क्या हो रहा है at government level, at international level. You all know India has G20 presidency this year. Now, under G20, there are 6 themes which they are working on, and one of those pillars, one of the theme is education and skilling.
एजुकेशन स्किलिंग थीम में वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग, जो मिनिस्ट्री के वेबिनार होते हैं, March 2 webinars have happened, and what they are focusing on is future of work, के आने वाले टाइम में वर्क प्लेस कैसे होने वाला है, वर्क प्रोसेसेस कैसे होने वाली हैं, और वर्क फोर्स कैसे होने वाली है। जो स्किल हमको लगता है आज इम्पोर्टेंट है, अब से 10 साल बाद हो सकता है उनकी जरूरत ही ना हो। सो आप लोगों ने सुना होगा 3D प्रिंटिंग। नाउ 3D मेटल प्रिंटिंग इज अवेलेबल। आज की डेट में इट इज नॉट कॉमन बिकॉज इट इज प्रॉब्ली नॉट इकोनॉमिकली वायबल, बट in coming years, if 3D printing is what takes place, then probably हर एक jeweler की shop में you will find a 3D printer जो directly gold से print कर सकता हो jewelry। तो आप जाएंगे, आप अपना डिजाइन बताएंगे, वो कहेंगे आप शाम को आके अपना ज्वेलरी का पीस लेके जाइए, as long as it is a simple piece, ring है, earring है, pendant है। So we have to think about those things. Another thing in the same line, GJSCI or IIT Bombay, we have been working on a project for last almost 3 years. We lost about a year because of COVID, which is about use of artificial intelligence and machine learning in gems and jewelry industry. हम लोग 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग साइड में, एक रिटेल साइड में। एंड रमेश सर, योर ग्रैंडसन has been in conversation with us, and Thanga Mile is parallelly trying to work with IIT Bombay on that. So that is another skill set that would come. So अगर हम उसको use करना चाहेंगे, so what we are working with IIT Bombay is developing the software, developing a product. Now on Monday in Mumbai, we are having a workshop at IIT Bombay, wherein we are going to announce the launch of the retail product, wherein it is on retail forecasting. Individual store level पे आप ये predict कर सकेंगे कि next week, week after that, third week, for next 3 months, weekly basis पे what product would your store sell and in what price range. So if we say next 4 weeks में you are going to sell 200 rings, I'll also tell you out of these 200 rings, you would sell probably 50 rings, which would be under 25,000 rupees. You would sell another 100 rings, which would be between 25,000 and 50,000. So that type of a distribution will be able to forecast. And we have been working with some of the leading retailers, and the forecast of the model maps very, very close. I would say 97-98% to the real figures जो बाद में होता है. So my model predicted something, and then you actually had that time, had that sale, and when you compare, it looks similar, it looks same. So that is a very strong change. The way we have been doing merchandising, retail merchandising in our stores is going to change. Because आपको फिर एक कोई merchandiser ऐसा नहीं लगेगा कि जो बैठ के आपका sample line देखे and decide करे, okay, in this store I want to carry these products. So our computerized software would be able to predict it for you. So that is again a shift in the type of skill which would be required or which would be adopted by our industry. Another important factor which Vinodji said, and you have a CFC here now in Kolkata. We have a lot of CFCs in a lot of places, but what they all miss is a common thing of skilling infrastructure. CFC बन जाता है, equipments आ जाते हैं, but वहाँ पर skilling का infrastructure नहीं होता है, space भी नहीं होता है, trainers भी नहीं होता है. So again, most of these CFCs, after you would see 3 years, 5 years, are just existing, they are not functioning. So actually GJEPC has reached out to us to find out a solution to this problem. How can we have training happening in these CFCs? So जो कारीगर है वहाँ पर, उसको पता चले कि इसका utilization क्या है, what are the advantages of this CFC, how can he make use of it, how can he get benefited. So we are working on something. There are many things, but I think I'll just add one more thing for Kolkata. We have been talking with Shivankar, with your Ankur Hati Association, Podar Sunil ji here हैं, यहाँ पर हैं, about setting up a training institute
somewhere in Kolkata, maybe Ankur Hati, because there is a big production center there, or anywhere else, or even in CFC, part of CFC, but industry has to come forward. Now, government is very clear, they are not going to spoon feed everything. वो बोलते हैं कि अगर industry को trained manpower चाहिए, then industry should come forward, take a leap, make investments, at least in training infrastructure. बाकी सब इंडस्ट्री में, मैंने फूड इंडस्ट्री में 15 साल काम किया है. हम कोई गवर्नमेंट ट्रेनिंग पे डिपेंडेंट नहीं होते थे, हम अपनी ट्रेनिंग के लिए खुद इन्वेस्ट करते थे. सो व्हाई नॉट आवर इंडस्ट्री हियर? सो वी शुड, एज Som was saying, we have to look at it differently. We have to look at gems and jewelry sector as an industry which is internationally competing with others. We are exporting diamonds, we export a lot. Why not gold jewelry? Again, your hallmarking, your standardization, World Gold Council is doing a lot of work on that, and skilling. Have a set of skill. Why can't industry say कि आपका GJSA का सर्टिफिकेट लेके आइए तो हमको मालूम है आप स्किल्ड हैं? You still want to have, आपके यहाँ बाबू काम कर रहा है, उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका ग्रैंडसन, उसको आता होगा. And then we all know somebody who has been so reliable would probably not be as competent as you would want him to be. And last thing, another future sign, we all love natural diamonds, but we all know lab-grown diamonds are going to get big. Now, the government of India has made a provision of 150 crores for research and development work in lab-grown diamonds. And IIT Chennai is the lead institute who's doing this. So at GJSCI, we are in conversation with Professor Rao there, and we are going to make some qualifications in lab-grown diamond area also. What I'm trying to say here is that as industry, we should be open to these new ideas, because finally your natural diamonds are mine. You have sustainability issue, you would have supply issues. So lab grown diamonds sooner or later are going to push natural diamonds slowly out. So we should be willing to adapt to that, and we should be willing to invest in skilling in these new upcoming areas so that we are ready, our industry is ready to face the world. Thank you. Thank you so much, sir. Hello. Now, ladies and gentlemen, please put your hands together as I welcome on this podium Ms. Vandana Yadav, IAS, our chief guest. She's the Principal Secretary for Department of Industry, Commerce and Enterprises, Government of West Bengal, MD, WBIDC. Namaskar and a very good morning. I must compliment the organizers for starting on time. I have got tired of coming into empty halls and then now made a point that I should come at least 10 minutes late. It was very good to see the house ready and the function having started. So I think you've started on a very good note. And I must also thank the speakers before me for actually setting the context and giving relevance to what we are talking about. Mr. Bamalwa talked of certain very good things. Mr. Somsundram, Mr. Rajiv Garg, really thankful for the things which you put forward, because you actually helped me tone what I wanted to say. So the gems and jewelry is a sector where everybody has something to say. In fact, I think, every morning discussion, किसी को सोना लेना हो ना लेना हो, पर सोने का दाम बहुत हो गया, हर कोई बोल लेता है. So it's a sector where everyone has an interest, everyone has something to say. So it is also a sector where we in Bengal have a very strong historical and artistic legacy, but we keep building on that. And I'm very glad that Mr. Garg said something very nice, that we need to look at the future. So what is it that we want to talk of? What are the things which I wanted to say? See, I'm glad that the issue of exports and prices came up, and we keep talking of diamond exports, and we keep talking that, why gold is not missing, and how much we import. I was in Department of Commerce before coming back to Bengal, and we always talked of gold being the major drain on our dollars, that, we need to import so much. But even after importing it, why can't we do the value add and we can make it into a dollar earner rather than just something with which we import
uh, gold. And I think this is where the artisanal quality of the Bengali karigar, I think, and the training which you talked about, that can be the USP. I think in a, especially gold being a lifestyle product, and as we move to a higher level or a better economic position, everybody wants that unique handcrafted piece. I mean, after just um, like bulk gold, it is also matter that, every uniquely crafted piece, that handwork thing, whether it is a cartier or something, that is what will fetch it value. And that is something which we can very readily provide. So we can actually train our artisans into the new technologies, maybe, just make it a little more, provide a little better working conditions, do better designing, which a lot of our designers are actually doing and more capable of. We can actually bring all of them together to make gold jewelry one of our major export earners also. Uh, Along with this, what I wanted to say is that, for us from the government, I think it's a very, very important sector. The first specialized park of WBIGC was in the gems and jewelry sector, which was Manikanchan. That was the first time when we came up with a product specific park, and we thought we had done it very well. Of course, with time it has changed, and then we came up with Ankur Hati, which remains our most successful park in terms of its brand value which it has created. So while we have this history of the government and the industry coming together, there is a lot more which we can do. And this is where I am really glad of the speakers who came before me, because this is exactly what I wanted to talk about. That is, in fact, that was my purpose for coming here. Past glory, what we have done is good. What now? So I think in terms of the Gold Council, um, standardizing, building investor confidence. What can we do for that? Please tell us, we want to set up those facilities, whether it is hallmarking facilities, it is any type of standardization which can do, any type of certification agencies we can set up. We have the Ankur Hadi Park, we have the Common Facility Center. We want to set up these type of branding and certifying bodies and give them place here. We would be very happy if you could come up and take this work. Similarly, Mr. Garg talked before me. He said, I think he hit the nail on his head when he said that we have common facility centers, and at least I myself am talking last 3 years with different councils at different forums saying that, we really want to do training facilities at the Ankur Hati Park. Not only our own common facility center, we have a full-fledged building next door which has been created for training infrastructure. It was created for that. It has adequate space, and I would really want this to be taken up either by the council or by the skill council to come forward and take this. So I think that is where I would want you all to come together. And since all of you are already here, ICC is a forum which we work with very closely. I would request Mr. Sen to be our local representative. He is in the park, he is from here, he has a brand value which we all cherish. So if he could be the tie between us, be our voice, and put an action plan together of how we can make this training space and the standardization facilities available and take the Ankur Hati Park to a next level. So I would be very happy if some concrete suggestions, action plan could come out of this, and you have every stakeholder here. We have our full support with you. You tell us what is it that you require us to do. If the infrastructure is not here, we have this ready infrastructure which we are willing to give to the council. We want the council to take it over and do some good training programs over here and bring the gold jewelry to the next level of value add, which we are very confident we can reach. I think that's all that I had to say, and all my points have been well covered. I'm very glad that we could have this discussion. I think I'll end here wishing a good session and wishing everyone a good, productive panel discussion. And lastly, like I said, we would request that all the stakeholders could come together and present us with an action plan so we can say something concrete came out of this. We would be very happy to collaborate, work together in any way that is possible, and we look forward to that. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now it's time, ladies and gentlemen, that we hand over the mementos to our guests for the 5th ICC Gems and Jewellery Summit 2023. I would request Mr. Vimod Mamalva, Director, Nemichand Mamalva and Sons, to kindly hand over the memento to Mr. Som Sundaram, PR, Regional CEO, India, World Gold Council.
Thank you, sir. Now I would request Mr. Shubhankar Sen, MD and CEO, Senco Gold, Co-Chairman, ICC National Expert Committee on Jewelry and Lifestyle, to kindly hand over the memento to our special guest, Mr. Rajiv Garg, CEO, Gem and Jewelry Skill Council of India, and also to hand over the memento to our chief guest, Ms. Vandana Yadav, IAS, Principal Secretary, Department of Industry and Commerce and Enterprises, Government of West Bengal. Now I would request Mr. Shubhankar Sen, MD and CEO, Senco Gold, to present the vote of thanks. Thank you everyone. आज आप लोग सब इस इवेंट में उपस्थित हुए हो, आपका व्यस्त समय निकाल के, तो इसके लिए मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद। बहुत दूर दूर से मेरे को मालूम है आप लोग डिस्ट्रिक्ट से भी आए हो, अब काम करके आए हो। The event wouldn't have been successful अगर आप लोग सब यहाँ पे ना पहुंचो, but at the same time हम लोग को याद रखना है कि ये जो आज हम लोग सुने हैं और सुनने वाले हैं, ये एक फैक्ट है कि समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है। मेरे स्टेज में जो है साथ में our chairman Mr. Vinod Bamalwa, Mr. Som Sundaram, Vandana ma'am and राजीव जी, जो हम लोग को आज ओपनिंग स्पीच में बताया गया है, क्या क्या अगर हम लोग उसका एसेंस समझे तो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का सोच, रेगुलेशंस आ रहे हैं, सारे चीजों का ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो बदलता हुआ समय और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इस सिचुएशन में एज अ मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री, या तो आप रेजिस्ट करो, या तो ये जो चेंज है, जो परिवर्तन है, इसको आप अपना एक पार्ट बना लो और खुद को चेंज करो। तो जैसे हम लोग ओवर द पास्ट 100 इयर्स देखे हैं कि परिवर्तन इज अ कांस्टेंट, तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड होने वाले हैं, इसमें हम लोग जितना अपने आप को अपडेट कर दे, उतना ही हम लोग सारे लोगों के लिए अच्छे हैं। कि हम लोग कोई भी लेवल पे रहे, खुद को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं छोटा हूँ या कोई बड़ा है। अपने अपने लेवल में आज हम लोग जो सुनते हैं, विच इज कॉल्ड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फंडिंग, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आइडियाज, मतलब ये जो पावर है, ये पावर खाली कुछ लोगों के ऊपर नहीं है, ये पावर धीरे धीरे ऐसा ही होने वाला है कि हम लोग सभी के हाथ में, अपने आपस में, इट इज अप टू अस दैट हम लोग वो पावर को कैसे यूज करें। तो उस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम राजीव जी बोला, बंगाल के साथ कारीगरी, इसका एक बहुत ही एक क्लोज बंधन है। हम लोग प्राउडली बोलते हैं कि कारीगर ऑल ओवर इंडिया जो काम करते हैं, सब बंगाल से मैक्सिमम जाते हैं। तो ये जो स्किलिंग है, ये जो अपडेशन है, ये नया जनरेशन को हम लोग कैसे ट्रेनिंग दे पाए, ये हम लोग को मिलके, सारे लोगों को मिलके, पूरा इंडस्ट्री को मिलके काम करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट उस हिसाब से उनके साथ साथ जो डेटा एनालिटिक्स, हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड जो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, वो किस डिजाइन में या किस प्रोडक्ट में हम लोग सही तरीके से यूज करें, ये हम लोग को पूरा क्लियरली डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं, उसमें देखना चाहिए। और लास्टली वंदना मैम का जो कहना था कि अपना बंगाल जो है, हम लोग क्या बोलते हैं, सोनार बांग्ला, राइट? या you know, even so many of our names are linked to gold. So the point is that ये जो बंगाल के साथ गोल्ड और जेम एंड ज्वेलरी का जो सोच है, when the government wants to come forward and support, but at the same time हम लोग को as an industry ideas देना पड़ेगा। As an industry we have to go forward, and we are thankful to the government that they are there to support us, not only for the growth of the state but the growth of the nation. तो उस हिसाब से हम लोग को अल्टीमेटली एज अ स्टेट एंड अ नेशन वी हैव टू थिंक दैट पूरा वर्ल्ड को हम लोग को प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, तो ही अपना देश का इनकम बढ़ेगा और अपना भी इनकम बढ़ेगा। तो उस हिसाब से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, NSE, SGL, NCB, our associations GJPC and GJC for staying with us. And जैसे सोम सुंदरम सर बताए कि हर एक इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स का हर एक
एक थॉट होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हम लोग सारे लोग को इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड में अगर हम लोग साथ में मिलके काम करें तो आई थिंक अल्टीमेटली वी विल अचीव which is best for the industry. So उसके साथ साथ great thanks to the organizers, my fellow members from the ICC Gem and Jewelry Expert Committee. हम लोग ये event 5th year कर रहे हैं, and it is the continuous endeavor of ICC and our fellow members sitting right there for ensuring that this event is a great success. So thank you, look forward. And just as Som Sunam sir बताए, I think it's great responsibility, and as a council, we will put our best efforts to make sure that we can bring everyone under the same roof. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, delegates, for giving your time. And thank you, everybody. We shall break for only 10 minutes now for a very short tea break. What an invigorating inauguration was that. But coming up next are a lot of sessions which are going to enlighten us not only about the industry, but right after the tea break, ladies and gentlemen, remember, I will introduce you to a very special art which is intricately entwined with the heritage of our country. Yes, filigree, you must have heard about it. To know more about it, come back from your tea session just in 10 minutes. Ladies and gentlemen, welcome back post this tea break to the 5th ICC Gem and Jewelry Summit 2023. Yes, with full vigor, we are moving on with the day. As I told you, I will introduce you to a very special art form, a jewelry-related art form that is intricately intertwined with the heritage of India. I will do that, but in some time, because I also intend to introduce you to the artist. But before that, ladies and gentlemen, let's move ahead with the first session for the day. The first session is on the future of gold and gold markets. The panelists in my session, and I want all of you to put your hands together as I introduce them to you. Please welcome Mr. Harish Chopra, Vice President, India Gold Policy Center. Mr. Samar De, Director, All India Gem and Jewelry Domestic Council and President, Sharno Shilpi Bachao Committee. Our next panelist is Mr. Chirag Seth, Principal Consultant, South Asia Metals Focus. And ladies and gentlemen, this session will be moderated by none other than Mr. Som Sundaram PR, Regional CEO, India World Gold Council. And moderator as well. Oh, sir. Thank you. Yeah. So, welcome back. Ms. Wan did mention about starting and completing on time. We'll stick to that. So we are now going to be talking about the future of gold and gold markets. Obviously, very many things can happen. I mean, who can predict the future? But still, we have experts here who could probably decipher it for us in certain streams. So I would probably, I'll ask them a few questions. I'll ask them to express their opinions, and we'll take that as we go along. I'll also try and see if I can have 5 minutes of questions from the audience, but we'll still try and keep it within the time. We lost some time. No, the point is, somebody had asked 3 years ago or 4 years, what are the markets? I don't know how many of states that has happened with absolute clarity.
I mean, who would have known that gold is going to be 62,000? We could have invested all our money in gold and, kept it if we had known. But we would, I don't think even the exchange, despite various things, was reality at that point in time. So, hawking, etc. So it's going to be a difficult task. So I would urge you to, analyze the comments of each of the speakers in that light. It is difficult for us to, predict anything about the future. We see all that is happening in the globe and all that. But let me still take the initial comments. I'll first go to Samarde. He's from the Gems and Jewellery Council. He's also the president of Swarna Shilpi Bachan Committee. So what are your first thoughts on the gold market in the next 5 years? See, too much into the future is always difficult. I mean, everybody can say gold will be this. So let's keep it within the next 5 years. So, sir, and I also request as many of my panelists to speak in Hindi as possible or Bengali, please. So what are your initial thoughts? What do you think 5 years from now, what do you think are the major changes or major developments? And sir, when you're talking about it, talk about it more from the consumer point of view, as well as from the artisans and the jewelry trade point of view, sir. Thank you, everybody. Actually, sir, Hindi में बात कर सकता हूँ? Okay. हिंदी में तो हिंदी इंग्लिश बंगाली मिला के ही बोलेगा इधर में जो ऑडियंस बैठा है That's a good idea. They are mainly the Bengali. Am I right? Okay. Actually, आपको समझने के लिए एक बात बोलता है सबके लिए. The gold market has been volatile and difficult to predict the recent year. तो इसके लिए गोल्ड जो वैल्यूएशन अप डाउन कर रहा, the buyers are confused. इसलिए बाइंग थोड़ा स्लो हो रहा है. इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है कारीगर का ऊपर. जो आर्टिजन बैठा है, इट इज ऑटोमेटिकली द साइक्लिक ऑर्डर. जो शोरूम में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो कारीगर का पास कैसे काम जाएगा. इंडियन गोल्ड पॉलिसी जो है, हमको लगता है ये इज नॉट ए करेक्ट वे. तो एक्चुअली गोल्ड पॉलिसी का लिए सोचना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को. हम लोग का तरफ से जो गोल्ड पॉलिसी के लिए जो सुझाव दिया है, तो गवर्नमेंट शायद अभी तक उस लाइन में नहीं आया. तो इसलिए we are depending the gold purchasing from other country. हम लोग का सजेशन क्या था? सजेशन यही था, नया गवर्नमेंट जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसका पास में पहले जो सजेशन दिया था, हमारा देश में बहुत सारे मंदिर मस्जिद जो है, तो उधर में बहुत सारे गोल्ड लाइन पड़ा है. वो गोल्ड को उन लोगों का कोई काम नहीं आता. गवर्नमेंट अट्रैक्टिव प्राइस देके वो गोल्ड गवर्नमेंट उठा लेता है. तो 10 साल के लिए 10 साल के लिए हमको इंपोर्ट करने का जरूरी नहीं होता. और गवर्नमेंट जो स्कीम चालू किया तो ज्वेलर्स लोग जो है उन लोगों को उसमें रखा नहीं. ये और एक डिफिकल्ट हो गया. वो गवर्नमेंट सक्सेस भी नहीं हुआ. इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग सजेशन दिया था, आप लोग वो गोल्ड प्रोक्यूर कीजिए, उसको 10 साल के लिए, मे बी 5 साल के लिए. इंडिया में इतनी सारे गोल्ड है, बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है. तो अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी है इतना हाई है, वो बार बार हम लोग बोला इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में. तो गोल्ड प्राइस जो बाहर में है, फॉरेन कंट्री में जो है, इंडिया में जब आता है, मोर देन 15% एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर ड्यूटी. इसलिए स्मगलिंग इतना ज्यादा हो रहा.
और गोल्ड प्राइस इतना हाई, अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको लगता है जो स्टडी किया है, ये साल पूरा बीत जाएगा तो गोल्ड प्राइस कमने वाला नहीं है। इंटरनेशनल जो पोजीशन है तो ये प्राइस मोर देन 2000 रुपीज आउंस निकल जाएगा शायद अप्रैल में ही। Okay, सामना में वो बहुत सारा ओकेशन है। right. थैंक यू। Thank you. All right, Chirag, I will come to you. Yeah, the mic, please. Chirag, very important. You can obviously start with your comments, and I also want you to comment about some of the big changes. You know, if we know how the industry is today, what are the strong points, and there are a few points which are not its strengths. Clearly, the processes, and there's always a constant loggerhead with the policymakers, not because they don't like gold, but there is a stress, as Ms. Vandana said, and I also pointed out that you spend a lot of dollars, and it's a huge financial investment, yet you don't behave like a financial sector. You know, you have a lot of back-end artisans, and as Rajiv said, many of them are actually don't want to come back. So probably in a couple of years, you might actually do machine production. Now, importing and machine producing gold jewelry, I think makes no sense for a economy. Could be a point of view. I'm not saying it doesn't. It could be a point of view. So my question to you, therefore, is how do you see some of the pointers that today are holding back this industry? How do you see them panning out? थैंक यू सोम। देखिए एक्चुअली सोम दो चीज है, अगर हम लास्ट 5-6 साल में देखें और ये एक्चुअली अगले 5 से 10 साल में ये कंटिन्यू होगी। एक चीज है कि कैसे इंडस्ट्री चेंज हो रहा है कंज्यूमर की वजह से, और दूसरा कैसा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से। तो एक चीज है कि इवेंचुअली अगले 5 साल में बाइंग बिहेवियर भी बदलेगा और अगले 5 साल में द वे वी डू बिजनेस भी बदलेगा और इंडस्ट्री को उसके साथ होना पड़ेगा। सो जैसे आपने कहा सोम, शायद फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, मोर एंड मोर इवेंचुअली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। तो अगर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को सरवाइव करना है तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को इसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आज पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, यू कैन नॉट बाय गोल्ड विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ पैन कार्ड। सो अगर हम इस चीज को रेजिस्ट करते रहेंगे तो हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। We will have to probably now start digesting the fact that industry is here to change. आप अगर कोई भी दूसरे देश में देखें, जैसे आप चाइना में देख ले या आप यूके में देख ले, यूरोप में देख ले, गोल्ड इज अ फाइनेंशियल एसेट। we still haven't looked at gold as a financial asset, despite the fact that consumer gold को financial asset की तरह से ही देखता है, but industry उसको financial asset की तरह से नहीं देख रही। क्योंकि गोल्ड ये फाइनेंशियल एसेट है, गवर्नमेंट चाहती है कि उसे ट्रीट करे फाइनेंशियल एसेट की तरह, और इसलिए आप ये सारे जो रेगुलेशंस आते जा रहे हैं, IIBX हो गया, पैन कार्ड डिक्लेरेशन हो गया, आपके ऊपर जो टैक्सेशंस आगे है, कैपिटल गेन्स है, ये सारा चीज उसी वजह से कि गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दिस एज अ फाइनेंशियल एसेट, और इवेंचुअली इंडस्ट्री को इसके ऊपर अडॉप्ट होना पड़ेगा अगले 5 से 6 साल में। ऑलरेडी एक चीज जो हो रहा है कि जो लार्ज प्लेयर्स है वो ऑलरेडी अडेप्ट होते जा रहे हैं। अगर जो मिड साइज प्लेयर और स्मॉलर प्लेयर्स जिसकी एक्चुअली नंबर्स इंडिया में सबसे ज्यादा है, अगर वो अडेप्ट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली दे विल फॉल ऑफ द लैंडस्केप। Okay, that's interesting. Industry will be seen more, whether it be jewelry or it be others, it will be seen more like a finance sector. So it will probably have to integrate this with that. That's what you're saying. So I'm coming to you, Harish. What are your thoughts on major developments in the next 5 years? Namaskar, thank you ICC for having me here. Some of the things, if we look at it recently, अभी focus सारा है कि किस तरह से business transparent हो जाए,
और किस बिजनेस एज चिराग भाई has mentioned कि किस तरह से बिजनेस में ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, बिकॉज जब हम सोना खरीद रहे हैं तो उसका पूरा वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। तो आप इनिशिएटिव्स अगर हम देखें, गवर्नमेंट पूरा एक तरह से मैसेज बड़ा क्लियर है कि उस बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट जो है इट हैज टू बी वर्कड अपॉन a little bit more. Also, we also have to see from the consumer side who actually buys gold. अभी हमने IGPC इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर विच इज ए पार्ट ऑफ IIM अहमदाबाद, हमने एक आउटसाइड एजेंसी प्राइस के थ्रू एक सर्वे किया। तो उसमें एक काफी उस सर्वे में ऑलमोस्ट 30 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा है। एंड उससे जो फैक्ट हमें समझ में आया कि मिडिल क्लास जो है वही ड्राइवर है। अब हमें ये देखना है कि मिडिल क्लास आगे कैसे बिहेव करेगा। So we have to, that is very, very important for us to understand कि हमें मिडिल क्लास को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मिडिल क्लास को लूज, और not only on the buying side, but I'm telling you one side also, middle class or the young people are going to drive that. इंडिया का मीडियन एज 27-28 है, अगले 10 साल तक भी 35 साल के ही रहने वाला है। तो यही लोग ड्राइव करेंगे दोनों साइड पर बिजनेस को। इन अकॉर्डिंगली हमारी इंडियन इंडस्ट्री एडजस्ट होती है थोड़ा लेट टाइम में। सिमिलरली गोल्ड में हमें देखना है कि गोल्ड किस तरह से बाय किया जाता है। अभी अगर हम 90s में देखें तो ऑलमोस्ट 67-68% ज्वेलरी होता था, ज्वेलरी एंड टेक्नोलॉजी। अभी वो रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 40-44% रह गया है। इंडिया में इट इज अ ज्वेलरी डोमिनेटेड इंडस्ट्री। ज्वेलरी की जो डिमांड है हमारी कंट्री में रहने वाली है, बिकॉज उसकी कल्चरल एफिनिटी की वजह से वो ज्वेलरी की डिमांड है वो रहने वाली है। लेकिन अब क्या हमें लाइक अगर किसी को, अब मैंने पिछले 5-6 साल से कोई गोल्ड नहीं खरीदा, अब मेरे को अगर कंज्यूमर बनाना है तो क्या काम करने की जरूरत है? तो मेरे को कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मेरे को उसको एक इन्वेस्टमेंट लगे, मेरे को लगे कि इट इज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फॉर मी विच आई कैन बी वेरी हैप्पी टू हैव इट इन माई पूल ऑफ एसेट्स। सो इस चीजों पर आई थिंक इन माय ओपिनियन इंडस्ट्री को काम करना है। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है हमारे सर्वे में ये भी रिवील होता है कि except for a very negligible amount of people, the touch point for the consumer is still the jeweler. So jewelers को ही आगे आना पड़ेगा और इस कस्टमर की एस्पिरेशन को समझना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह से उस बिजनेस को अपने पास रखें तो उनकी एस्पिरेशंस को हम पूरा करें। Well, that's again, I think very specific about technology in the industry. Today, clearly, we have a lot of handcrafted jewelry. 5 years from now, again, this is to all three of you, I want to answer specifically on this. Given all the pressures, okay, of technology, innovation from abroad, we are not doing any innovation on the missionary part of it. Do you think this will sustain? Chirag first. एक्चुअली सोम, कल हम रमेश सर और सनी भाई बैठे थे और हम इसी के ऊपर एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड एक्चुअली इंडस्ट्री हैज बीन लैगिंग बिहाइंड टेक्नोलॉजी कंपेयर्ड टू डायमंड्स या सिल्वर। जैसे हमने सिल्वर का मार्केट इंडिया में बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट एक्सप्लोड होते हुए देखा है बिकॉज द इंडस्ट्री इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। आज इंडिया में क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो हमारा 60-65% हैंडमेड ज्वेलरी है, बाकी का 30-40% मशीन मेड ज्वेलरी इवेंचुअली। आप रिटेलर्स की तरफ से भी मार्जिन प्रेशर आता है, मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स पे मार्जिन प्रेशर आता है। तो इवेंचुअली ये होगा कि हैंडमेड ज्वेलरी सस्टेन नहीं कर पाएगा इस चीज को बिकॉज द मार्जिन्स आर श्रिंकिंग एंड इवेंचुअली पीपल विल हैव टू मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। बट अभी ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं किया है। आज अगर आप मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स देखें तो किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं स्केल कैसे करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करूंगा। और मेरा ये मानना है कि आज हम बहुत ही मायोपिकली टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग में सोच रहे हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी को रिटेलर्स को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। यू नो AI will play a big role. So I think as a gold industry, we are at least
5 to 10 years behind other players. जैसे मैं आपको एक थाईलैंड का एक एग्जांपल देता हूँ. थाईलैंड में ज्वेलरी रिटेलर्स ने क्या किया हुआ है, अपने कियोस्क बनाए हुए हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए जहां से लोग सोने में निवेश कर सकते. तो आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते, कॉइन्स खरीद सकते, बार्स खरीद सकते, और फिर आप उस रिटेलर के पास आइए और उसे एट लो कॉस्ट कन्वर्ट कर लीजिए ज्वेलरी में. तो हमने अभी तक ये सब चीजें की ही नहीं है. हमें टेक्नोलॉजी को बहुत ही ओपनली अडॉप्ट करना पड़ेगा. बहुत सारे देशों में अगर आप देखें, छोटे छोटे देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है. सो जैसे मैं कहता हूँ, हम एटलीस्ट 5 to 7 years बिहाइंड है in terms of adaptation of technology, both at the manufacturing end and also at the retail end. Samarji, what do you think? तो एक्चुअली जो बात है एकदम करेक्ट बात है. जो अभी जो जमाना है आया है, रिटेलर को ही पहले सोचना पड़ेगा. दे 3 प्रोग्राम लेने पड़ेगा इंडस्ट्री में. दे हाउ टू जो लॉस जो होता है गोल्ड में, वो कैसे रिकवर करना हो, उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए. वो जो टेक्नोलॉजी का इंडिविजुअल ज्वेलरी को, ज्वेलर्स को ये प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसमें जीजीपीसी जो आगे बढ़ के जो काम किया है कलकत्ता में, वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया, जो स्वर्ण शिल्प बचाओ कमेटी का ऑफिस में वो बना हुआ है. लेकिन सम रीजन वो थोड़ा टेक्निकली वो काम चल रहा. विद इन 3 or 4 month हमको लगता है वो पूरा चालू हो जाएगा. टेक्नोलॉजी अभी जो आर्टिजन है, जो हैंडमेड ज्वेलरी है, हमारा हिसाब से हमको लगता है सबने हमारा साथ एक राय देगा कि इसमें मेनली ये बंगाल से जो आर्टिजन है, सारा इंडिया में, सारा वर्ल्ड में उसका मुकाबला में कोई नहीं है. जो आर्टिजन का बारे में हम लोग का सोचना चाहिए. ये आर्टिजन को एडुकेट करना चाहिए. ये उनका जो हाथों का काम, वो कैसे जो नया टेक्नोलॉजी है आया है मशीन का, वो उसके कैसे अडॉप्ट करके वो काम में लगाना है. सोचिए हैंडमेड ज्वेलरी, अभी कास्टिंग आ गया. ये कास्टिंग में कैट कैम आ गया. तो वो जो हैंडमेड ज्वेलरी का अंदर वो कैसे उसको लगाने सकता है आर्टिजन को. इसके एडुकेशन के लिए, जैसे हम लोग डिग्री है, हायर सेकेंडरी, बैचलर, एमएससी, ऐसा में भी बहुत सारे डिग्री है. हमको लगता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से ऐसा कुछ कीजिए, इंडिया गवर्नमेंट के साथ बात करके आर्टिजन को ऐसा में भी डिग्री देने से उसका भी एक क्या बोलेगा, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में उसको इज्जत देना चाहिए. अभी जो हम लोग का सोसाइटी है, वो कारीगर है, वो थोड़ा डाउन द लेवल में चल रहा है. इसको हाइट में देना चाहिए. हम लोग ज्वेलर जो है उसको आगे बढ़ के उसको सम्मान देना चाहिए. ये हमको लगता है. थैंक यू. ओवर टू यू. Thank you. Samarji, that is what that's exactly what we are talking about, the SRO. We will see. And I'm glad that there was an applause when we said the World Gold Council should train karigars and all. Obviously, we are very, very keen. I don't know how many of you have read the Niti Aayog report on the status of karigars. I think it's a report which we can work for the next couple of years. But very important, I'll give you one example. We have started an assay training institute, non-profit. We don't charge anything, and it is run by IIGJ in Bombay. Kindly you speak in Hindi, तो सबको समझने का सुविधा होगा, please. मेरा थोड़ा problem होगा, so I will Okay. I'll keep it in simple English. I'll skip. एक institute बनाया है मुंबई में. We are still looking for people to send people for training there. So we can create anything. The industry has to own it.
That is why we are bringing the SRO. It is not like we can just suddenly bring 1,000 people and say they are trained karigars now sell jewelry. It's not going to happen that way. You have karigars. You're using karigars. Every jeweler uses karigars. Why can't they look at the karigars and say, this is how we will treat the karigars, this is the kind of benefits, standardize everything. ICC can do it. Standardize how you deal with karigars. Everywhere, it doesn't matter, because you are a karigar headquarters of the world, actually, not India, because there are so many karigars anywhere in the world. So you should not consider yourself the karigar headquarters of India. You should consider yourself the karigar headquarters of the world. Get the best practices out there and tell people, anybody who doesn't do all this for the karigars, don't buy from him. That's the whole idea of SRO. So now I just want to quickly come back. We talk of the future of the gold markets, and Samarji, you said people will continue to buy gold. Yeah, it's very important, but as a World Gold Council, it's our job to worry all the time about gold. Because don't forget, there are at least 3 markets, I will tell you, in the last 25 years. They have disappeared, gold markets. Saudi Arabia, Japan, Italy. They were very big gold markets 20, 30 years ago. Where are they now in gold? They don't even exist. I mean, some gold is always sold. Anybody keeping gold, everybody loves it because it is money. But otherwise, the jewelry market, the gold market, it's gone. Why do you think that people will continue to buy? The reason I want to say this example and then ask a question. Rupee. India will get stronger. Rupee will become free floating at some stage. I mean, I'm just saying 5 trillion we will reach in 25. Maybe we'll become 7, 10 trillion very soon, next 10 years. Then where is the attraction for gold? In India. If rupee is free floating in all these cases, do you think our jewelry industry will remain as strong as it seems today? It's a question. I don't know. I don't have a view on this. All I'm trying to say is when you're looking at an industry, you also have to look at the surrounding developments. Today, don't forget, you have to put this in Hindi, okay? Don't forget, can you put it? Part of gold demand in India is also coming because it is inflation hedge. Kyunki we don't have a dollar asset. A normal man can't hold dollars, but he can hold, which is converted in dollars. If rupee is made free floating, many of us who are there, we will be investing elsewhere. Already it is happening. We can invest in any stock market, and it is going to only get better as India grows. What do you think is the state of the gold market? Do you want me to Please put your question put it in first? a- I was a little elaborate. So So actually सोम का कहना है कि अगर हम देखें कई सारे मार्केट है जैसे सऊदी अरेबिया, जापान, इटली, जो एक टाइम पे बहुत बड़े मार्केट हुआ करते थे, आज वो एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि काफी सारे चेंजेस हो गए. तो जैसे सोम, मेरा ये मानना है कि हम और ये मेटल्स फोकस का मानना है एक्चुअली कि हमने इंडिया की गोल्ड डिमांड को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. और मेरे पास कुछ इसके एग्जांपल्स है क्यों नहीं लेना चाहिए. अगर हम इंडिया की इन्वेस्टमेंट डिमांड देखिए, आज से 10-12 साल पहले 300 टन हुआ करती थी, ठीक है. आज इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑन एन एवरेज 160 to 180 टन के आसपास आ गई. तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डिमांड अगर हम देखें तो 50% तो नीचे हो गई है. क्यों नीचे हो गई? क्योंकि जैसे सोम ने कहा कि ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड आती थी वो अर्बन इंडिया से आती थी. आज अर्बन इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है निवेश करने के लिए, ठीक है. अगर आप मुंबई, दिल्ली, इवन कलकत्ता, क्योंकि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में मैंने काफी साल काम किया है, तो देखेंगे तो ज्यादातर जो यंगर जनरेशन, जो मिडिल क्लास है, वो इक्विटी में पैसा डालते हैं, ठीक है. आज अगर आप देखें तो इक्विटी में हर महीने रिकॉर्ड एसआईपी आ रही है. तो काफी हद तक जो सोने में पैसा जाता था वो इक्विटी मार्केट में आ रहा है. दूसरी बात, इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ते जा रहा है. जनधन के पहले 16% लोगों के पास लोन अकाउंट्स थे और करीबन 40% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स थे. आज 98% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, ठीक है. ये पहली चीज. दूसरी बात, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भी कहती आ रही है,
गोल्ड आज compete कर रहा है experiences के साथ. Gold is competing against lifestyle products, expensive watches, honeymoons. जैसे हम कल बात कर रहे थे, एक्चुअली आज शादी में सबसे बड़ा खर्चा होता है प्री वेडिंग शूट पे, यू नो, लोग 2-3 लाख प्री वेडिंग शूट पे खर्च रहे. तो ऑब्वियसली ये सारा पैसा, एक आदमी के पास बजट तो लिमिटेड ही होता है, राइट? सो ये पैसा जा कहां से रहा है? इवेंचुअली ये जो सारी चीजें, ये गोल्ड की डिमांड को ईट अप करते जा रहे हैं, ठीक है? तो हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि इंडिया का 1.8 2 करोड़ शादियां हर साल होती है, बराबर है, बट इन शादियों में गोल्ड यूसेज कम होते जा रहे हैं. सो वी शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड इंडियाज गोल्ड डिमांड, राइट? दूसरी बात ये कि पहले लोगों को जब बोनस मिलता था या पैसा आता था तो वो खरीदते थे सोना. आज लोगों के पास पैसा आता है तो वो खरीदते हैं मोबाइल फोन्स, राइट? वो खरीदते नए कपड़े. तो आप प्लीज ये समझिए कि एक लिमिटेड बजट अब काफी सारी चीजें गोल्ड के साथ compete कर रही है. तो मैं सोम की बात से बहुत सहमत हूँ कि इसके लिए इंडस्ट्री को एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, यंगर जनरेशन को टारगेट करना पड़ेगा. जैसे मेरी कल सुबह एक्चुअली किसी के साथ मीटिंग हो रही, तो मैं उनको ये कह रहा था, आपको लाइट वेट की तरफ मूव होना पड़ेगा. आप ये नहीं कर सकते कि 20-20, 25-25 ग्राम के ही चेन बेचूंगा या 10 ग्राम के चेन बेचूंगा. शायद आपको अपना एवरेज ऑफरिंग 5 ग्राम, 6 ग्राम करना पड़ेगा. दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो लोग शायद नहीं देख रहे, वो है कैरेटेजेस. पहले शायद 18 कैरेट का 10% मार्केट शेयर था, 18 कैरेट का 15% मार्केट शेयर है. हमारा मानना है कि अगले 5 साल में 20 से 22% मार्केट शेयर हो जाएगा. तो आप जैसे इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया में 22 कैरेट से लेकर 9 कैरेट तक की सारी ज्वेलरी बिकती है, क्योंकि दाम बढ़ गए तो कैरेटेजेस कम होने लगे. ये चीज इंडिया में भी जरूर है. तो Yeah. दिस इज समथिंग. Thanks. So that is my point. So I'll come back to the three of you and then we will close it. Very important is we should not assume gold will continue to be bought. If we do what we are doing, we have to change in the next 5 years, lot of changes, adoption of technology, options available. So we have to compete as gold jewelry industries. I'll give one more example here. Today, again, this is because it is within the industry. Today, we believe women love jewelry, they wear it, no doubt. But today, more and more women are getting into own businesses, entrepreneurs. Don't forget this trend. There was some time ago, all companies used to say fairness creams, correct? Today, do you see any of them selling those fairness creams as fairness creams? I mean, black is beautiful. Trends will change and they will change overnight. All one has to say is, today anyway, people don't like to be called by gender and all that stuff. I don't know how much of that is going to pick up. Tomorrow, you just say, why should you wear a jewelry? Because you're a woman? The entire thing will move. So all I'm trying to say, when you're talking about the future, we should also talk about extreme trends. I'm not saying it's going to happen overnight, so there is no need to panic. But it is very important, therefore, to integrate jewelry with a certain, not with our tradition. We shouldn't lose the tradition. But when a woman wears a jewelry, she should feel she's wearing something really modern, which has got the latest technology coming through her. I mean, when I wear a health watch today, I've been saying this in several things. Sorry, as a moderator, I will come back to your question, but I want to make one more. None of the gold jewelry, you are wearing it physically, is still giving you anything on a health benefit or a safety benefit or anything like that. But watches have come. When I wear a watch, if I wear, it shows my blood pressure, my heart rate, etc. You are selling so much of gold jewelry which people wear on the body, it shows nothing. Because we don't want to innovate. We don't even think about innovation. We are all the time actually dealing with hallmarking and other stuff. So coming back to that, tell me 2 trends you think is going to actually be very important for the industry in the next 5 years. From your point of view, it could be, as I said, it could be the rupee free floating. It could be technology. It could be anything. Or women completely moving away from jewelry. It could be anything. Can you just say, Harish? So I think I touched upon this.
पहला ट्रेंड तो है कि आपको इन्वेस्टमेंट एज प्रोडक्ट की तरह से किस तरह से इसको गोल्ड को पिच करना है एंड क्योंकि उसमें जैसे आप अभी गोल्ड की रेलेवेंस तो प्रूव होती जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम देखें और जो ट्रेंड देखें तो गोल्ड की रेलेवेंस अभी आई थिंक अभी लोग जो कह रहे हैं कि गोल्ड हैज बिकम इवन मोर रेलेवेंट. So you are So- saying people will move into gold as an investment rather Absolutely. than purely as jewelry? So as I said, because अभी भी ज्वेलरी भी मार्केट में अभी जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर वो देखें हम पिछले 25-30 साल का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट का ही कंजम्पशन आता है. तो बहुत उस जबकि पॉपुलेशन भी बढ़ गया, इनकम लेवल्स भी बढ़ गए, तो वो इन्वेस्टमेंट बाकी सब जैसे चिराग ने बोला कि वो बाकी किसी चीजों में चली गई, बाकी वाइट गुड्स में चली गई. तो अब तो क्यों गोल्ड में क्यों नहीं गई? तो क्योंकि हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं किए. और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी खूबियत है कि उसमें आपको नेसेसरली गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है. उसकी आपको एग्जिस्टिंग गोल्ड को आप लिवरेज कर सकते हैं. जिस तरह से आज आप गोल्ड को सेल करेंगे उसकी फाइनेंशियलाइजेशन उसी तरह से डिसाइड होगी आगे फ्यूचर में. तो वो एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है. And in my opinion, that will be the biggest trend. And as I mentioned, So that is one, financialization of gold. What is the next one? so next would be compliances. Very, Compliance. very important. The business owners, मैं अपने बेटे से भी बात करता हूँ. तो आज को जो उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है जब वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस देखते हैं, तो जो कंप्लायंसेस और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, अगर अब आपको भी आई एम श्योर कि अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन, और मैंने एक्चुअली बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ माय बैंकिंग जर्नी जहां मैंने बुलियन बिजनेस में बहुत काम किया, तो वहां मेरा मोस्टली कनेक्शन जो होता था नेक्स्ट जनरेशन से होता था, और वो मेरे को लगता था कि वो मेरी बात को ज्यादा समझ पा रहे हैं. तो वो चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है दे आर मोर कंप्लायंट. वो कहते हैं कि हमें हमारे बिजनेस को इज्जत ज्यादा मिलना चाहिए. Great. Chirag. पहली बात आई थिंक जो दो चीज मेरे को लगती है, एक तो है कि लो चेंज इन कैरेट स्ट्रक्चर अगले 5 साल में होगा, जहाँ पे 18-14 का मार्केट शेयर बहुत हद तक बढ़ जाएगा, और दूसरा लाइट वेट ज्वेलरी का मार्केट शेयर इंडिया में काफी हद तक बढ़ेगा. तो ये एक चीज है. और दूसरा मैं हरीश से बिल्कुल सिंपल हूँ कि मोर एंड मोर कंप्लायंस, मोर एंड मोर बिजनेस विच हैव टू कंप्लायंट. जैसे सो एक बहुत ही क्विकली कहता हूँ कि अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखेंगे बोलते हैं कि क्रुएल्टी फ्री, फ्री रेंज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज आते जा रहे हैं, और यंगर जनरेशन को ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. तो हमें ये देखना होगा कि ज्वेलरी इंडस्ट्री इस सारे कॉन्सेप्ट को कैसे अडॉप्ट करती है. ग्रीन गोल्ड हो सकता है या जो भी हो सकता है, पर ये एक चीज सोचना बहुत जरूरी है. Great. Samir. एक्चुअली अभी जो मार्केट है, ये बात सही है, जो यंग जनरेशन है, मेनली वुमेन सेक्शन, उसका अट्रैक्शन लेना चाहिए डिजाइन का ऊपर. चिराग जी ने एक बात सही किया, जो ट्रेडिशनली जो ज्वेलरी चलता है अभी थोड़ा चेंजेस आने लगा ड्रेसेस का हिसाब से. तभी पहले पहले ये इंडियन लेडी लोग साड़ी ज्यादा पहनता था, अभी थोड़ा ड्रेस एकदम चेंज हो गया. उसका ड्रेस का हिसाब से ज्वेलरी भी चेंज हो गया. लेकिन ये बात भी सही है, ये इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड है डाउन द लेवल. जो आप लेवल है वो इतना नहीं सोचता गोल्ड के लिए, लेकिन आम जो आदमी है वो गोल्ड इन्वेस्ट का अभी भी सोचता है. जब भी जरूरत पड़ता है गोल्ड, जैसा मैं भी की कोई तुरंत वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, वो कोई चीज नहीं है अभी तक, वो कैश कन्वर्शन नहीं आएगा. जहां पे भी जाएगा गोल्ड थोड़ा कमती में देने से उसका घर में बैठ के पैसा मिल जाएगा. ऐसा हमको लगता है इंडिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो उसको बदली में रुपया मिलेगा इमरजेंसी का टाइम में. इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड द फर्स्ट थिंग. लेकिन एक बात बार बार कहना है, यंग लेडी के लिए हम लोग जितना ज्वेलर है, जो आर्टिजन है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिजाइन, लाइट ज्वेलरी का अभी मेनली डिमांड है. थैंक यू. ओवर टू यू.
Thank you very much. I think all the speakers have given some very good point. I just want to add from my point of view, one more big change. When I say big trend that we will see, I mean, it's already some of them have spoken about it. I think innovation of a different order in handling gold. And I have spoken about it in some group meetings with even NID and other stuff. It's not just about design. It's about what all we can do with gold. I think as the gold prices go beyond 60,000, 70,000, we don't know where it is going to head. Just look at it. 3 years ago, 4 years ago, gold was 30,000. Today it is 60,000. How many people's incomes have doubled in the last 4 years? But gold has doubled actually. So as it increases, you will find enormous amount of innovation. Now, where is it going to come from? Is it going to again be a foreign import because somebody found something which we are going to use it? Or is it going to be from within where we have enormous capabilities, whether it be usage of stones, colored gold? Many of them have already been talked about, but something which we have not seen, innovation in handling gold, in the metallurgy of gold, I think is something which we will face. And I have always said this, we have to be prepared for financial sector reforms because gold is a financial investment, all of us have said, and the more reforms that come on financial sector, the attraction of gold is not going to keep rising, and particularly when prices rise like this. So with those words, I think we will bring this to a conclusion. Any last words, because I need to give the panelists, and I'm going to be at least 10 minutes, I will say for this. Samir, any last few words, and then we will wind up. Anything. तो एक्चुअली खाली एक ही चीज कहने का है, अभी गोल्ड में गवर्नमेंट का तरफ से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, जो प्रॉब्लम ज्वेलर्स लोग थक गया। डेली जो लॉ आता है, आज भी अभी इधर आने का आगे दिल्ली में 2 मीटिंग हो रहा, तो एक मीटिंग का में हम भी था और एक मीटिंग हो रहा। आप जानता है, बोलना चाहिए, एक सबको जानकारी कर लिए, एक पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो अभी ज्वेलर का ऊपर आ गया। सबको पता नहीं है, वो अभी लागू है, वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। एज पर माय नॉलेज, इंडिया का साथ जो टीटी है $10,000, लेकिन इसका इंडिया में जो कानून आया, बहुत गलत कानून। ओनली 50,000 जो परचेस करेगा उसका आपको क्या बोलेगा, उसका आईडी देने बोला। दिट्स ए वेरी बैड थिंग, इट्स ए मेनी प्रॉब्लम। Yeah, sure. Samir, good point, but I just want to say it is not just this industry. While yes, we have to present, that's why I told ICC, present a proper case to the government, at least as ICC, independent No, of the sir. associations. A circular is there. No, I know. I'm just saying it is not just this industry. Today, do you know that debt funds, today they are passing it, I think in the parliament, debt mutual funds, which were so far treated as long-term capital gains, the government has changed between budget and now to say, if you put in debt mutual fund from 1st April, it will always be short-term, which means if you're paying 30% tax, you pay 30% tax. Now, everybody is running around now, because huge amount of debt mutual fund. This regulatory thing is always a issue because one segment or the other will always get affected. But I take your point. I think government should go a little easy on this industry when it comes to a PMLA and all that. There are a set of changes that have to be brought in before it is brought in. Perfectly point. Chirag, last words. My point is just be ready for the change that the consumer is going to bring in, adapt to that quickly, or else we'll have a lot of issues. Harish. So कुछ ऐसा हो जिसमें हमें रेगुलेटर के पास बार बार ना जाना पड़े, अगर उसकी स्पिरिट को समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और तो उससे क्या होगा कि क्योंकि सुबह ही एक मीटिंग में मेरे को किसी ने बोला था कि अब बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वही हम ही इनिशिएट करते हैं। तो ऐसा कुछ हो कि हमारे पास ही सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा हो कि गवर्नमेंट हमारे को एग्जाम्पल लेके बाकी जगह पे काम करे। Good point. I think ICC should take some of this and probably work
with the government for the next 5 years. What do we see as a big change? Government's other changes and how this industry will fit in. Any amount of insights will help the government. So with those words, thank you very much for listening to us patiently, and thank you, my panelists, for giving me wonderful insights. I have saved 5 minutes. The excitement of a moderator when he saves 5 minutes. Definitely, it is a saving absolutely for a very invigorating day where we have so much to know and learn. First of all, let's hear a round of applause, a real roar of applause for our wonderful speakers. Ladies and gentlemen, now is the time that we would like to felicitate our speakers. I would request Mr. Shomik Roy Chaudhary, Director, MP Jewellers Private Limited, to kindly felicitate Mr. Chirag Seth, Principal Consultant, South Asia Metals Focus. We have our mementos that would make this day absolutely memorable. I would now request Mr. Shripal Jalakia, Director, Shrikunj AAI Limited, to kindly felicitate Mr. Harish Chopra, Vice President, India Gold Policy Center. And you can put your hands together as we are felicitating our speakers. I would also request Mr. Jolakia to kindly felicitate Mr. Samar De, Director, All India Gem and Jewellery Domestic Council and President, Shorno Shilpi Machao Committee. Mr. Roy Chaudhary, once again, can we have the pleasure of having you on stage? I would request all of you to kindly wait, give us one more minute so that we introduce something very special to you all. To kindly stay with us because I'm going to introduce to you something very, very special. Ladies and gentlemen, as I was talking to you about this particular art from India that is there, we know that India has a very strong heritage with gold and silver. And today I'm going to introduce you to an art which is made in silver and hails from Cuttack and let's say ages back to as old as 500 years. Some of you, or let's say most of you, may have heard of the word filigree, where a silver mold is beaten into a silver wire and the whole intricate design of the jewelry or the pattern is created through that one wire. All I would say, to harness a silvery moonbeam and weave it into a delicate lace of intricate patterns comes close to describing the beauty of a filigree artifact of Odisha. Ladies and gentlemen, we have with us, and we are extremely honored to be having him amongst us. He is a Presidential Award winner in 1995. He has been awarded by the Gem and Jewellery Skill Council of India. He is the Kalashri Award winner, the Sujanya Award winner, the State Award winner, the VAR India winner as the crown jewel of Orissa. Please welcome on stage as I welcome artist Mr. Pankaj Kumar Sahu. Mr. Pankaj Kumar Sahu is a filigree artist who has made for himself a name nationally and internationally with his sense of art. We are also extremely privileged to be having amongst us his chief assistant, Mr. Chandramani Sahu.
On this note, ladies and gentlemen, I would request Mr. Somasundaram PR, Regional CEO, India World Gold Council, to kindly felicitate Mr. Pankaj Kumar Sahu with a bouquet of flower. আমরা একটু জোরে হাততালি দেব on this note. And I would request Mr. Harish Chopra, VP, India Gold Policy Center, to kindly felicitate Mr. Chandramani Sahu, Chief Assistant. Thank you so much, everybody. Thank you for being here with us. And we are extremely privileged to be having such wonderful artists today with us. Ladies and gentlemen, now is the time to move on to a second very, very invigorating session. And what is it about? Sustainable diamond vis-a-vis natural diamond and emerging trend of fashion in jewelry. And are you excited to know who our speakers are for this session? Because I am absolutely very, very excited to introduce them right here, right now. As we take this brief moment to set up the stage, and you also get to read the names of our speakers, our panelists, please put your hands together. আচ্ছা আমি সবার আগে এবার একটু ফর্মাল সেশন থেকে সরে বাংলায় বলছি যারা ফ্রন্ট রোতে আছেন সেকেন্ড রোতে আছেন আমরা একটা কনক্লেভে এসেছি আমরা একটা মিটিং এ এসেছি তার মানে এটা না যে একটা দুঃখ দুঃখ গম্ভীর মুখ করে বসে থাকতে হবে লেটস ব্রিং ইন সাম পজিটিভিটি লেটস গিভ আ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ টু ইয়োরসেলফ একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক নিজেদের জন্য আরেকবার It's time that I welcome my panelists one by one. Let me introduce Mr. Sachin Jain, Managing Director, De Beers India. Hi, I'm here digitally. I don't know, can you guys hear me? Hi, can you hear me? He's here with us virtually. Namaskar, can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Oh, fabulous. Thank you. Thanks for welcoming me. It's a pleasure for me to be here. Thank you. Please welcome Mr. Prasad Kapres. Please welcome Mr. Sachin Jain. And after him, Mr. Prasad Kapre, CEO and Director, Style Quotient Jewellery Private Limited. Can we have a round of applause for Mr. Prasad Kapre? Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Sunil Poddar, Director, Shri G Jewellers. Please welcome Mr. Chirag Soni, Director, SGL Labs. Mr. Chirag Soni, Director, SGL Labs. Also, please welcome Mr. Indranil Roy Chaudhary, Director, MPJ Jewellers Private Limited. Mr. Indranil Roy Chaudhary. Director, MPJ Jewellers Private Limited. Also, can we please have Mr. Shripal Dholakia, Director, Shri Kunj AAI Limited. And last but not the least,
Ladies and gentlemen, put your hands together in a roaring way as I welcome the session moderator, Mr. Vinod Bamalwa, Chairman, ICC Expert Committee on Jewelry and Lifestyle. The next session, ladies and gentlemen, is on sustainable diamond vis-a-vis natural diamonds and emerging trend of fashion in jewelry. Welcome, everyone, especially Sachin ji, who's joined us virtually, Saad ji, Sunil ji, Chirag ji, Indranil, and Shripal bhai. A warm welcome. I hope this session is very engaging. So, let's dive straight into it. बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें भेड़िया की कहानी थी कि बार बार वो आता था कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, और नहीं आता था। आज ये हो गया कि भेड़िया फाइनली आ गया है। वो है लैब ग्रोन सिंथेटिक डायमंड के रूप में। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है प्रसाद जी के लिए और सचिन जी के लिए कि क्या आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं हमको कि कितना क्वांटम है प्रोडक्शन लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड का in terms of caratage or in terms of value? Sachin, you want to take that first? Go for it, Prashad. I'll follow you. Prashad, you go for it. Can you hear me? Yeah, go ahead. Go ahead. Can you hear me at all, Prashad? Yes, please. Please go ahead. I'll follow you. Okay. As far as I know, the total production of lab-grown diamond jewelry as of today is roughly 22 million carats vis-a-vis the natural diamonds, जो लगभग 116 million carat का 2021 में हुआ था, which actually came down from 155 million carats in 2019. So that is also because कुछ mines बंद हुई हैं, mines are getting exhausted, mines are getting depleted, तो उसकी वजह से कुछ mines बंद हुई हैं, और उसी दौरान जो lab grown diamonds का production है वो increase होता जा रहा है, हुआ है, और जो आज से मतलब 2015 से जो इसका प्रोडक्शन में जो तेजी पकड़ी है लैब ग्रोन की, जो मुश्किल से 3 या 4 मिलियन कैरेट होता था, वो आज की तारीख में लगभग 22 मिलियन कैरेट है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो सेल्स जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिसर्च फिगर्स हैं, वो हैं इट इज अबाउट एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 billion dollars, which in value terms is roughly about 12 to 14%, जो total world का diamonds का market है, उसका 12 to 14% है। और ये सब मैं जो figures आपको दे रहा हूँ, एक research figures हैं जो whether it's Frost and Sullivan or McKinsey or Bain and Company, इन सब research reports का मैंने पूरा study किया है, और उस basis पे आपको ये figures मैं बता रहा हूँ। और so volume terms में when I talk about about 22 million carats, तो ये लगभग already 20-22% हो चुका है, I mean it's close to about 20% of the production, but in terms of value it is anywhere between 10 to 12%. So that is what the situation is today. Maybe I can add Prashad to your point. So just building on जो प्रसाद ने भी figures बताए, आपके आंकड़े काफी correct हैं from a point of view of production, could be correct. I think important thing ये जानना है कि value wise क्या इनकी value है, because over the years अगर आप evaluation लगाएं जिस पे एक ये production value बिकती थी 3 साल पहले और last year to today is a very different dynamic, और ये सबको समझना बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है in the natural diamond business, जो आप प्रसाद आपने mention करा कि production wise थोड़ा सा there is certainly no infinity of production. ये production ऐसा नहीं है कि निकलती जाएगी मतलब धरती से,
So production value in terms of, the caratage is anywhere between 65 million carats, to 70 million carats, up and down. So that is a number. And within the next 40 years, whether they'll go down by 5% to 7%, that's of course the indication. It's not going to become half. So अगर आज की प्रोडक्शन करीब 70 मिलियन कैरेट है, तो इंडिकेशन है कि 30 साल से 35 साल 50 साल में ये करीब 65 मिलियन कैरेट होगी. नंबर 1. नंबर 2, अगर हम डिटेल में जाएं लैब ग्रोन डायमंड का, इससे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है इंडिया में. एंड आई एम श्योर द रिएक्टर्स जो होंगे, प्रसाद, यू माइट नो द एग्जैक्ट नंबर. What I understand is that there are about installed capacity of about 7 to 8,000 capacitors that are there in India today. The intention is that ये और बढ़ेंगे. लेकिन इसका रिजल्ट क्या है वो बहुत जरूरी समझना. वैल्यू पे ये अगर आप 5 साल पहले जाएं, the value of lab grown diamond was always compared between natural diamond कि इतने percentage less या something like that. हमारी बिलीफ ये है डिबेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टू बिल्ड इन द फ्यूचर. मगर इसका जो एक प्राइसिंग या बोले या वैल्यू बोले, which has to be cost plus at some stage. ये cost to make a lab grown diamond anywhere is between, आज की डेट में is $100 to $250 full stop. So the thing is कि ये लॉन्ग टर्म में एक कॉस्ट प्लस मॉडल पे बनेगा. तो अगर वैल्यू पे आप देखें तो हमारी इंडिकेशन ये है कि वैल्यू वाइज दिस इज अबाउट 3 to 5% of the value of the compared to natural diamond today. So again, it also keeps changing, but value wise it will, हमारी इंडिकेशन ये है कि ये कॉस्ट प्लस मॉडल होगा. जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगी उस तरह से the cost to produce will drop and eventually this category will be cost plus. Back to you. So thank you Prasad ji and Sachin ji. एक follow-up question उसके साथ में है कि आज के दिन में इंडिया कहाँ पे खड़ा है. नेचुरल डायमंड में पहले की स्टैटिस्टिक्स है कि नेचुरल डायमंड में दुनिया में 10 हीरे आउट ऑफ 11 इंडिया में कट एंड पॉलिश होते थे. 50% बाय वेट और 30% बाय वैल्यू. सो आज के दिन में हम लैब ग्रोन के अंदर में हम कहाँ पे हैं? You're absolutely right, Vinodji. Actually, India will continue the position, the leadership position in the world. चाहे वो rough diamond का, the natural mined diamond की cutting and polishing हो या lab grown diamond की हो, because the process remains the same. जो cutting and polishing की process है वो same ही है. और the fact that the government is actually backing this up, जितना ज्यादा support अभी आपने यूनियन बजट में भी recently सुना होगा, निर्मला सीतारमन जी ने even for the research they have given certain grants to Chennai, IIT Chennai. तो आइडिया यही है कि गवर्नमेंट चाहता है कि कटिंग एंड पॉलिशिंग तो हम कंटिन्यू करें ही, बट डेफिनेटली हम कुछ growing में भी आगे बढ़े, because today all said and done India is the largest producer of CVD diamonds in the world. Okay, there are two types of lab grown diamonds, एक CVD होता है और एक HPHT process से होता है. So जो CVD process है उसकी leadership is with India, and India will continue to dominate in the CVD sector, which is the latest technology. And दूसरा of course HPHT जो है वो चाइना के पास है, लेकिन cutting and polishing we will continue in India for sure. So that leadership position will always be maintained. Great. Now अब मेरा अगला प्रश्न जो है वो मैं सुनील जी, श्रीपाल और इंद्रनील, इन तीनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में जो नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के बारे में कस्टमर्स की क्या क्यूरियोसिटी हुई है, या कस्टमर किस टाइप का प्रश्न लेके अपने पास में आते हैं, और क्या उनकी जो परचेजिंग हैबिट्स थी क्या अभी भी उतनी ही चॉइसफुल है? थैंक यू विनोद भाई साहब. मैं डायमंड इधर लैब ग्रोन और नेचुरल, मैं उसको दो भाग में क्लासिफाई करता हूँ, एक ब्राइडल सेगमेंट, एक कैजुअल सेगमेंट. ब्राइडल सेगमेंट will always and will be dominated by the natural diamond, and कैजुअल में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, डिमांड्स बढ़ रही है, but it will
creating his own segment, own market. It is not like that it is eating away the natural diamond segment. Because मेरा सोचना है कि अपने कलकत्ता में लग्जरी सेगमेंट में वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड अटायर्स है, टूर्स एंड ट्रेवल्स है, लोग उस पर खर्चा करते थे. नाउ दे आर जैसे मेरे को अपने किसी वाइफ को गिफ्ट देना है, तो शी विल आस्क मी टू टेक ऑन अ वेकेशन फॉर वेयर आई गोइंग टू स्पेंड 4-5 लाख रुपीस. नाउ शी विल गिव मी अ CVD 2 grade cricket piece diamond. So that segment is there, but it is not like that it is eating away the bright natural diamond segment. वो अपना मार्केट अपने आप में क्रिएट कर रहा है, मेरा सोचना ये. थैंक यू. On the manufacturing point of view, यदि हम लोग lab grown और natural diamond के comparison में करें तो in previous past during the time of wars, उसके बाद से जो रफ की थोड़ी सी जो किल्लत हुई थी, मतलब we were having some issues. For that reason, this potential of this particular market has grown because कहीं ना कहीं वो segment को भी आगे grow करना है. And to reach the niche market, diamonds are always there. But yes, LGD lab-grown diamonds are creating a separate segment. What Sunil Bhai has said is correctly right. It is creating a separate genre, a separate market to it, and it is adding a value add to that separate segment. Same way, yes, when the availability of the roughs and everything is going to be on a scaled manner, I think so. Again, the production and everything and the market scale up would be accurate, and again, the flow of the diamonds and everything, the pricing and everything would be sustainable, and it would be on a great mover side. That is my point. Well, my point is, thanks to Nirmal Sitaraman, at least everyone's talking about CVD and how is it. I mean, I do get a lot of queries regarding what's happening, but I would say probably 1 in 1,000 customers are probably walking and asking what is a CVD. But that's very rare. So as a retailer, if you ask my point of view, I'm very happy there's another segment that is growing. I mean, we are all scared comparing the natural side with the CVD. These two are two different products. And if you look at data, we sell more CZ jewelry in India than we sell natural diamonds. So if the category is different and you're selling with disclosure, I don't think that should be a problem. So that's my point. So, can I just add a little here? Actually, if you look at the statistics of the Indian market, the total diamond acquisition in the country is roughly about 4%. That is the total potential audience that you have is anywhere between 4 to 6%. So that means almost 96% of the women cannot still either afford it or they're still not buying diamonds. This is year on year I'm talking about. So when that happens is कि वहाँ potential तो है लेकिन वो खरीद नहीं रही हैं. तो इसका जब further research किया गया, so one of the biggest barrier has been, actually it's not really a barrier, but the sweet spot for an Indian consumer is roughly about 30,000 rupees. And the moment they want to shift to, let's say, diamond jewelry, because every woman aspires for diamond jewelry, that's a given. There is no doubt about that. But it is still not within her reach because आप 30,000 से अपने आप को 70,000 पे stretch नहीं कर पाते. So अगर आपको कोई lab grown diamond दे जो आपको 30 की जगह 35,000, मतलब you can stretch yourself from 30,000 to 35,000, but yet you are getting actually a diamond, which nobody can dispute. So from that perspective, I think अगर इसको ठीक से awareness build की जाए, अगर इस category को ठीक से market किया जाए, तो a huge potential exists that 96% of the middle class जो शायद आज CZ jewelry खरीद रहे हैं, they may like to upgrade themselves to lab grown. जो natural का diamond है वो वैसा ही रहेगा, वो कहीं disturb नहीं होगा. That is because people in fact there have a separate value for the natural diamonds. But अगर आप इस business में हैं और gems and jewelry में हैं और अगर आपको नया segment open करना है, तो ये मेरे हिसाब से एक नई opportunity है हम सब के लिए और वो एक opportunity हम सब tap कर सकते हैं. Thank you.
So 96% एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अभी वास्टली अनटैप्ड है एक तरीके से. So which is a very even as jewelers, you know, it is very promising. I want to add one more thing. अभी पिछले उसमें डिस्कशन बात हो रही थी 2 लाख शादियां हर साल इस देश में होती है, तो 4% is diamond and 96 is untapped market. So you can gauge the potential of the market, what you can going to achieve the thing. That is my. So हमारे साथ में जिगर जी हैं, जिगर जी शाह, CEO of SGL Labs. तो मैं चाहूंगा कि ये भी इस बारे में कुछ बोलें. So the thing is कि आज की तारीख में जो इंडिया की पॉपुलेशन है is a young population. एवरेज एज ग्रुप 25 से 28 साल का है. अब इस यंग पॉपुलेशन के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है बिकॉज ऑफ देयर टेक होम्स इज रफली अबाउट 30-35,000 रुपीज. एंड आई थिंक दिस इज अनदर बिग सेगमेंट जो हम मिस आउट कर रहे हैं, जो यंगर ऑडियंस का है, जो आने वाली पीढ़ियों का है. ये जो पीढ़ी है ये इजीली 30-35,000 रेंज में डिस्पोजेबल इनकम में पैसा डाल सकती है और ये टाइप की ज्वेलरीज खरीद सकती है. जैसे प्रसाद जी ने बोला कि उनका स्ट्रेच होता है 30 से 75 तक जाना या 70,000 तक जाना, ये सही बात है. बट आज के ये जो 30 की रेंज है इनमें ये इजीली डालेंगे, तो ये एक नया कैटेगरी जो है यंगर ऑडियंस को पकड़ने के लिए भी बहुत पोटेंशियल लग रहा है. प्रसाद जी, आप एक बहुत यूनिक पोजीशन होल्ड करते हैं कि आपने दोनों साइड देखा है, सिक्के का दोनों पहलू आपने देखा है, नेचुरल का भी और लैब ग्रोन का भी. तो मेरा प्रश्न आपसे है, उसके बाद मैं सचिन जी में चाहूंगा जवाब दें और फिर जिगर जी से कि जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, फास्ट मूव कर रही है, और सो नेक्स्ट अगर मैं देखूं कि अगले कुछ सालों के अंदर में आपको क्या लगता है कि लैब ग्रोन डायमंड कहाँ पे पहुंच जाएगा और ये कब एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे इसका मास एक्सेप्टेंस हो सकता है? इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि सही बात है कि मैं आई हैव बीन अ फॉर्मर DPS डायरेक्टर ऑफ De Beers, तो मैंने ही 14 साल प्रमोट किया है नेचुरल डायमंड्स को, और अब मैं लैब ग्रोन डायमंड में भी प्रमोशंस कर रहा हूँ. बट हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से देयर इज रूम फॉर बोथ. ये दोनों सेगमेंट ग्रो करने वाले हैं, दोनों सेगमेंट अपनी अपनी जगह पे चलेंगे. जैसे आप अपने शोरूम्स में गोल्ड भी रखते हैं, सिल्वर भी रखते हैं और प्लैटिनम भी रखते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंटेशन दैट हैपेंस. सो एक कंज्यूमर सेगमेंटेशंस करना बहुत जरूरी है, और जो वो ऑटोमेटिकली होगा. जैसे मैंने कहा कि जो आज शायद आपका सीजेड बायर है, वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहेगा, यू नो, टू लैब ग्रोन डायमंड्स. जो आपका नेचुरल डायमंड जो खरीद रहा है वो कंटिन्यू करेगा. तो इसलिए सेगमेंट, एक बार आपने अपना सेगमेंटेशन कर लिया, कंज्यूमर सेगमेंटेशन, वो अपने आप उसमें देयर इज रूम फॉर एवरीवन. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज, एक फैक्ट ये भी है कि माइंस जो डिप्लीट हो रही हैं या बंद हो रही हैं, आज देयर आर 74 ऑफिशियल माइंस व्हिच आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड बाय 2030 this will come down to about 47. I mean, these are again all statistics which I'm quoting, and eventually by 2050, मतलब और 28-30 सालों में ये मुश्किल से रह जाएंगी, ओनली 10 ऑपरेट करेंगी. और जो नए एक्सप्लोरेशंस होने चाहिए या नए माइंस को परमिशन मिलनी चाहिए, वो मिलना जरा मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज, यू नो. एंड सो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स are not going to be that free to give those permissions. ऐसा अभी आज की तारीख में लग रहा है. लेकिन डिमांड एक तरफ बढ़ती रहेगी, एज आई सेड, क्योंकि पोटेंशियल है लोगों में, उसकी डिजायर भी है, लोग खरीदना भी चाहते हैं डायमंड्स. तो आज जो डिमांड है लगभग 179 मिलियन कैरेट्स की, वो बाय 2030 एंड बाय 2050 इट विल ग्रो टू ऑलमोस्ट 300 मिलियन कैरेट्स. लेकिन आपका जो नेचुरल का प्रोडक्शन होगा, बिकॉज आपकी माइंस बंद होती जा रही हैं, तो वो कम होके सिर्फ 14 मिलियन पे आ जाएगा.
by 2050. अब इतना बड़ा जब 278 मिलियन का लगभग आपका गैप रहेगा तो फुलफिल तो करना ही पड़ेगा और वहीं पे लैब ग्रोन आएगा. दैट इज पॉइंट नंबर 2 जो मैं बताना चाहता था स्टैटिस्टिक्स वाइज. बट जो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं मानता हूं, इज दैट लैब ग्रोन डायमंड के लिए एक तो अवेयरनेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है. दूसरा, वी डोंट हैव एनीवन कंट्रोलिंग द प्राइसेस, और ये एक सबसे बड़ा इसका मुद्दा रहेगा जो सचिन ने भी यहाँ बात करी कि प्राइस इशू विल ऑलवेज बी देयर, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. और इसी के लिए इसमें ब्रांडिंग करना बोथ फॉर द लूज डायमंड लाइक अ फॉरएवर मार्क और फॉर ज्वेलरी जैसे हमने नक्षत्र किया था, उस तरह के ब्रांड्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि जो कंज्यूमर आके खरीदेगा वो एक कंज्यूमर वैल्यू प्रपोजिशन पे खरीदता है कि इस डायमंड में क्या वैल्यू प्रपोजिशन है. अब जो नक्षत्र का भी अगर आप एग्जांपल ले ले, वो फाइनली था तो 500 साल पुराना डिजाइन, देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट डिजाइन, बट जिस ढंग से उसको पेश किया गया, जिस ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया, जिस ढंग से एक वैल्यू प्रपोजिशन दिया गया, यू नो, दैट इज समथिंग व्हिच इज क्रिटिकल. तो लैब ग्रोन डायमंड में अगर ग्रो करना है तो आपको ब्रांड लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही इसका फ्यूचर है. हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे वीवीएस ही चाहिए या मेरे हर डायमंड इंटरनली फ्लॉलेस होना चाहिए, ये वो चीज नहीं है. Why? That is also because अगर आप कंपैरेटिव में एनालॉजी दूं आपको तो इट इज लाइक अ आईवीएफ बेबी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है. एक बार बेबी बॉर्न हो जाए तो आपको तो समझ में आता नहीं है, नोबडी कैन से कि वेदर वो नेचुरल है कि टेस्ट ट्यूब बेबी है. सिमिलरली इसमें भी वही है. लेकिन आप जब बेबी जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, आज भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बेबी दिखना चाहिए बड़ा होके ऋतिक रोशन दिखना चाहिए, आवाज उसकी अमिताभ बच्चन वाली होनी चाहिए और क्रिकेट खेले वो सचिन जैसा. वो आज तक पॉसिबल नहीं है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो नहीं सकता, एटलीस्ट एज इट स्टैंड्स टुडे, द टेक्नोलॉजी स्टैंड्स टुडे, कि अभी भी आप ये नहीं कह सकते पूरे सारे इंटरनली फ्लॉलेस चाहिए. उसका रीजन भी ये है कि व्हाट इन द प्लाज्मा रिएक्टर यू आर डूइंग is basically recreating the environment जो below the earth है, वो आज अब above the earth create कर रहे हैं. तो वहाँ जो environment है वो same आपने अगर environment create कर दिया तो obviously सारी process remains the same जो growth की process है. So that's why वो कुछ change नहीं होगा. So अगर ये lab grown diamond आएगा, जरूर आएगा, because there is a potential, because there is going to be a big gap between supply and demand, और वहाँ पे lab grown diamond fulfill करेगा. लेकिन ये हम सब पे निर्भर करता है कि हम इसके बारे में कैसे अवेयरनेस बिल्ड करें, कैसे ब्रांड दे और क्या कस्टमर को वैल्यू प्रपोजिशन दे, बिकॉज दैट इज द की. थैंक यू. Thank you for the great answer. Sachin, if you'd like to come in. Yeah, thanks, Vinod. I think ये दो तीन जो आंकड़े अभी बोले गए हैं, which we've been discussing, मैं सबको एक न्योता देना चाहूंगा that please come to debeersgroup.com/insight report. उसमें एक डिटेल पब्लिश्ड है एंड आई बी वेरी हैप्पी टू शेयर विनोद आपके थ्रू टू द एंटायर इंडस्ट्री के जो आंकड़े बिल्कुल एक क्लियर आप देखें कि क्या हमें लगता है. एंड दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च डन बाय De Beers फॉर द इंडियन मार्केट, प्रिंटेड एंड वर्किंग इन एक्शन. पहला मैं आपको बताऊंगा जो हमारा व्यू है नेचुरल डायमंड बिजनेस का इंडिया के रूपांतर में. इंडिया के रूपांतर में हमने एक डिटेल एक्सरसाइज करी थी 2020 में जो हमने पब्लिश करी थी और हम ईयर ऑन ईयर से ट्रैक कर रहे हैं. 2020 में हमारा मार्केट साइज था $6 बिलियन का नेचुरल डायमंड. मैं सिर्फ नेचुरल डायमंड अभी व्याख्या कर रहा हूं. हमारा एस्टिमेट है दिस विल बी $17.2 बिलियन बाय 2030 विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years, बट दिस विल बी लेड बाय ओनली हाफ द इंडस्ट्री, मीनिंग हाफ नंबर ऑफ रिटेलर्स. अगर आप एंड उसमें बिल्कुल डिटेल क्वालिफिकेशन है, जिस तरह अपना ब्रांड आप चलाएंगे, योर फोकस ऑन एंड क्लाइंट, ऑल ऑफ दोस एलिमेंट्स आप देखें उसे किस तरह से. सो एक पोटेंशियल हमारे मार्केट का नेचुरल डायमंड बिजनेस का है टू ग्रो बाय 3 टाइम्स. सो उसे बहुत आप इंपॉर्टेंटली समझिए, बिकॉज चाइना में ये एक दौर आया था 2002 से लेकर 2010 में. नाउ द टाइम इज फॉर इंडिया. आई मीन आई एम श्योर अगर आप किसी भी हमारे करंट गवर्नमेंट का एक वो पूछेंगे नेतृत्व कि व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, इट इज आवर टाइम. एंड फॉर डायमंड ज्वेलरी दिस इज आवर टाइम एज वेल. हमारी जो ईयर बाय ईयर ट्रैकिंग थी, जो हमारा एस्टिमेट था कि हम 2023 में जहां पे पहुंचेंगे, वी आर ऑलमोस्ट 40% अबव देन दैट एस्टिमेशन. तो आप प्लीज ये रियलाइज करें कि एक नेचुरल डायमंड बिजनेस का पोटेंशियल हमारे देश में बहुत ज्यादा है. नाउ
three figures that I would love to sort of आप लोग सबसे मैं encourage करूंगा कि आप देखें, उसमें वेलकम करता हूं कि आप देखें 4% डायमंड एक्विजिशन जो भी प्रताप यू मेंशन, परहैप्स हमारी जो इनपुट है वेरी डिफरेंट. हमारे हिसाब से करीब 20% डायमंड जो ज्वेलरी कंजम्पशन है उसमें डायमंड है, और एक एस्पिरेशन टू बाय डायमंड ऑन अ मिडिल प्राइस इज द बियर्स बिगेस्ट बेट इन द नेक्स्ट 7 years इन इंडिया. तो हमारे हिसाब से मिडिल प्राइस, दो सेगमेंट है, मिडिल एक तो एंट्री लेवल मिडिल प्राइस और एक हाई एंड कस्टमर, ये दो सेगमेंट इंडिया में भरपूर तरह से ग्रो करने वाले हैं. बट यू नो द ओनली कैविएट वुड बी दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने ब्रांड को किस तरह मैनेज करें. जिस तरह से प्रसाद ने मेंशन करा कि दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी, सो प्लीज प्ले इट वेरी केयरफुली. यू नो इट्स अ कस्टमर हमारे दुकानों में आता है विद अ लॉट ऑफ फेथ इन आवर ब्रांड के हमारी पूरे पूरी जिंदगी की मेहनत लेके आता है दैट we will maintain the value of what we intend to sell or they intend to buy. So I think that's very important how we manage it. And the reduction of mines and everything again is printed there. What we believe is that this is going to go down about 10% in 30 to 40 years, not will remain 20%. So there's enough diamond in the world, and I can tell you, but काफी diamond है. मैं भी recently हांगकांग शो से आया हूँ और पूरा चाइना में विजिट करके आया हूँ. बहुत diamond हमारे पास है to trade and to buy. So लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, दो मार्केट्स का एक एक्सपीरियंस जो हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट यूएस फॉर 2 minutes के एक नेचुरल और सिंथेटिक डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड्स केम इन फर्स्ट इन दैट मार्केट. व्हाट इज हैपनिंग देयर, एंड लेट्स टॉक अबाउट चाइना, व्हाट्स हैपनिंग देयर फ्रॉम अ लैब ग्रोन नेचुरल डायमंड पर्सपेक्टिव. बिकॉज़ इंडिया तो आप लोग सब शेप करेंगे, हम लोग सब साथ शेप करेंगे, एंड विल परहैप्स हैव द आंसर इन द नेक्स्ट 2 years. नाउ यूएस में आज की डेट में द लैब ग्रोन डायमंड इज सेलिंग pretty much everywhere. The high-end independent retailer is getting more and more reluctant stocking it now. The value in a defined market is now about 5 to 7% overall. But interestingly, आप देखिए उससे फास्ट फॉरवर्ड करें, चाइना में क्या हुआ. चाइना में इंट्रोडक्शन लैब ग्रोन डायमंड का 1.5 साल पहले हुआ है. Most of the big chains are launching lab grown diamond in 2023. And जब मैं बोल रहा हूँ तो सबसे जो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो लॉन्च कर रही हैं, और उनकी पोजिशनिंग जो है क्लियरली उनकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को रिप्लेस करने में पोजीशन हो रही है एट $400 अ कैरेट. सो एक अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक ज्वेलर एक करते हैं इसको ऐसे पोजीशन, सो चाइना विल पोजीशन इन अ सर्टेन वे. सो आप लोग जब भी अपना बिजनेस प्लान करें, आई कंप्लीटली एग्री टू प्रसाद, इट्स अ न्यू कैटेगरी, वी शुड नर्चर इट, it holds future, but be very careful on the promise you're making in it, because it is not a promise the way we make in natural diamonds and the natural products that hold value and have a lifetime perseverance. So these are 2 or 3 things I wanted to add below, which could be valuable for this conversation. Great perspective from the other side as well. So, Jigar ji, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? So definitely, from what Mr. Sachin said, it's very important कि consumers को पता हो कि वो क्या खरीद रहे हैं. उनको पता होना चाहिए कि जब वो natural खरीद रहे कि lab grown खरीद रहे हैं, उनको educate करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में. आज की तारीख में education to customer is very important, I believe, and उनको realize होना बहुत जरूरी है कि what are they purchasing. And as a jeweler, it is our duty कि हम उनको educate करें right format में, right तरीके से, right knowledge दे, and only then we will also be able to put both the categories together and move forward. Obviously, opportunity is very large. It's only going to become bigger and bigger. There's no diminishing over there. But the only catch is how are we going to educate our customers? How are we going to take that forward? And that is going to be the whole thing, according to me. Thank you. पूरे देश में सबसे बढ़िया खाना सराफा बाजार के अगल बगल में मिलता है. क्या आप सब अग्री करेंगे? क्योंकि हमें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए. तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे रिटेलर पैनल के लिए है कि एक जगह जहाँ पे हम नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो रिटेन हम करना चाहते हैं, और दूसरी तरह हमें दिखाई देता है एक विशालकाय मार्केट जिसकी पोटेंशियलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू हो, ऑब्वियसली.
पर इस चीज को नेविगेट करना बहुत मुश्किल काम है। आज जिस दुकान में हम रियल डायमंड रखते हैं, अगर हम उसमें ही लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी रखना शुरू करें तो कस्टमर के मन में अलग अलग तरह के सवाल शुरू हो जाएंगे और एक मन में डर आ जाएगा। तो मेरा इंद्रनील, शिवपाल भाई और सुनील जी से ये है कि इस चीज को कैसे नेविगेट करना चाहिए, हम इस चीज से कैसे कि हम दोनों बिजनेस कर सकें, इसमें अपने को क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, अगर उसमें कुछ डिस्कशन अपने कर सकें, और बाकी भी जो अपने ज्वेलर्स जो आए हैं शायद उनको भी उसमें से कुछ रास्ता मिले कि इस चीज का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। ऑब्वियसली प्रसाद जी भी, जिगर जी और सचिन जी भी, वो भी आप ऐड करें कि इसमें दोनों हाथ में लड्डू कैसे रख सकते हैं। देखिए, I'm very interested to see how the business of CVD is maturing or happens in the next 10-15 years in India. अब अगर आप देखेंगे अभी अमेरिका में आपका 12% जो सॉलिटेयर बिजनेस है एंगेजमेंट में, वो अभी नेचुरली CVD में शिफ्ट हो गया बिकॉज दे हैव अ यूनिक प्रोपोजिशन टू सेल। वो बोल रहे हैं हम लोग ग्रीन है, वी आर इको फ्रेंडली, वी आर इजी ऑन द पॉकेट। So the new millennial customers and Gen Z, Gen Y are buying that idea. So I'm personally, I'm really interested in how the market matures, and if in the future there's an opportunity and there's a huge demand supply mismatch as Mr. Prasad Kapre just mentioned on the natural diamonds, and if the price point opens down, it's very, I mean, I'll be looking forward to sell CVD with proper disclosures. How do we go about it? I think we can all discuss on that and figure out how Suppose if you were to do it today, so would you launch a separate brand or would you carry the same goods in the same store? So if you were to, it's just a hypothetical question. So how do you think, you know? First and foremost is selling with disclosures. And of course, if a customer walks in and you give that customer an option and these are natural diamonds priced so and so, and these are the alternatives of CVD, and this is how we stand by the product, it is up to the customers to decide. I mean, the good thing is after the budget that happened is people have slowly started talking about it. What is CVD? You know, why would I buy a natural diamond when I'm getting something with at a 50% discount or a 60% discount? And with all these weddings happening outside India and people don't want to travel with the jewelry. So there's a unique opportunity for these kind of customers who are looking for value. There's a story to tell, and then and there's it's available at a discount. So I think the best way, I mean, it all depends. And presently as we speak, there are about 4 or 5 brands that are existing in India with 10 stores in down south. I won't remember the name. And some other retailers are also trying, and I think we can, next time, ask them and invite them in the panel and ask them how are they doing it, what the customers are reacting to. So, विनोद भाई, जैसे प्रसाद जी ने बताया था कि every diamond, is born 1 billion years ago. Natural diamond is born 1 billion years ago. Okay, so every jewelry piece has a story inside it. So मैं जितने भी जन हैं, आप हो, सब है, अपने जितने retailers हैं, every piece should be sold out to the market with a story lineup, with a tag lineup. Okay, और उससे यदि आप differentiate करने जाओ ना lab grown diamonds को, तो वो market emerge कर रहा है, but it is emerging towards taking over the costume jewelry market, okay, which is also a very niche market and a very big market. So keeping both these things separately and giving the perfection to the customers, what we are selling, that is more important. And with every true aspect, like कि यदि हम CVD बेच रहे हैं या LGD बेच रहे हैं, तो हमें वो बेचते समय हिचकिचाना नहीं है कि हमको बोल के बेचना है कि ये CVD है या LGD है. On the same point of a time when we are selling a natural diamond, we should give a tagline कि
every diamond is born 1 billion years ago and वो आज आपके हाथ में है कि आपके गले में है कि आपके कान में है तो it is something environment is gifting you what you are purchasing is a gift from the environment. So इस तरीके से टैगलाइन के थ्रू यदि हम उसको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं तो it is going to be a very grown up market. Uh, Thank you, Shani Bhai. I totally agree with Shani Bhai. Thing is, coming from a traditional diamond jewelers family, I am always being a very strong critic of this CVD and HPST diamond. Being it is also right the what things are coming, how big it is coming, and so it might be in future selling CVD diamond, but not now. Again, also you have to consider the fact that how the diamond jewelry is being purchased in Indian context or Indian tradition. When you are going to purchase the thing, you purchase the jewelry keeping is asset class, and when you are gifting to your daughter, so you take it as a history done, not like that just giving her this fashion jewelry sort of thing. तो if विनोद भाई ने पूछा है जैसे कि अगर आपको करना पड़े तो कैसे करना चाहिए, तो you must create a separate marketplace for CVD and natural, because it will give a wrong impression in the mind of the customer also ki what actually they are buying. It will make them more confused in this context. So my idea is to create a separate brand, separate marketplace for the both the things. It is my idea. Thank you very much. मेरे हिसाब से तो हम सब यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी आती है वहाँ हमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए. इनफैक्ट इंक्लूडिंग डिबियर्स, ऑल सेड एंड डन, डिबियर्स भी आज अपना ब्रांड लेके तो आया है. सो एंड नथिंग रॉन्ग इन इट. मतलब अगर है अपॉर्चुनिटी और ठीक है, उन्होंने वेरी क्लियर सेगमेंटेशन किया है और करना भी चाहिए, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट. हमारे को भी अगर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, हमको भी एक सेगमेंटेशन करना चाहिए. और हर कैटेगरी में होता है. आई डोंट नो व्हाई वी गेट सो कैरिड अवे इन जेम्स एंड ज्वेलरी कैटेगरी. आप एक सिंपल चीज चॉकलेट्स देख लीजिए, आप कैडबरीज को देखिए, वो जेम्स भी बनाता है, एक्लेयर्स भी बनाता है, डेयरी मिल्क भी है, सिल्क भी है, 5 स्टार भी है. कहने को तो है तो चॉकलेट ही, मतलब व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट इट. But the fact is, it's a clear consumer segmentation with a clear value proposition. हर चीज गोल घूम के बात यही आती है, कस्टमर सेंट्रिक. कस्टमर आपका क्या चाहता है? अगर आप सीजेड बेच सकते हो तो आप लैब ग्रोन क्यों नहीं बेच सकते? एंड इट इज लिटरली लाइक, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, लुक एट जॉनी वॉकर. You know, they have a red label, they have a black label, they have a blue label, they have a gold label, they have a green label, they have a double black. अरे है तो स्कॉच ही ना सारी. But there is a clear consumer segmentation. तो मतलब it's a business opportunity, और consumers comes in all shapes and sizes. Please remember that. तो हर चीज बिकती है, हर चीज बिकेगी. और खासकर इंडिया जैसे मार्केट में, जहां it's a very young market, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इंडिया की अगर आप टोटल पॉपुलेशन आज की तारीख में देखें, 54% of Indians are less than 25 years of age. That means वो 1998 के बाद पैदा हुए हैं. ठीक है, तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू. मीडियन इफ यू कैन लुक एट 1998, जो 1998 से पहले पैदा हुए हैं और जो 1998 के बाद पैदा हुए हैं. जो आपके फ्यूचर बायर्स हैं वो सब 1998 के बाद पैदा हुए हैं, और उनका वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट. अनफॉर्चुनेटली हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब 1998 के पहले के बैठे हुए हैं. And that's where the disconnect comes in. And that's where it is very important for all of us to understand. They are born with digital screens. We are not. We were never born with those digital screens. They are born with internet. They are born with, you know, the media explosion that they have. So given all of that, we have to change our mindset. There is nothing wrong with agar aap apne same store mein rakhna chahein, nothing wrong in it. But as long as there is a clear mandate, there is a clear branding, there is a very clear transparency given to them. और जो आप करते हैं, जब आप कहते हैं तो सीजेड को सीजेड कह के ही बेचते हो ना, आप थोड़ी बोलते हो हम डायमंड
बेच रहे हैं, या अगर आप गोल्ड बेच रहे हो तो आप 18 कैरेट 22 कैरेट क्लासिफाई करके बेचते हो, या अगर आप गोल्ड रखते हो और प्लैटिनम रखते हो और सिल्वर रखते हो तो इसमें भी क्या हर्जा है? सो यू कैन कीप इट इन द सेम स्टोर or you can have a different store. There is, I mean, you can, it purely up to each one of you to decide that. But there is an opportunity coming in. You have to decide कि वो opportunity लेनी है या छोड़ देनी है. तो दोनों लड्डू चाहिए या एक ही लड्डू चाहिए? सचिन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, बिल्कुल. Thanks, Vinod. Thanks for giving me the opportunity. मेरे हिसाब से, as I'll again repeat, it is a golden opportunity for the diamond business or a diamond opportunity for diamond business in the next 7 years. ये जो अगले 7 साल है ये दोबारा नहीं आने वाले. Certain companies will reach heights, certain companies will not exist. Now the moving forward, जैसे प्रसाद ने mention किया, I also would like to add that brands will matter. आपको डिसाइड करना है कि आपका ब्रांड कस्टमर के लिए क्या है. अगर आप हर, if you want to be the answer for everything, I don't think your business will exist in the same way. I think it will be about specialization and a clear mandate कि आपका ब्रांड है क्या. अगर आपका ब्रांड fun, frolic, easy, casual, that's a good business to be in, but आप वो चूज करिए. या आपका ब्रांड, you know, long life, lifetime, forever, precious things, things that matter and valuable. अगर आप ये differentiation करके चले, then I think it's a great opportunity on both, but please choose what business you want to get to, because the massive opportunity for diamond is on, and 7 years you will see either your businesses will be 5 times, 7 times, or perhaps they will not be there. So it's a very important decision to be made by you. Thanks, Vinod. आपके मुंह में घी शक्कर, जैसे ट्रेडिशनली बोलते हैं. जिगर, आपका भी इस पूरे डिबेट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. वो है कि एक जज का कि नेचुरल, रियल और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो एक एस्पेक्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना शायद विदाउट, अगर शायद ये लैब्स नहीं रहती तो हम बहुत बड़े दुविधा, बहुत बड़ी दिक्कत में रहते. तो लैब्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और लैब्स की कुछ नेचुरल बॉटलनेक्स हैं, जैसे मशीनरी या जो भी. सो आप क्या चीज करना चाह रहे हैं जिससे ये बॉटलनेक्स कम हो जाए, प्रोसेसेस फास्टर हो जाए, डिलीवरी फास्टर हो जाए, और ओवरऑल आपको ये लैब, क्योंकि आपने दोनों पक्षों को सुना है, रियल और लैब ग्रोन, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? So let me start by saying that yes, as a lab, we have a very important role to play at multiple levels. Like, पहला तो लेवल है जब हमारे पास चाहे ज्वेलरी हो, लूज हो, टेस्टिंग के लिए आती है, तो हम इसको सर्टिफाई करते हैं, ट्रांसपेरेंटली बताते हैं कि ये क्या सेगमेंट में है, ये क्या नेचुरल है, कि ये सीवीडी है, एचपीएचटी है, लैब ग्रोन है, व्हाटएवर. सो इसके पीछे हम ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के पीछे काफी रिसर्च करते हैं, काफी डेवलपमेंट करते हैं. वी हैव अ मशीन विच इज अवर टैग स्क्रीन मशीन, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लैब ग्रोन है कि नेचुरल डायमंड है. इनफैक्ट अगर आपको याद हो, जब कैरेटोमीटर आया था, आप सब ज्वेलर्स ने इनको अभी एक्सेप्ट किया है, एंड आई बिलीव ऑलमोस्ट एवरी ज्वेलर हैज अ कैरेटोमीटर इन हाउस. I think in times to come, a machine like dial screen is something that every jeweler will have to accept and keep with them, because when you are doing buyback, you need to know what you are buying back from your customer. Customer को आपने 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या दिया था, सर्टिफाइड था, नहीं था, पता नहीं है, बट आज वो आप पता लगा सकते हो. You can secure yourself. एट द सेम टाइम आप कस्टमर को एक्सपीरियंस भी दे सकते हो कि देखिए जो हम आपको दे रहे हैं, ये मैं मशीन से सर्टिफाई करके दे रहा हूँ कि ये नेचुरल है, ये लैब ग्रोन नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एज अ टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू build more trust with your customers. Obviously, the most important part is to have transparency and continue the trust that you have built with your customers. And as a lab, we play that role very strongly. बिकॉज जब हम सर्टिफाई करते हैं, हम बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यूज करके इसको आइडेंटिफाई करके बताते हैं वेयर इट फॉल्स.
And I think disclosure is very important to all you people for your customers. अगर आप चाहे दोनों ब्रांड्स को इकट्ठा रखो एक ही स्टोर में या अलग अलग करके रखो, you know, that's the choice that you will have to take with time. But obviously, as the market is growing, is fragmenting, opportunities are becoming bigger and bigger. हम सब कहीं ना कहीं वो opportunities को grab करने की कोशिश करेंगे, but ट्रांसपेरेंसी से बेचना, ट्रांसपेरेंसी से कस्टमर्स को एजुकेट करना is going to be very important. And as a lab, I feel this is something that every jeweler will have to adopt. आज की तारीख में कई ज्वेलर्स है जो खुद सर्टिफाई करते हैं या फिर they don't give certification. It's fine because ज्वेलर आपके पास आता है, आपके ट्रस्ट से आता है. But the younger generation जो है, now that we are talking about the younger generation, which is more learned, जिनके पास स्क्रीन्स है, जो पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं काफी कुछ, उनके दिमाग में कई सवाल होते हैं. इन सवालों का जवाब देने के लिए एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देना एडिशनल ट्रस्ट बिल्डिंग है. जब हम मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव, हम ISI मार्क देखते हैं. क्यों? बिकॉज वी वांट टू हैव दैट एक्स्ट्रा ट्रस्ट, a layer of trust. It's not that the brand which we are buying is not correct और वो कुछ गलत दे रहा है, वो बात नहीं है. बात ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ट्रस्ट की जरूरत है. And that is where I feel we labs play an important role. And it's always going to continue where we are going to help you people grow further, continue establishing the trust with your customers. Thank you. So टेक्नोलॉजी और डायमंड और ज्वेलरी दोनों ही मेरे पैशन है, और पर मेरे को यहाँ लोगों के पेट में चूहे कूदने की आवाजें आ रही हैं, तो मैं बहुत जल्दी खत्म करना चाहूंगा ये सेशन. सचिन जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है. जो अभी लैब और रियल के अंदर में जो भी अपने सुने हैं, डिबेट करे हैं, सब कुछ करे हैं, मैं आपको DBS और फॉरएवर मार्क इन वन देखता हूँ. somebody who is representing natural diamonds. So आप क्या कर रहे हैं कंज्यूमर के मन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, या ऐसी क्या चीज एक्टिविटीज है जो हम कर सकते हैं नेचुरल डायमंड को क्या बोल हम ऐसे क्या चीज कर सकते हैं जिसमें नेचुरल डायमंड के ऊपर में लोगों का फेथ जो है वो बरकरार रहेगा? क्योंकि ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए कि जब डायमंड, नेचुरल डायमंड की वैल्यू जो है वो गिरे और खत्म हो जाए, क्योंकि वो पूरे इंडस्ट्री के लिए डिजास्टर्स रहेगी. लोगों का फेथ ज्वेलरी से कंप्लीटली उड़ जाएगा. तो एज DBS, एज फॉरएवर मार्क, आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? थैंक्स फॉर सच एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और मैं आपको काफ़ी चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी के रूपांतर में, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे सामने आएंगे इन द कमिंग टाइम. मगर मैं एक ही चीज़ पे फोकस करूंगा, वो है जो एक कंज्यूमर के लिए कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो कम्युनिकेशन है कि भाई हमारी इंडस्ट्री क्या अच्छा करती है, एंड वी कलेक्टिवली हमारे को एक अच्छा उसमें काम करना है. मगर एक टेंजिबल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोग लेके आ रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए. इट इज सोर्स ट्रांसपेरेंसी और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रूपांतर में हर डायमंड की ट्रेसेबिलिटी. By next year, Vinod, starting actually July this year for 1 carat plus, मगर छोटे डायमंड के लिए from next year, हर सिंगल डायमंड जो डिबेट्स आएगा उसकी उसके ऊपर एक नंबर लिखा आएगा, उससे आप ट्रेस कर सकते हैं कि किस माइन से आ रहा है, ये किस कंट्री से आ रहा है, किस माइन से आ रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है. क्योंकि आज की डेट में काफी डिबेट होती है कि हम लोग इको फ्रेंडली नहीं है, whereas some other ways of manufacturing are which is completely flawed. तो एक हर डायमंड के साथ, एक जनरल नहीं, हर डायमंड के साथ QR कोड स्कैन करके आप अपने डायमंड का सोशल इम्पैक्ट, उसकी किस ईयर में वो बर्थ हुई, कहां से आया, किस किस ने टच किया, वो कट रफ के रूप में कैसा था, सेमी कट के रूप में कैसा था, पॉलिश रूप में कैसा है, और किस दिन उस पर ये छाप लगी है, ये हम लेके आ रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज चेंजिंग इन दिस इज कि एक सस्टेनेबिलिटी और एक जैसे कॉन्शियसनेस ऑफ एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, जो यंगर कंज्यूमर्स विल बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ. तो हम एक ये इसको चेंज कर रहे हैं कि डिबियर्स जो बहुत बड़ी कंपनी है, इसने बहुत बड़ी CSR करके वर्ल्ड में चेंज किया, इसको चेंज करके हम एक ये डिसीजन एक कस्टमर के हाथ में दे रहे हैं कि जब वो
कस्टमर आपकी दुकान में घुसे, आप उसको ये हाफ कैरेट का हीरा दें और उस हीरे से क्या हुआ है, एक गर्ल कॉल्ड मारी हु गॉट हर 1 year एजुकेशन, वो ऐसी दिखती है इस समय इस क्लास में, आके आप देखें, ये स्क्वायर फुटेज ऑफ फॉरेस्ट इज प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ दिस डायमंड नॉट फ्रॉम डिबेयर्स. ये चेंज हो रहा है और ये बहुत फास्ट आ रहा है. एज आई सेड, फॉर बिग साइज डायमंड्स दिस विल बी अवेलेबल फ्रॉम जुलाई और 30 पॉइंट प्लस विल बी अवेलेबल फ्रॉम January 1st नेक्स्ट ईयर. तो ये बहुत बड़ा चेंज है बैकएंड में, लेकिन हमारा सोचना ये है, ये एक चेंज होगा पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिवली. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, ये पूरी इंडस्ट्री का चेंज हम लेके आ रहे हैं. एंड दैट बी अवेलेबल टू एवरीबडी हु स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर एंड स्टैंडिंग फॉर नेचुरल डायमंड बिजनेस. तो ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. Thank you so much for updating us on that. With this, I would like to thank my panel for their time and sharing their wisdom with us. And with this, I would like to close this session. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. What a lovely and informative session was this, ladies and gentlemen. And now it's time to felicitate our wonderful speakers. I'd like to welcome on stage on this note, Mr. Nishit Nair, Director, Chandrani Pearls Private Limited. Mr. Nishit Nair is right here. Please welcome him with a round of applause. I would request him to kindly felicitate Mr. Sachin Jain, Managing Director, De Beers, India. He's there virtually, but his memento is right here with us. Yes. We have with us Mr. Prasad Kapre, CEO and Director, Style Quotient Jewellery Private Limited. I will request sir to kindly felicitate Mr. Sunil Poddar, Director, Shriji Jewellers. Thank you so much, Mr. Nair. And I'd like to now welcome Mr. Shubhankar Sen, MD and CEO, Senco Gold, Co-Chairman, ICC National Expert Committee on Jewelry and Lifestyle. Sir, I'd request you to kindly felicitate Mr. Chirag Soni, Director, SGL Labs. Please welcome Mr. Indranil Roy Chaudhary, Director, MPJ Jewellers Private Limited. And also please welcome Mr. Shripal Jalakia, Director, Shrikunj AAI Limited. Thank you so much. These were our lovely speakers, ladies and gentlemen. Can we have a group photo of all of you? I would like to thank Mr. Jigar Vora for being here with us. Can I have them a hearty and heartfelt, warm applauses, ladies and gentlemen? Thank you, all of you gentlemen. Thank you so much. Ladies and gentlemen, you can now proceed for a short lunch break. Even more interesting because I am not just welcoming a motivational speaker right here. I'm going to invite someone who has motivated all of us throughout his body of work and his life full of experience. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. B.A. Ramesh,
Joint Managing Director, Thangamayil Jewellery Limited. We are very proud to welcome him here, and let me read out his amazing experiences. Mr. B.R. Ramesh believes that everyone has potential to be amazing and that a healthy culture can inspire people to be at their best. He helps organization, employees, and other association members not just to get unstuck and accelerate towards high performance. His elegance is to curate clarity and alignment to a worthy mission and united efforts towards positive results. Mr. B.A. Ramesh is the Joint Managing Director of Thangamayil Jewellery Limited. When the rest of the South India was working on the concept of comparative pricing, he formulated and successfully implemented the game-changing concept of competitive pricing. His extensive travel helped him understand various cultures and people that has been instrumental in shaping his unique style of customization. Let us know a little bit about Thangamayil Jewellery Limited, which is positioned in the market as a chain of retail jewelry stores across several districts in Tamil Nadu. From the time of its inception in 2000 as Thangamayil Jewellery Private Limited, the company grew exponentially to turn out as a public limited company in 2007 and the first jewelry company to list its shares in stock exchange in the year 2010. Mr. B.A. Ramesh is also a major dignitary in some of the important councils as Zonal Committee member of All India Gems and Jewellery Domestic Council. He is the director of Indian Bullion Merchants and Association. He is the vice president of Tamil Nadu Chambers of Commerce and Industry, and he's the president of Madurai District Diamond, Gold and Silver Jewelers Merchant Association. Once again, ladies and gentlemen, put a huge round of applause for Mr. B.A. Ramesh, Joint Managing Director, Thangamayil Jewellery Limited. Sir, it is an absolute honor to have you here with all of us. And as I said, let's not just have a motivational speaker. Let's have the man himself who motivates with his very life. Sir, हम आपसे सुनना चाहेंगे कुछ? Just to add to that, what I would like to specially mention is that if you look at the history, the beginning of Mr. Ramesh's company started from a 10 by 10, 100 square feet showroom. And we all know that Tamil Nadu is one of the largest jewelry consumers or consumption state in the whole country. Kintu Madurai, Coimbatore, Amra Madurai temple ki jani, ba oi area Amra we know of certain specific things, but coming from there with a large vision, वो विजन के साथ 2010 में कंपनी लिस्ट करना, कंप्लायंसेस को माना और उसके साथ साथ ग्रो करते जाना, स्टॉक मार्केट शेयर प्राइसेस में मेंटेन करना, इतने सारे स्ट्रेस के साथ साथ to remain as humble and as down to earth and as sweet and as inspirational, that is the biggest thing that we should all learn from him. Sir, हम लोग बहुत आशा करेंगे आपसे सीखने के लिए and कुछ भी हेल्प चाहिए आप he's there, please. Hare Krishna. First of all, I should say to thanks all of the audience and Dolkia to invite me here. So I'm going to express my experience from 1979 में मैंने ये मार्केट में आ गया. 1980 से 1991 तक मैंने ज़्यादा छोड़ दिया. Actually, my father gives portion to me and my brother. 10 by 10 showroom में 12 किलो का वैल्यू सोना है, लगभग 10 लाख रुपया है उसी दिन. Then 1994 में मैंने लाख से करोड़पति हो गया, बहुत अच्छा है. लेकिन 19 ये
1999 में मैंने एक्सपोर्ट किया, ज्यादा लॉस हो गया, सो फिर भी जीरो हो गया। 21/10/1991 में मैंने नया शोरूम तंगमेल ज्वेलरी नाम में शुरू किया। उसी दिन हमारा कैपिटल ने 4 किलो था। ये भी हमारा हमारा भाई का खुद का नहीं है, हमारा माता, हमारा भाभी, हमारा मिसेस तीनों देने वाला सोना है। इसी से शुरू कर आज इतना अच्छा बना है। I'm speaking with you with my experience. Actually, for the first 10 years, what I am studying is do's and don'ts. क्या करना मत, क्योंकि पहले क्या हुआ उसी समय फेस का बिजनेस था। अभी भी इधर कैसे है उधर ऐसा ही है। ओनर ही बैठता है, ओनर ही बात करता है, ओनर ही कस्टमर के पास भेजता है, ओनर ही देता है। सो ही वांट्स टू डू समथिंग with customer because his presence should be there. So मैंने फर्स्ट निकाला, कस्टमर को चॉइस चाहिए, कस्टमर को माल चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, कस्टमर को प्राइस चाहिए। ओनर बैठकर काम करने का जरूरत नहीं। सो फर्स्ट मैंने डूस एंड डोंट्स में ऐसा किया। एक्चुअली मैंने क्या किया, बहुत बड़ा काम कुछ नहीं किया। मैंने देखा हमारा विजन में जो आइडिया है, मार्केट सब भीड़ है, लेकिन मैं इससे अकेले क्या करना, यही मैंने योजना किया। सो पूरा नंबर 2 में धंधा करता है, मैंने अकाउंट में काम किया। सो इनिशियल से मैंने बैंकर को यूज किया। सो हाउ टू डील विद बैंकर, क्योंकि हमको कैपिटल इतना नहीं है। हमारा ज्वेलरी का बिजनेस तो कैपिटल इंटेंसिव का बिजनेस है। सो कैसे ग्रो करना, कैसे प्लान किया ना। अभी हमारा क्या काम कर रहा है, ये तमिल में मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा असिस्टेंट है, हिंदी में बोलता है। हमारा मेन मोटिव क्या है, என்னை சுற்றி நடப்பவைகளை உன்னிப்பாக கவனமாக பார்த்து அதை அனுபவமாக வியாபாரமாக மாற்றுவோம். That is the main motto. You please tell. इसमें बात என்னை சுற்றி நடப்பவைகளை உன்னிப்பாக கவனித்து அதை வியாபாரத்துல கொண்டு வர்றது, இதுதான் என்னுடைய மெயின் मोटो। सर कहना चाहते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी होता है उसे बहुत फोकस करके उसे लेके हम गोल के थ्रू वर्कआउट करना है, तो तब ये एग्जीक्यूट होके वो सक्सेस के लिए लेके जाएगा। सो हमारे सर हर बार बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हमारे मतलब साथ में सराउंडिंग्स में ही है, हमको बहुत फोकस्ड और एक कंसंट्रेशन के साथ उसे देखना है, तब जाके वी कैन गो टू द सक्सेस गोल। एक्चुअली 21/10/1991 में तंगमल ज्वेलरी स्टार्ट किया। उसी समय हमारा पास इन्वेंट्री 4 किलो था। मैं व्यापार करता हूँ 1994-95 में मॉर्निंग 8 बजे आसपास मैंने एक शादी जाकर, उस समय हमारा पास मारुति ओमनी था, उसमें बैठकर मैंने आ गया। पहले ड्राइवर चला गया, बीच में मैंने बैठा, बाजू में हमारा असिस्टेंट बैठा। लगभग मॉर्निंग 8 बजे था। मैंने हमारा असिस्टेंट को देखा, रोड साइड में दिखाकर, ये क्या है,
उन्होंने बोला साहब बच्चों लोग है इधर ज्यादा स्कूल से, सो बच्चों लोग ज्यादा स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। இப்போ உனக்கு என்ன தோணுது? இப்போ உனக்கு என்ன தோணுது? अभी आपको इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है करके पूछ समझ रहे में हैं आ सर। रहा है। ऐसा मैंने उनके पास पूछा। फिर भी थोड़ा देर के बाद मैंने पूछा ऐसा ऐसा मदरसे में ज्यादा जगह है, सेंट मेरी स्कूल है, निर्मला स्कूल है, ऐसा भी है, तो सेम टाइम में इतना लोग, अभी क्या आपको सोच रहा है? अभी तीसरा टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, मैंने 10 मिनट के अंदर हमारा असिस्टेंट को आपको क्या सोच रहा है, आपको क्या सोच रहा है? सर अपने असिस्टेंट्स को पूछ रहे थे कि इनको देख के आपको क्या सोच आ रहा है, इन सब बच्चे लोग को, जो स्कूल जाते हुए बच्चे लोग को देख के उनको पूछ रहे हैं असिस्टेंट से कि आपको इनसे क्या क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या सोच रहे हैं आप इनके बारे में। फिर हमारा असिस्टेंट ने बोला क्या भाई मॉर्निंग टाइम में बच्चों लोग स्कूल जा रहे हैं, यही मैंने बोलता हूँ, 5-10 बार पूछ रहे हैं, छोड़ दो, हमको स्कूल जा रहा है यही मालूम है, लेकिन आपको क्या सोच रहा है ये बोल। फिर मैंने उनके पास बोला हमारा गांव में इतना लोग है, इतना लोग बड़े होने के बाद लेने के लिए पायल लेना, अंगूठी लेना, गले लेना, चेन लेना, हमारा दुकान बहुत छोटा है, इतना अपॉर्चुनिटी है, हमारा पास दुकान बहुत छोटा है, बड़ा दुकान रखना जरूरी है। ये विजन मैंने बच्चों को स्कूल, इधर भी बच्चों स्कूल जाते हैं मॉर्निंग भी मैंने देखा, तो इसके बाद हमको आ गया ऐसा छोटा छोटा बात हमारा आंखें में जो देखता है यही रखकर मैंने ये विजन को बड़ा करता है। फिर मैंने उसी समय हमारा पास दुकान 300 स्क्वायर फीट में था, फिर 15,000 स्क्वायर फीट में 2001 में मैंने शुरू किया, 16/2001। ये इसी समय मैंने और एक एक्सपीरियंस मैंने बोल रहा हूं आपके पास। 92-93 आसपास मैंने हमारा बच्चों बेटा को लेकर चॉकलेट के दुकान को गया, उसी समय टीवी आने वाला का टाइम है। हमारा बेटा ने ये दुकानदार के पास जाने के बाद एक नाम बोलकर चॉकलेट मांगा, ये दुकानदार को बहुत खुश है, मालिक आ गया, बेटा आ गया, सब उन्होंने ज्यादा चॉकलेट ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। हमारा बेटा मना किया, उनको जो मांगता है यही चाहिए। अच्छा छोड़ दिया। फिर मैंने उनको लेकर अपोजिट का दुकान गया, ये दुकानदार उनको जो चॉकलेट मांगा ये दे, सिर्फ उन्होंने 2 लेकर मैंने 100 रुपया उनको दे दिया, चिल्लर लेकर जो पैसा ले लो। उन्होंने हंस कर 2 चॉकलेट आटाना आप 100 रुपया देते, ठीक है। इसके अंदर ये व्यापारी ने हमारा बेटा के साथ पूछा, बच्चों आप दूसरा चॉकलेट लेना चाहता है? ये मना, एक्सेप्ट। अंदर जाकर देखा है, उन्होंने सिलेक्शन किया, बिल तो 76 रुपया, बिल तो 76 रुपया। क्या 25 पैसा का चॉकलेट नहीं है अपोजिट वाला, ये नहीं तो भी उनको 76 रुपया का बिजनेस छोड़ दिया। तो दिस इज द कानून,
दिस सिनेरियो से मैंने क्या सुना है, आपके पास जो है ये बेचना मत, कस्टमर का जो चाहिए ये बेच दो। ये छोटा मिठाई लेने का समय हमारा बेटा हमको सिखाया। फ्रॉम ऑन द टाइम हमारा एवरेज बिल टिकट 2000 रुपया। सो 25 पैसा का चॉकलेट देने के बिना ये 76 रुपीस का व्यापार को छोड़ दिया। सो 2000 रुपया को कस्टमर को हमारा पास लेने वाला है। सो कैसे हम उनको सर्विस करना, कैसे हमने उनको चॉइस देना। हम इसके पहले क्या किया, हमारा पास जो है ये उनको देता है, बट उसी दिन से कस्टमर जो मांग रहा है ये दे दो, उल्टा। इसी के बाद मैंने स्टॉक ज्यादा किया, सब उल्टा। सो दैट इज द मेन मोटो। अभी भी लॉट ऑफ हमारा ज्वेलर क्या करता है, दुकान में ज्यादा माल रखता है। क्या माल रखता है, उनको जो पसंद है ये रखता है, लेकिन कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर को अभी दोपहर में नीचे खाने के लिए गया मैंने, सब इधर, लेकिन हमको क्या चाहिए, दही सालम चाहिए। ये भी 2 स्पून 3 स्पून है, लेकिन उधर नहीं है। मैं 15 मिनट वेट कर ये दही सालम आने के बाद खाता है, तो देन ओनली हमारा माइंड खुश होता है। सो दैट इज द ट्रेंड चेंज। एंड देन 2000 में मैंने चाइना गया। चाइना जाकर आने के समय मैंने पूरा विजिट किया। 2000 का पहले कैसे मैंने भाव फिक्स कर रहा है, एक माल 10 रुपया का मैंने लेता है। मद्रास में क्या भाव है, 14 रुपीज। कोयम्बतूर में क्या भाव है, 15 रुपीज। मैंने 14.5 रखता है, दैट इज कंपैरेटिव में भाव करता है। चाइना जाकर आने के बाद वेरी सिंपल, हमारा भाव क्या है, 10 रुपया। हमारा खर्चा क्या है, 1 रुपया। हमको प्रॉफिट कितना चाहिए, 1 रुपया। 12 रुपया रखो। कंपैरेटिव प्राइस है, कॉम्पिटिटिव प्राइस है। आपको कितना खर्चा है, आपको कितना मार्जिन चाहिए, क्यों अननेसेसरी यूर पैसा ज्यादा रखकर प्रॉफिट ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। सो चेंज किया। उसी समय मैंने सिर्फ हमारा पास तो जितना माल है 5% का माल को मैंने कंपैरेटिव प्राइस से कॉम्पिटिटिव रखा है। तो 1 साल के अंदर 60-70%, 2 साल में 100% हमारा भाव तो कॉम्पिटिटिव भाव में रखा है। तो मैंने सीखा है, कस्टमर तो प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्राइस, सर्विस, buyback. This is the most important thing we are doing to the customers, because our customers are always B and C, middle class, mass. So they what they need, it should be given by us. If it is not, no worth. Then धीरे धीरे हमने पहले से व्यापार को देखता है। हमारा व्यापारी लोग 1 साल में व्यापार करता है, अंत में क्या देखता है, बोलो भाई, बोलो। डोल किया, प्रॉफिट देखता है। मैंने चेंज किया हमारा माइंड को।
प्रॉफिट देखना मत, वैल्यू देखना। वैल्यू कैसे आता है? ईपीएस से आता है, मल्टीपल से आता है। हम सब लोग सिर्फ लास्ट ईयर 10 करोड़ कमाता है, 10 करोड़ 20 करोड़ कमाता है, ऐसा। सो ऑलवेज प्लस, प्रॉफिट इज ऑलवेज प्लस और माइनस, वैल्यू इज मल्टीपल। 5 into 5, एक साल में 5 करोड़ कमाया, नेक्स्ट ईयर 5 करोड़ कमाया। सो आप कैसे देखते हैं? 5 + 5 10, ठीक है। वैल्यू में 5 into 5 25। ये सेम कांस्टेंट आप धीरे 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 कमा कर आए तो भी 5 5 55 ये भी आने का चांसेस है। ये तो मार्केट में आपको वैल्यू देखने के समय, हम 2010 में मैंने लिस्ट किया, उसी समय हमारा मार्केट गैप 100 करोड़ था। हमारा कंपनी फैमिली ओन शेयर 65% था। CAGR ग्रोथ लगभग मार्केट देता है 10%, 2010 से आज तक, लेकिन हमारा कंपनी देता है 22.5%। सो वैल्यू, आज का वैल्यू 1500 करोड़, तो हमारा कंपनी का वैल्यू उसी दिन 65 करोड़ था, आज 1000 करोड़। सो वैल्यू अलग है, प्रॉफिट अलग। सो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा आंखें में आप कैसे देखता है, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा करो। सेम बिजनेस, सेम व्यापार कहाँ करता है उधर ही करो। अब जो टैक्स देता है, जो तकलीफ है, सब वैल्यू में आपको मिलता है। मैंने हमारा कंपनी, हमारा रिश्तेदार, सबके पास बोलता हूँ 100% अकाउंट में करो, 100% सिस्टम में करो, लेकिन ये बहुत तकलीफ है ये सब लोग को समझाने। और इसके अलावा हमको एक बड़ा चेंज हो गया एक समय। क्या है, 1980 से 1990 तक मैंने एक्सपीरियंस किया, बोल रहे हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा मैंने कमाया। लेकिन 1990 से उस समय भी पैसा कमाया, लेकिन मैंने योजना किया क्यों हमारा पास इतना पैसा आता है, बाहर जाता है, तारता नहीं। तो 2000 में मैंने एक पॉलिसी चेंज किया। क्या पॉलिसी चेंज किया? बेसिक पॉलिसी क्यों मैंने चेंज किया? इसके पहले मैंने क्या दिल में योजना करता हूं, इधर भी सब लोग ऐसा ही है, सब जगह पूरा इंडिया में ऐसा है। क्या है, சேர்த்து வைக்கிறதா என் பணம் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்। That is सेविंग्स ही हमारा मनी है करके सर सोच रहे थे पहले, 2000 का पहले। ये 82 90 92 2000 में 20 साल में मैं छोटा उम्र में हमको जो एक्सपीरियंस हो गया, मैंने ये मना किया, சேர்த்து வைக்கிறதா என் பணம் அப்படிங்கிறதுல இருந்து மாறி செலவழிக்கிறதா என் பணம் அப்படின்னு ஒரு फिलॉसफी चेंज कर। मैं जो बोल रहा हूँ, सब लोग को पैसा को सेविंग्स करना है ना, ये तो आपका पैसा दिल में ऐसा सोच रहा है बड़ा मालिक, ऐसा है ना।
2000 से मैंने चेंज किया, जो पैसा हमने सेविंग्स किया ये कोई ना कोई लेता है। इवन हमको बिना हमारा बेटा भी क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है मालूम नहीं। सो हम रखने के समय खर्चा करो, दिल से खर्चा करो, ये भी यूटिलाइज करो। पॉलिसी चेंज किया, जो कमाया आराम से खर्चा करता है। आई एंजॉय द डूइंग एक्सपेंडिचर। ऐसा करने में हमको एक गौशाला भी बनाया, ये बहुत अच्छा गौशाला है, अभी 600 गाय है। सो आई वांट टू स्पेंड मच मनी इन जो भी है, बट इट शुड बी, आपके पास पैसा है तो भी खर्चा करने का, इट शुड बी यूजफुल, यूटिलाइज द मनी। सो 2000 में हमारा अर्निंग्स 50 लाख था। दिस ईयर आई एम साइनिंग 150 करोड़ का खर्चा। तो खर्चा कैसे करता है, कमा कर काम करता है। सो सब लोग क्या करता है, हम सेविंग्स करो, कमा करो, बैंक में डालो, प्रॉपर्टी ले लो। आपके पास बेटा लोग सोमवारी हो लेजी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। हमारा बेटा लोग को हमको लेसी करने का हमको कारण होता है, इसी के कारण पूरा खर्चा करो। ऐसा उल्टा उल्टा मैं ज्यादा काम ऐसा ही करता है। मैं हमारा दिल से बोल रहा हूं, 2 काम आप खुद करना। फर्स्ट, अच्छा बिजनेस करो, पक्का टैक्स टाइम में दे दो। देन आप खुद का शरीर को देखो, ये बस ये दोनों आप दान करना, धर्म करना, मंदिर को देना, ये देना, ये गवर्नमेंट देखता है। हम क्या करना, कैसे करना, सिर्फ अकाउंट में बिजनेस करना, आराम से सो जाना, पैसा को टैक्स ठीक टाइम में ठीक देना, आपका खुद का हेल्थ, माइंड का हेल्थ सब आराम से देखना, ये तो ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। आप मंदिर को 1 करोड़ रुपए दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, जरूरत ही नहीं। मोस्ट ऑफ द व्यापारी लोग क्या करता है, हम 2 में धंधा करता है, ये देखने के लिए, ये बचाने के लिए इधर उधर टेंशन में काम करता है। इसी के कारण उनको खुद का बॉडी माइंड सब खराब हो रहा है। सो ऐसा, so do your work properly, pay the tax properly, do exercise properly, then leave it to the God. इसके अलावा आप ज्यादा पैसा है देने तो भी दे दो, ये अलग है। ठीक है, इसके अलावा आप जो सवाल पूछो, मैं बोल रहा हूं। ये बहुत छोटा उम्र है। 1970 and 80 में मैंने फर्स्ट बॉम्बे आ गया, मैंने कॉलेज से आ गया। उस समय हमारा फादर ने 5,000 रुपया दे दिया। उस समय 5,000 रुपया बहुत बड़ा पैसा है। मैंने पूछा, क्या बाप आप कितना देता है, क्यों देता है? नहीं, आप बम्बई जा रहा है, इंडिया का बहुत बड़ा दुकान भीमजी ज्वेलरी है, आप उधर जाकर देखो, आप
कोई ना कोई चाहिए तभी ले लो। मैंने बॉम्बे आ गया, हमारा दोस्त को बुलाया, लेकिन ये लोग आए नहीं। मैंने 2 दिन उधर जाकर देखा। उसी समय भी मैंने देखा उसको अंदर 2 बैंक है। पैसा लेने के लिए एक दिन पैसा लेने वाला एक दिन पैसा देने वाला ऐसा मैंने देखा। इतना बड़ा ज्वेलर है, इतना बड़ा बिजनेस है, बट जो भी है, मैं उससे बाहर आने के समय मैंने माइंड में फिक्स किया, हम भी ज्वेलर है, एक दिन से एक दिन मैंने टीवी से बड़ा होना चाहिए। उसी दिन मैंने वो लेकर गया। मैंने ऐसा हमको दूसरा संभव भी है। मदुरई में मैंने चौकरा था, खेलता है, एक गली में हमारा घर किराया का घर है, उससे मैंने आ गया। ईस्ट वैली स्ट्रीट नाम में एक रोड है, उधर मैंने एक ऊर्वड़ा जो लास्ट मिनट में लेके जाते हैं, जो अंतिम संस्कार करते समय, तो ऐसे एक सर के थ्रू गुजर रहा था। एक पैरेड चलता है, मैंने उसी तरह का ऐसा पैरेड देखता ही नहीं। मैंने देखा क्या है, चलता है, 2 आदमी चल रहा है, सब लोग यूनिफॉर्म डाल कर गया है, उसको ब्लैक बैच डालता है। अंत में मैंने देखा कृष्णा, टीवीएस कृष्णा, टीवीएस कंपनी मालूम है ना, उनका बेटा टीवीएस कृष्णा को लेकर गया। मैंने देखा क्या है, इतना लोग ऐसा चलता है। उसी समय भी हमको माइंड में आ गया, ऐसा भी हम भी 1000 लोग को काम देना चाहिए। अभी आज का 1750 लोग काम कर, ये जो भी है, मैं छोटा उम्र भी हमको ऐसा दिल आ गया। फिर मैंने धीरे धीरे, बॉम्बे को अक्सर आता है ना, जाता है ना, ये देखा कैसे वैल्यू क्या है, ये सब कंपनी का वैल्यू बोल रहा है, ये कितना करोड़ है, ये कितना करोड़ है, लेकिन हमारा दुकानदार को कोई भी वैल्यू नहीं बोलता है। क्यों है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट? देन आई केम टू नो, बॉम्बे कभी कभी आता है, मैंने मर्चेंट बैंकर के पास जाता है, बैंकर के पास जाता है, ऑडिटर के पास जाता है। मैं ज्यादा पढ़ता नहीं, बट बड़े वाला लोगों को बाजू में रखता है। दैट इज माय ट्रिक, कुछ नहीं। बट जो लोग बोलता है ये फुल आई नॉट एक्सेप्टेड। हमारा माइंड को जो मांगता है यही करता है, क्योंकि कंसल्टेंट वाला जो भी है, जो भी बोल सकता है। आपका ताकत क्या है, आप कैसे काम कर सकता है, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपको सिनेरियो क्या है, ये सब आप देखना जरूरी है। कंसल्टेंट के पास कंसल्ट करना, बट डिसीजन आप खुद लेना। कब करना, व्हेन, ये भी आगे भी करना मत। अभी लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बात करते हैं ना, आई फील इट इज ahead of the market. I feel थोड़ा टाइम धीरे धीरे आने के बाद कस्टमर को भी थोड़ा कुछ कर आए तो भी कर सकता है, लेकिन मार्केट के आगे भी करने भी तकलीफ है। रिटेलर को बहुत डिले कर करने से भी तकलीफ है। सो राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्लेस में करना। एंड ऑल्सो
I feel a lot of experience. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. Change will never change. चेंज करना, आपको सिनेरियो, आपको सिचुएशन, आपको हम 7980 से आ गया, उस समय लाइसेंस राज था, 90 से 2000 तक लिबरलाइजेशन, 2000 से ग्लोबलाइजेशन, 2007 से वैट आ रहा है, 2017 से जीएसटी आ रहा है, 1997 से हमने 916 को इंट्रोड्यूस किया, 2000 में हॉलमार्क आ रहा है। सो जो आने वाला है मार्केट में, हम आज क्या कर रहे हैं, सो आने वाला दिन को क्या करना, कैसे हम ये सिनेरियो को एक्सेप्ट कर चेंज करना, दैट इज द मेन पॉइंट है। सब लोग थोड़ा काम करता है, थोड़ा जीत हो गया, आराम से बैठता है, நான் எப்படி ஜெயிச்சனோ அதான் சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அது இல்ல, காலத்து அந்த மாதிரி மாறணும்। मैंने कैसे विन किया था वही सक्सेस है करके आजकल के पीपल सोच रहे हैं, बट वो सक्सेस नहीं है। टाइम के बारे में चेंज करना जरूरी, सिनेरियो आने वाला टाइम क्या है, कैसे करना, ऐसे करना। कोई सवाल आप पूछो बहन। हाँ, मैं जो बोल रहा है अभी तक आपको पूरा समझा है, क्योंकि मैं तमिल में बात करने तो भी इतना अच्छा है, लेकिन अभी नहीं, आप दिल से बात किया तो 100% समझ गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। So, sir, you have been in business from 7980 to आज भी, I'm assuming आज भी आप active 42 years। 42 years। तो आपका बेटा का बात किया तो बेटा भी ज्वाइन किया होगा, हाँ किसी और ने वो ग्रैंडसन का भी बात किया होगा, तो फैमिली बिजनेस हाँ जी, on one side and professional business on हाँ the जी, other side, हाँ how do you manage the balance? हाँ, ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है। हमारा ज्वेलर्स का फैमिली में अभी तो बहुत फैमिली में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इधर साइड कैसे हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारा साइड ज्यादा ज्वेलर्स का बेटा काम के लिए गया, www.टेक्नोलॉजी काम को गया, ज्यादा लोग, और इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जो भी है सब लोग बोल रहा है मैंने इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, क्यों मालूम नहीं। ये फर्स्ट ये सवाल को मैं जवाब पूछ रहा हूं। हम 3 भाई है, 5 बेटा है। हमको एक आदत है, क्या है, रोज रात को 9:30 बजे के बाद आराम से खाने के बाद 1.5 घंटा बेटा बेटी फैमिली सब लोग बैठकर आज क्या हुआ इसके बारे में बात करता है, हंस करता है, கேலி பண்ணும், கேலி பண்றது இந்தியில मतलब ताड़ना, ऐसा फैमिली के अंदर अंदर ताड़ते हुए ऐसे बातचीत करते नहीं, हुए। कस्टमर को भी केली பண்ணுவோம், व्यापारी सबको भी बात करता है, एम्प्लॉय के साथ जो भी मतलब। हाँ, इसके समय क्या हुआ, हम क्या करता है, कैसे करता है, हम कैसे कमा करता है, हाउ वी एंजॉय द बिजनेस, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट इज द ग्रोथ, व्हाट इज द फ्यूचर, सब हम बेटा के साथ बैठ कर बात करता है रोज। ये छोटा है बड़ा है ये अलग बात है, सब बात करता है, हंस करता है, रात में एंजॉय कर सो जाता है। इसको बड़ा लोग आकर बोलता है, इसका नाम तो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट के बारे में आप बात किया, ये तो अलग है, लेकिन हम इसको कुछ नहीं मालूम है।
बट धीरे धीरे मैंने योजन किया, मैंने came to know that that is the strength. बच्चों लोग हमारा व्यापार में, खुद का व्यापार में इंटरेस्ट दिखाने के लिए ये लोग पापा हम क्या करना जरूरी है, हम ये व्यापार में कैसे अंदर क्या एरिया में आना जरूरी है, ये लोग एंजॉय कर कर पूछता है। मैंने उसी समय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से शुरू किया। मिस्टर शिवरामन, अभी सोम सर है ना, इसके पहले मिस्टर शिवरामन था, उन्होंने मद्रास में दारामणि पॉलिटेक्निक में गोल्ड टेक्नोलॉजी शुरू किया। हमारा बड़ा भाई का बड़ा बेटा राजेश है, उनको फर्स्ट उनको ये देखा, सेकंड बेटा को डायमंड डिवीजन को देखा बॉम्बे में, थर्ड बेटा हमारा बेटा उनको अकाउंट्स लंदन में एमएस, फोर्थ बेटा को एमबीए फिनेंस एंड, सो हमारा बेटा सब लोग को मैंने ये लाइन में हमको आदमी चाहिए, ये लाइन में हमको आदमी चाहिए, ये पढ़ो ऐसा पूरा देकर ये लोग अभी बहुत होल हार्टली खुशी से काम करता है, हमके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। दिस इज आज क्या तारीख है, मार्च 24 रखो, 21 को हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान का पूरा रिव्यू मीटिंग हो गया। नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को मैंने पुदु कणक போடுவோம், फर्स्ट अप्रैल 1 में न्यू कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल। पहले क्या नाम के बाद भगवान को मंदिर गया, ये कागज लेकर नोट, अभी नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 तारीख से कितना करना, कहाँ करना, कैसे करना, खर्चा क्या, एडवर्टाइजमेंट क्या, पूरा डिटेल्ड प्लान प्रिपेयर एग्जीक्यूट, प्लान प्रिपेयर एग्जीक्यूट, सब प्लान हमारा बेटा 5 लोग पूरा गया, हमको अप्रूवल ले गया। तो अप्रैल 1 से क्या करना, कैसे करना, एकदम पूरा मालूम है। ये तो हम நம்மள்ட்ட தான் இருக்கு, நம்ம வியாபாரத்துல நம்ம பிள்ளைகளை கொண்டு வர்றது நம்மள்ட்ட தான்। हमारे पास ही है, हमारे बच्चों को बिजनेस में खींचने का तरीका या टेक्निक जो भी है, हम हमारे पास ही। Most of the jewelers in our side failing in this matter. ये here कैसे है हमको मालूम नहीं। इधर मैंने एग्जीबिशन में देखा, आपको यंगर जनरेशन ज्यादा लोग आता है, इट इज गुड, करेक्ट या नहीं? आता है दिल से, लेकिन हमारा साइड ऐसा नहीं है। कोई सवाल है? हाँ शंकर भाई बोल। हाँ वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत मतलब प्राइस में और सारे चीजों में। इस पार्ट में आप तमिलनाडु जैसा वॉल्यूम तो है नहीं, तो वो कंपटीशन में आप लोग अलग अलग तरीके से सरवाइव करने का कैसे, मतलब आप जैसे बोले वैल्यू, कैसे थॉट प्रोसेस चलता है? भैया कंपटीशन तो है, कंपटीशन है, इसी के कारण मैंने इतना ग्रो हो गया। लेकिन व्यापारी लोग देखना कंपटीशन कहाँ है, कंपटीशन कैसे है, you see within you, you are काम करता है एफर्ट में। नो, we should
काम एफिशिएंसी में काम करना, एफर्ट अलग है, एफिशिएंसी अलग है। कितना पैसा कमाता है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, ये कैसे हमारा पास रखना, ये if you are doing work with efficiency, it will better. अभी हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, पैट 2.65% आता है, सो ओके। हाँ, पूछो। सर लास्ट क्वेश्चन, आपने बताया आपके 1500 वर्कर्स हैं। 1500 750 वर्कर्स, सॉरी मैंने शायद गलत सुना, 750 वर्कर्स आपने बोला ना? 1750 now। 1750, ओके। सर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी कल्चर और कंपनी वैल्यूज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे फैमिली का मेरे को समझ में आया, आपका फैमिली आप हर रोज बैठ के बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो एक वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है। पर 1750 वर्कर्स, एम्प्लॉइज, कलीग्स के साथ नहीं, ये वैल्यू कैसे आप ट्रांसफर करते हैं? ये आपका क्या वेरी सिंपल बाय, ज्यादा काम करता नहीं, वी नेवर गिव एम्प्लॉयमेंट, वी गिव एम्पावरमेंट। ये दुकान उनका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस ये डालना जरूरी है, हम डालना मत, कैसे करना वैसे करना ये बोलो। भैया ट्रेन है ना, ट्रेन कैसे चलता है? पुल मेथड, पुश मेथड। पुल, आप सबको पीछे पुल करता है भाई, आप आराम से बैठो, ये लोग आपको पुश करना जरूरी है। यू सब डिसीजन आप लेना मत, एक ज्यादा है, कम है, प्रॉफिट है, लॉस है। भैया इफ यू वांट टू बिकम बिग, दैट इज द सवाल है, सबको मेक अदर्स बिग। आपके पास काम करने वालों को अच्छा दे दो, अच्छा रखो, मार्केट से ज्यादा दे दो, उनको पावर दे दो। अभी हमने 3 लोग है, बेटा लोग 5 लोग है, सो दिमाग ब्रेन सब 8 है, लेकिन 1070 का एम्प्लॉय है, इसमें 80-20 पॉलिसी है। 20% लोग, आपके पास 100 लोग काम करता है, 20% लोग 80% का काम पूरा करता है, 80% लोग 20% का काम करता है। सो यू शुड आइडेंटिफाई द 20% लोग का। इफ यू आर आइडेंटिफाइंग दिस 20%, देन गो अहेड। आपको सिर्फ ऑडिटर सब लोग बैठकर स्ट्रैटेजी डालना, दिस इज आई नीड, वी शुड बी देयर, नेक्स्ट ईयर में कहाँ रखना, नेक्स्ट 3 years में कहाँ रखना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म का प्लान डालो, उनके पास दे दो, ये कैसा बाहर से आप लेकर आना, यही है आपका काम है। रोज का काम करना आपका काम नहीं है। हम सब लोग क्या काम कर रहा है? ओनर काम करता है नहीं, गला में बैठकर कैशियर का काम करता है। इश्यू फॉर मैन्युफैक्चरिंग कारीगर के देने के समय ये तो मैनेजर काम करने वाला है। आप दिल से बोलो, रोज रोज आप ओनर जैसे काम करता है, लेकिन ओनर जैसा कमा लेना जरूरी है। काम क्या करता है? डेलीगेट द वर्क। You should think strategy, finance, implementation policy. इसमें ये तो ऐसा वैसा होता है, बट एडजस्ट करो। मैं जो बोल रहा है समझा था, ठीक है? धन्यवाद। Lovely. Do we have any more questions, ladies and gentlemen, from any corner? Yes.
That is the last question we'll take. Can I have a microphone passed, please? Yes, we're just passing on the microphone to you. And that will be the last question for the session. Sir, phenomenal journey, and I think truly inspirational words. I have a very big question which comes from the area where I come from, and that is about innovation. In a 4-decade-long journey, there must have been several. 4-decade-long journey of yours. Yes. There must have been many innovations that you brought in and Yeah. adopted into your Yeah. business. First accepting. My question was exactly that. How do you identify these innovations and how do you accept them across the organization? How do you identify and then roll it out across the organization? हम घूमता है ना, हम इधर उधर सब जगह घूमता है भाई। साल में 50,000 किलोमीटर बाय रोड, 1 लाख किलोमीटर बाय एयर मैं इधर उधर घूमता है। Then I capture the people's mind. I mostly I read the minds of the people. Then I came to know next year ऐसा होने वाला है, next year ऐसा होने वाला है। ज्यादा टाइम आप दिल से बात करो, माइंड से बात करना। आपको एक्सपीरियंस को जो चल रहा है ये आप दिल से काम करो। And customers the basis. Lot of people कहाँ से व्यापार को शुरू करता है? बाहर से शुरू होता है। नहीं, अपना हमारा से शुरू होना चाहिए। अभी एक दुकान को जा रहा है, अब कपड़ा लेता है, जो भी कार लेता है, जो भी है, सोना, डायमंड, चांदी, इसका आप व्यापार है। दूसरा लाखों प्रोडक्ट को आपको कस्टमर है। सो ये कैसे उधर लेता है? सो ये स्टडी करो, ये सब आपका कस्टमर को आपको दे दो। So experience from the outside and do that in your side. इसका थोड़ा खर्चा आता है, प्रॉफिट कम होता है, परवाह नहीं, दे दो। Automatically your growth will come. That is I am doing. Okay. Thank you so much, sir. That was such a wonderful session. So much of inspiration, so much of inquisition, and all satiated. सर हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और इस मौके पे हम आपको फेलिसिटेट भी करना चाहेंगे। Can I please welcome CEO India World Mr. Somsundaram PR, Regional CEO, India World Gold Council. Can we please have him on stage? Also, please welcome Mr. Vinod Bamalwa, Chairman, ICC Expert Committee, Jewelry and Lifestyle. Also, can we please have Mr. Shubhankar Sen, MD and CEO, Senco Gold, Co-Chairman, ICC National Expert Committee. I will request all three of you to kindly felicitate Mr. B.A. Ramesh. Can I once again have a round of applause for this enigmatic man here, ladies and gentlemen? Thank you so much, all of you. What a lovely session was this.
And now, ladies and gentlemen, it's time that we move on to our next session, which calls itself Technology for Growth and E-commerce to make commerce better for everyone. Well, this is a topic we all have been waiting to hear about. And I have my amazing speakers and panelists right here. I'd like to call upon Mr. Nishith Nair, Director, Chandani Pearls Private Limited. Please welcome him with a round of applause, everybody, our first panelist for this session. Please welcome Mr. Tejas Mehta, co-founder OSPAR. This is a special session on Also, please welcome Mr. Pankaj Parekh, Regional Chairman, East, GJEPC. We have with us, ladies and gentlemen, Mr. Nitin Khandelwal, Deputy Director, GJEPC. And also, please welcome Mr. Rajiv Garg, CEO, Gem and Jewellery Skill Council of India. This wonderful session, ladies and gentlemen, shall be moderated by Mr. Shomik Roy Chaudhary, Director, MP Jewellers Private Limited. And once again, let me tell you about the session, Technology for Growth and E-commerce to make commerce better for everyone. And now it's time for me to hand it all over to the moderator, Mr. Shomik Roy Chaudhary. Welcome, sir. Okay, thank you. Hi, good afternoon. Normally, I think after lunch, people feel a little sleepy, but I think with Mr. Ramesh's presentation, I think everybody is awakened to their new heights. So thank you very much for your session. And I would like to say that, I would like to add on to whatever you said, that I had heard long time back that simplicity is the ultimate sophistication. And I think you just portrayed that for us today. So, my Hindi is a bit bad. On the first session, we had learned about the future, or we had shared knowledge about the future of the gold industry. On the second session, I think we had shared the differences or the nuances between the lab-grown diamonds and the natural diamonds. So this is the third session. We had tried to keep as diverse topics as possible to share knowledge. The third session is primarily on e-commerce, m-commerce, and how technology is playing a role to boost this segment. So this is not a new segment. So if we see today, the latest figures are 750, just to set the context, for this discussion, around 750 million people are using smartphones today in India, out of which 200 million people are active users or active shoppers, which means 200 million people are actively buying online. So doesn't mean jewelry, but they are into the purchasing habit of buying online. So obviously this pandemic had turbocharged this whole industry, but now we know that it is here to stay. It is not a past, but it is the present and the future. So in this panel discussion, we are trying to find out
what it is all about, how there are different people in the value system, the entire value system trying to incorporate technology to enhance better consumer use or better use of at every value chain. So my first question is to Mr. Tejas. Tejas, if you can please give us a little bit of background of what you did before and what you do now, and he's representing OSPER. He's the co-founder of OSPER. And if you could just tell us about what OSPER is all about. So I think the first thing first, you touched upon pandemic and how it fueled growth because of technology, and there was rise of D2C brands, direct to consumer, that is. तो ऐसी बहुत सारी ब्रांड उस समय पे टेक्नोलॉजी के भरोसे बहुत ही ज्यादा आगे आई है, बट हमारा ऑस्पर पे ये मानना है कि ये एक कैटेगरी है जो हमारे लाइफ टाइम में, मेरी लाइफ टाइम में, मैं 38 हूँ और मुझे लगता है मेरी लाइफ टाइम में ऑनलाइन नहीं जाएगी. Consumers like buying jewelry from the store. Women in particular love visiting the stores, and therefore technology will always be just an enabler, but nothing more. I don't think so. Good jewelry of the fine value will be bought online, and it will continue to be bought offline. ऑस्पर पे हम क्या कर रहे हैं? ऑस्पर यानी हमने ऑस्पिशियस और प्रॉस्पर यानी शुभ लाभ जो हमारे देश में गोल्ड माना जाता है, उसी के अराउंड एक हमने ब्रांड बनाई है osper.gold. हमारे ब्रांड का एक ही मिशन है कि हम पूरी की पूरी कैटेगरी, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए जो भी जरूरत पड़े कस्टमर प्रेपरेशन के लिए वो हम करें. टू translate that into an actionable, we help women and their respective families save up for the jewelry they want to buy and then put them across to the jeweler community that we are creating on our platform. We are becoming a bridge through an app, through financial products between the consumer, which is the demand, and the supply, which is the jeweler. Essentially, we want to handhold a consumer from the point of जिस दिन मैंने सोचा कि मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, शायद उससे भी पहले, to create new desire and then eventually lead them all the way to the point of consumption जो हमने already establish किया है, to go at the store and buy the jewelry. As soon as they buy the jewelry, we try and bring them back into the fold and help them start saving for the next purchase. And that is the infinite loop we are hoping to create in process, bring in new customers, bring in new money into ever growing, ever young jewelry community. That's essentially what OSPER is trying to do. ये बहुत कुछ मैंने बोला, but अगर simple भाषा में बता दूं, तो हम एक wallet बना रहे हैं. Think Paytm, all of us know Paytm, first ever dedicated wallet only for jewelry purchase. You can't use this money for anything else. And then creating on the other end, a Zomato-like aggregated network of jewelers. That's essentially what we are doing at OSPER. So अगर हमको simple भाषा में समझना है, तो you are connecting the unconnected in the business. So it is like as a आम आदमी हमको अगर ज्वेलरी खरीदना है वो ऑस्पर के थ्रू कैसे कर सकते, वो एक बार सिंपल लैंग्वेज में. हम ज्वेलरी बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ पैसे इकट्ठे करवाते हैं. So today, lot of retailers I see here, the first thing that happens in a retail store is mobile निकाला जाता है, ये वाली डिजाइन चाहिए, ये वाला मैंने देखा था. Kiara Advani just got married, and believe you me, I was at a store in Ahmedabad 3 days after the wedding, and I saw a customer pulling that image out and saying, "मुझे green emerald वाला piece चाहिए." That is the power of technology today. Knowledge and information will travel at a very rapid speed. Desire will be created there. हम कस्टमर को यहीं से शुरू करते हैं, पैसा उस गोल, उस एम्बिशन की तरफ सेव करवाते हैं, एंड जैसे ही वो सेविंग्स हो जाए, हमारे कार्ड के थ्रू हम उनको वहाँ पे ज्वेलर के यहाँ पे स्पेंड कराते हैं. नॉर्मल वीजा पावर्ड कार्ड है, सारा का सारा अप्रूव्ड बाय आरबीआई एंड सेबी है. तो आपके नॉर्मल पॉस मशीन पे जो आपके यहाँ पे टर्मिनल ऑलरेडी लगा हुआ है, उस पे ये कार्ड स्वाइप हो जाएगा एंड यू कैन फुलफिल द ट्रांजैक्शन.
So this was one part of the value chain. यहाँ पे customer ये wallet use करके कोई भी jeweler से कुछ खरीद सकते using these cards. Now let us go to the another spectrum. So I will come to Mr. Nitin Khandelwal and Mr. Pankaj Parekh. And हमने सुना है कि GJPC is working effortless, I mean with a lot of effort in e-commerce section. And it is often said nowadays that if your business is not on the internet, your business will be soon be out of business. So ये सच है नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में अगर कुछ बताएं. Thank you very much. See, GJEPC में उसके सिवाय पहले मैं ये कहूँ कि टेक्नोलॉजी इन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में कई वर्टिकल्स हैं. एक वर्टिकल जिसके बारे में तेजाज भाई ने कहा, और भी वर्टिकल है how to employ technology in manufacturing jewelry, and और एक vertical है कि how to execute sales through net sale. So amongst the two of us, Nitin ji, he will speak on the e-commerce, which we have launched throughout the country, and we have our partners, and he'll give the details. So far as one more vertical is concerned, how to be more efficient in manufacturing jewelry. ये vertical के अंदर में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल काफी कुछ काम करती है. मिसाल के तौर से डिजाइनिंग सिखाना, देन मैन्युफैक्चरिंग सिखाना. मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा प्रिमिटिव वे से जो होता था, जिसके अंदर में 10-12% लॉस प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में आता था, उसको हाउ टू मिनिमाइज, हाउ टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस the losses and to reduce, increase the efficiency and to reduce the weight, and still the appearance should be big. And internationally जो हो रहा है, मिसाल के तौर से कास्टिंग हो या कैड एंड कैम हो या लेजर का यूज हो, इसके लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं. एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कह के हम थ्रू आउट द कंट्री, एक आर्टिजन है, उसकी औकात नहीं है कि वो एक लेजर मशीन खरीद सके या सोइंग मशीन खरीद सके, वेरियस अदर मशीन. तो हमने हिंदुस्तान में कई कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्रिएट किए हैं कि जहाँ एन आर्टिजन गोज, द सिंपल आंसर इज कि किसी जमाने में फैक्स जेरोक्स मशीन इतना महंगा होता था और उसका काम पड़े आदमी खरीद नहीं सके, तो वो माल अपना एक डॉक्यूमेंट लेके गया जेरोक्स की दुकान में, वहां उसको 1 रुपया दिया, कॉपी लेके चलाया. ही हैज नॉट इन्वेस्टेड 3 लाख रुपया, उसको साल में 10 कॉपी करनी है, 10 रुपया लगाया और ही इज गॉट हिज जॉब डन. सिमिलरली हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर कर रहे हैं और इन सेंटरों में कारीगर जाएं, उनका रेगुलर काम वो कर रहे हैं. कोई इक्का दुक्का ऐसा काम है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर से उसके जॉब वर्कर के को दुकानदार ने कहा कि मेरा नाम लिख के देना. ओके, ही गोज टू कॉमन फैसिलिटी सेंटर और उसमें लेजर से उसका नाम लिखवा के काम जमा दे दिया दुकानदार को. ऐसी वर्टिकल को हम ध्यान देते हैं. एंड इसके अंदर में भी और वर्टिकल्स है. फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट बिकॉज वी आर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हम एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं. तो इसके अंदर में एक आदमी है, उसको छोटा छोटा एक्सपोर्ट करना है, तो पोस्टल एक्सपोर्ट, कोरियर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था. विद इन लास्ट 1 year or so, हमने इंडिया की about 20 post offices have been recognized and equipped to perform export of gems and jewelry product. Then हमने एक्सपोर्ट करने के अंदर में कुरियर एक्सपोर्ट शुरू करवा दिया. अब जो रिटेलर है उसको ड्यूटी फ्री गोल्ड नहीं मिलता है, तो
he can take duty drawback. Duty drawback करने में, of course, he does not get exactly ad valorem duty that he would have paid, but he gets about 70 or little more of the percentage that he has suffered. And now we are trying the ad valorem duty वापस मिले. These are some of the technologies that we are trying to do. रहा सवाल about e-commerce, Nikhil Khandelwalji will explain in detail. थैंक यू सर. जहाँ तक आपने मेरे से सवाल पूछा कि ई कॉमर्स, तो मैं भी पहले यही सोचता था कि ज्वेलरी ई कॉमर्स पे कैसे बिकेगी. तो जब ये सवाल आया कि ज्वेलरी ई कॉमर्स पे कैसे बिकेगी, उसके बाद काफी लोगों से मिलना हुआ कि एक चेक करना चालू किया कि अच्छा ज्वेलरी ई कॉमर्स पे बिक सकती है या नहीं बिक सकती. ये बात हो गई करीब 4-5 साल पुरानी. और जब ये देखने की कोशिश की, उस समय कई लोग मुझे मिले जिन्होंने अपनी ई कॉमर्स जर्नी चालू की. हालांकि कुछ परेशानियों से जूझ रहे थे, किस तरह से शिपिंग करेंगे, किस तरह से कंप्लायंसेस करेंगे. लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि ज्वेलरी ई कॉमर्स पे बिकेगी या नहीं बिकेगी. तो अभी रिसेंटली भी मेरे को एक व्यक्ति मिले जो मेरे को रिसेंट उदाहरण सामने आ रहा है कि अगस्त 2021 में उन्होंने अपना ज्वेलरी बिजनेस चालू किया. सिर्फ 28 प्रोडक्ट हैं उनके पास ई कॉमर्स के अंदर, एंड उनका जो सेल है वो महीने का करीब 40 से 50 हजार डॉलर की सेल है एवरी मंथ. तो आई वॉज शॉक्ड. मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. सो उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई, उसमें से एक इंस्टाग्राम भी एक है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट प्लेस से या वेबसाइट से बिक सकता है, इंस्टाग्राम से भी लोग बेच रहे हैं. और भी बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिनके थ्रू ज्वेलरी बिक रही है और ई कॉमर्स हो रहा है. बहुत रिसेंटली लास्ट वैलेंटाइन डे पे मैंने मेरी वाइफ के लिए भी एक रिंग खरीदी, तो ई कॉमर्स से ही खरीदी. तो दैट हैज बीन डिलीवर्ड एंड एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. सो ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू ज्वेलरी बिक सकती है. जीजेपीसी ने जब ये सोचा और मैंने जब इस पे काम करना चालू किया ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के, तो कई सारी चीजें समझ में आई. सबसे पहली चीज तो ये समझ में आई कि बेचने में कोई डिफिकल्टी नहीं है. बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं, लोगों ने अपनी वेबसाइट्स भी बना रखी है. हमारा ट्रेड जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भी बेच रहा है आज की डेट में, B2B भी कर रहे हैं. बट ग्रेजुअली मार्केट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स B2C. अब ये B2C जो क्रॉस बॉर्डर की जब हम बात करते हैं, बीइंग एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो हम बात ही क्रॉस बॉर्डर की कर रहे हैं. तो क्रॉस बॉर्डर की जब बात करते हैं ज्वेलरी के अंदर, तो कई सारे इश्यूज थे. किस तरह से शिपिंग होगी, उसके बाद के कई सारे कंप्लायंसेस कैसे होंगे, पैसा कैसे आएगा, वो पैसा आने के बाद बैंक कैसे सेटल करेगा, कस्टम में किस तरीके से होगा, क्योंकि B2B का एक पार्सल होता है, उसको भेजने के लिए 10,000, 15,000, 50,000 तक हमारी कॉस्टिंग आ जाती है शिपिंग की. लेकिन एक छोटा सा पार्सल जिसकी वैल्यू शायद $30-40 से लेके और 200, 500, 1000 डॉलर के बीच में होगी, क्योंकि छोटे प्राइस पॉइंट के आइटम ई कॉमर्स पे बिकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है बिकने. तो इसके अलावा कुछ कंट्रीज में ऐसी कंडीशंस भी हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं जिससे कि ई कॉमर्स को काफी बेनिफिट हो सकता है, और कई और कंट्रीज ने वो बेनिफिट लिया. जैसे मैं अगर आपको उदाहरण के लिए बोलूं तो यूएस के अंदर एक $800 का डी मिनिमस है. $800 का डी मिनिमस का मतलब ये कि अगर $800 तक का कोई भी रिटेल शिपमेंट अगर आपका जाता है, उसके ऊपर ना कोई कस्टम्स क्लियरेंस है, ना कोई कस्टम्स ड्यूटी लेविएबल है, एंड इट गोज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. सो ये जो पॉलिसी है इसका चाइना ने बहुत अच्छा फायदा लिया है. चाइना पोस्ट का एक यूएस पोस्ट के साथ में एक टाई अप हुआ, और उसके अंदर बहुत नॉमिनल खर्चे के अंदर $3-4, $5 के खर्चे के अंदर चाइना से ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होके यूएस में कंज्यूमर के डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाती है. तो ये चैलेंज था जब हमने 4 साल पहले जीजेपीसी ने और हमने कोशिश की कि भाई ये चैलेंज इंडिया से कैसे कम किया जाए. जब हमने देखा तो ये $60-70 से $80-100 से ऊपर की कॉस्टिंग हमारे यहाँ सिर्फ शिपिंग की लग रही थी. अगले $30-40 बैंक ले जाता था. उसके अलावा 15-20% मार्केट प्लेस और जो आपका पेमेंट गेटवेज थे, चाहे पेपाल हो, पेयोनियर हो, कोई भी हो, मैं नाम ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो वो सब लेके चले जाते थे. तो फाइनली वायबिलिटी क्या है ई कॉमर्स की? हालांकि ये बात पक्की है कि ई कॉमर्स के अंदर मार्जिन बहुत है. रीजन बीइंग कि आप सीधे कंज्यूमर को टच कर रहे हैं. आपने बीच के जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो होलसेलर्स हो, रिटेलर्स हो, यू हैव रिमूव्ड एवरीबॉडी. और इंडिया जो आज तक
ब्रांड्स को बेचता था। हम बेचते हैं ब्रांड को, वो टिफनी के शोरूम में जाता है, जो हमने 3000 का बेचा प्रोडक्ट वो वहां पे 15000 का बिकता है। तो हमने अपनी ब्रांड्स कभी बनाई नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो ब्रांड्स किस तरह से डेवलप करी जाएं और वो ब्रांड्स ऐसी हों जो कि लोग जानते हों, लोग उसको बाय करें और वो प्राइस पॉइंट्स दें, क्योंकि वहाँ प्राइस टैग से बिकता है। वहाँ ऐसे नहीं बिकता कि जैसा हम लोग जनरली डोमेस्टिक में हम लोग बेचते आए हैं कि इतना ग्राम गोल्ड है, इतना डायमंड है, इसका वेट ये है, इसकी रेट ये है, इतना लेबर है, इतना हॉलमार्किंग का है और इतना जीएसटी है। तो कभी ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक प्राइस टैग होता है एंड प्राइस टैग पे ज्वेलरी बिकती है। तो ये जब चीजें देखी मैंने, तो मेरे को समझ में आया कि जो ये परेशानियां हैं इनको सुलझाने के लिए कई सारी चीजें करनी होगी। कोरियर मोड और पोस्ट, ये दो सबसे आसान रूट दिखे। हम लोग हमेशा से एक डिलेमा में थे कि जेम्स एंड ज्वेलरी कोरियर मोड में नहीं जा सकता। पूरा ट्रेड एक डिलेमा में था। 1998 में कोरियर रेगुलेशंस आए थे और उस कोरियर रेगुलेशंस में सिर्फ इंपोर्ट को रोका गया था कि जेम्स एंड ज्वेलरी का इंपोर्ट नहीं हो सकता कोरियर के अंदर। तो आज की डेट में हम लोग जितने भी लोग B2B शिपमेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो दुबई हो चाहे यूएस हो, जो हमारे B2B शिपमेंट्स हैं वो सब जाते हैं कार्गो मोड में, यानी कि आइस गेट पे क्लियर होके शिपिंग बिल फाइल होता है आइस गेट पे और उसके थ्रू जाते हैं। लेकिन कोरियर मोड एक आसान तरीका हो सकता था जिसमें कि हैसल्स कम है और जो सबसे इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट हैं जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी के ई कॉमर्स के लिए चाहिए थे, वो एस्पेक्ट थे हमारे कि एक तो स्पीड ऑफ डिलीवरी, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट कस्टमर के एंड पे डिलीवर हो, क्योंकि वो नहीं रोक सकता वहां पे कि आप 25 दिन में या 20 दिन में कोई प्रोडक्ट को भेजें। और दूसरा जो चीज थी वो हमें कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए था, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पॉइंट्स बहुत कम थे। तो ये दोनों चीजों के लिए हमने जब कोशिश चालू की तो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन 2020 में आया, जो कि करीब 22 साल बाद था, जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया कि जेम्स एंड ज्वेलरी भी कोरियर के अंदर जा सकती है। तो कोरियर के अंदर अगर हम बोलें तो कोरियर के अंदर फायदा स्पीड कैसे मिलती, स्पीड ऐसे मिलती कि कोरियर के अंदर अगर आप आज की डेट का डेटा देखेंगे तो जो कोरियर मोड क्लियरेंसेज है, जो कि एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम पे होता है, उसके अंदर कोरियर मोड क्लियरेंसेज में जो ड्वेल टाइम जिसे अपन कहते हैं कि एक एक्सपोर्ट वहां पहुंचने के बाद कितनी देर में क्लियर हुआ, वो ड्वेल टाइम जो है वो करीब करीब आप 5 घंटे का ड्वेल टाइम है एक्सपोर्ट के केस में। यानी एक गुड्स जो एक कस्टम पे पहुंचा, विदिन 5 आवर्स इट मूव्स आउट फ्रॉम दैट कस्टम्स एरिया, जो कि B2B के अंदर शायद 3x 4x 5x होगा। तो कोरियर एक सॉल्यूशन था जो हमको लगा। क्लैरिफिकेशन तो आ गया लेकिन कोरियर नहीं जा पा रहा था। हमने फिर कोशिश करी तो जाना चालू हुआ। अब जो है हमने कुछ टाइप्स किए हैं लॉजिस्टिक्स कंपनी से, कुछ और टाइप्स की बात चल रही है। तो 300 रुपए में 50 ग्राम का पार्सल यूएस तक डोर टू डोर कस्टम क्लियरेंस होकर डिलीवर हो जाएगा। सुन के मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन यस दिस हैज बीन अ रियलिटी। Yes, so this is a reality now, and we found one company who is doing it, and we have done some trials. Those trials are very successful. So there are certain hiccups in अभी शुरुआती दौर में, but still they are very good. Gold jewelry भी उन्होंने भी चालू किया, तो 2200 रुपए में gold jewelry they are taking door to door up to 5 lakhs value, which is allowed in a courier, and US में 2200 रुपए में डोर टू डोर सिक्योर्ड सर्विस कस्टम क्लियरेंस होके, so they are doing it. So we are also finding some certain other companies so that कि एक ही पे डिपेंडेंस ना हो जाए. Other than that, पोस्ट को हमने बोला कि भाई आप एक कुछ प्रोसेस करिए जिससे कि कोई प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट में आसानी से लोग भेज सकें। आज की डेट में एक फॉरेन पोस्ट ऑफिस से ही आप गुड्स भेज सकते हैं। तो हमने कहा कि आप फॉरेन पोस्ट ऑफिस के अलावा भी कुछ डाकघर निर्यात केंद्र और उन लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए। और यूएस हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, 70-75% हमारी ज्वेलरी जो है वो यूएस के अंदर जाती है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप यूएस के लिए कुछ करें, देन ग्रेजुअली आप अदर कंट्रीज में करें। तो उन्होंने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया आज से करीब लास्ट जनवरी 22 के अंदर, 100 ग्राम का पार्सल 550 रुपए में यूएस। So again, or which is completely trackable. Tracking most important aspect है e-commerce के लिए. So tracking उन्होंने दी हमें उसके अंदर। तो
ये जो नॉर्मल उनका स्पीड पोस्ट था जो कि 1100 से 1800 के बीच की कॉस्ट थी, उससे काफी सस्ता था, तो 550 रुपए में यूएस जा रहा था। और उसी के अंदर इससे पहले सिर्फ 15 कंट्रीज थे, जो कि 250 रुपए में आप ऑस्ट्रेलिया या थाईलैंड पहुंचा सकते हैं अपने गुड्स को, 100 ग्राम के पार्सल को थ्रू पोस्ट। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली होती गई। उन्होंने भी अपना एक पोर्टल लॉन्च किया। अभी रिसेंटली उन्होंने करीब 120-130 डाकघर को इंडिया लेवल पे उन्होंने अलाउ किया है हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करने के लिए, कि आप पार्सल किसी एक छोटे डाकघर में दे सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और वो जो है वो फाइनली आपका एक उससे लिंक्ड जो आपका फॉरेन पोस्ट ऑफिस होगा, वहां पे कस्टम क्लियर होगा, और कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वो गुड्स आपका वहां निकल जाएगा और फाइनली डिलीवरी के लिए जाएगा। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ नेक्स्ट पार्ट जो आया कि ऑर्डर आ गया, पैसा आ गया, फाइनली शिपिंग भी कर दी, क्योंकि ई कॉमर्स में एक सबसे एडवांटेज ये है कि पैसा पहले आता है, तो कोई उधार का झंझट नहीं है, सब कुछ एडवांस है, पैसे पहले आएंगे, उसके बाद आप ऑर्डर को शिप करेंगे। तो नेक्स्ट जो एस्पेक्ट था वो ये था कि अब इसको कस्टम क्लियरेंस हो गया, सब कुछ हो गया, फाइनली अब इसका कंप्लायंस कैसे किया जाए। So we tied up with one bank, and that bank has given us a paperless solution कि आपका जो पेमेंट आया वो पेमेंट आने के बाद किस तरीके से वो कस्टम क्लियरेंस होगा, और पेपर आने के बाद किस तरीके से वो नॉक ऑफ किया जाएगा ईडीपीएमएस के अंदर, सो दैट रिपोर्टिंग इज गॉन टू द आरबीआई कि भाई ये एक्सपोर्ट हुआ और इसके अगेंस्ट में ये पेमेंट आ गया। तो ये सारी चीजें हमने की। आने वाले समय में हम लोग इसके कुछ सेमिनार्स कैलकाटा के अंदर और आसपास में करेंगे। तब हम जो हमारे टाइप्स हैं उनके स्पीकर्स को भी लेके आएंगे, और काउंसिल के मेंबर्स को कैसे बेनिफिट हो सकता है वो भी बताएंगे आपको। काफी सारे बड़े लोग हैं और काफी सारे छोटे लोग हैं जिन लोगों पे हमने ये ट्रायल्स करके देखा, और हमें लग रहा है कि काफी फ्रूटफुल है ये। और यही एक चीज है ई कॉमर्स, जो कि प्रधानमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक सपना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट। अब हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्टेबल बनाना मेरे ख्याल से सिर्फ ई कॉमर्स ही है जो ये कर सकता है। तो इसको हमें प्रमोट करना है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बिजनेस मॉडल बदल रहा है। मैं अपनी बात का समापन करता हूँ एक छोटी सी चीज बता के आपको कि 2020 जस्ट बिफोर कोविड आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क। आई वेंट टू वन पर्सन्स ऑफिस। ही सेड मैंने 6 महीने पहले बिजनेस चालू किया था, एंड लास्ट बैक ओनली ई कॉमर्स, एंड लास्ट ब्लैक फ्राइडे को मेरे को 8000 ऑर्डर थे, ओनली वन डे 8,000 orders. At that time, China was closed in 2020 February, and India was the only country at that time. India was open actually, and every country is now, as we know, that every country is working. All buyer countries are working as China plus one strategy, and उस समय वो भी ढूंढ रहा था कि कोई इंडिया का मुझे सप्लायर बताओ। तो ये पावर है ई कॉमर्स की कि एक दिन में 8000 पीस आप B2C सेल कर सकते हैं, एंड ग्रेजुअली बिजनेसेस आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स। इट इज अगेन अ वर्टिकल। तो अगर आप एक वर्टिकल की तरह करेंगे, जैसे एक दुकान होती है वैसे रोज खोलना है अपने लैपटॉप को, रोज लिस्टिंग्स करनी है, अपने डिस्क्रिप्शंस डालने हैं, स्टोरी डालनी है, बहुत सारे रील्स, वीडियोस, बहुत सारे फोटोग्राफ्स, ये सब डालना है, बायर्स से रिस्पॉन्ड करना है, उनके क्वेरीज को उसको जवाब देना है, एक अच्छी पैकेजिंग डेवलप करनी है जो कि वेट में कम हो और कस्टमर के एंड पे स्टर्डी तरीके से आपके प्रोडक्ट को बिना टूटे फूटे लेके पहुंचा जाए विद एन एक्सपीरियंस। व्हेन ही ओपन्स दैट, ही गेट्स दैट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग ए गुड पीस ऑफ ज्वेलरी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। So we'll be doing more and more seminars in Eastern region now. As regional chairman has given us mandate to do more and more seminars in Eastern region. We will do it in future. Thank you. If I'll add one more minute, I would correct him. He said to the GJEPC member, no, we will be enrolling any businessman who may or may not be GJEPC member, because एक बहु बाजार में छोटी सी दुकान लेके जो बैठा है, उनके भी कोई रिलेटिव अब्रॉड में सेटल है, उनकी मंगनी वहीं हुई, then they want a pair of bala. Then that relative may not come to ABC Jewellers in Calcutta,
but they may tell their own relative कि भाई बेच दो. So this will open floodgate of export to any and every jeweler in the country. Need not be an exporter. This is one, and people have to enroll. I won't name, but two companies in Calcutta have already enrolled in this process. Thank you. Thank you very much, Mr. Parekh and Mr. Khandelwal. This reminds me of that classic line from Landing on the Moon. A small step for a human being and a large step for all the jewelers. So thank you, GGPC, for sharing with us the phenomenal efforts that you have been taking in making even a small jeweler to a large jeweler everybody's dream come true. I think it's phenomenal. Thank you. And now let us, we have understood about e-commerce, we have understood about, or we have shared knowledge about how e-commerce is happening or it's coming closer to reality, how consumers are getting linked with different jewelers through OSPR. Now let me take you to another vertical. My next question is to Mr. Garg. In the morning, you had briefly touched upon the work that Skill India is doing on technology, like especially on the inventory management, like using AI and various other things. So if you could elaborate on that, and if you could just tell us how it will make the jeweler's life more easier or a retailer's life more easier using that technology. Sure. Thank you. So basically, I have one question for you, which I'll ask then actually request. But taking ahead the e-commerce thing, जो हम लोग काम कर रहे हैं या जो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज अपनी इंडस्ट्री में करने के लिए आईटी बॉम्बे के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली सौमिक दैट वुड अप्लाई टू बोथ योर फिजिकल स्टोर्स as well as e-commerce. So the one product which we are talking, and coming Monday we have a workshop in IIT Bombay in Mumbai, is about use of artificial intelligence and machine learning or data analytics, you can say, in your retail management. Now in retail, what do we want to do? If we know what are we going to sell in coming week or in coming month, it would make our life much easier. I was speaking with Mr. Ramesh. Now, one of the major challenge with all the retailers or jewelers is कितना inventory रखें. सर ने बोला 4 किलो से शुरू किया था. आज मतलब 4 किलो काफी है या 40 किलो काफी है या 100 किलो काफी है, we do not know. और वो रखने के बाद भी we have customers to whom we have not been able to sell anything. जैसा सर ने कहा, क्योंकि हमारे पास जो है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, whether customer wants that or he needs that, we do not know. So you, in spite of having all the in stock, all the inventory, you would still have customers who would go back without buying anything. Now the product which we are developing or which is now ready uses आपके store का data, आपके store की past history. If you have a record of like Mr. Ramesh would have, if you are doing number 1 ka kaam, if you have all billing and all the details, that data can be transferred to this model, this software, and it will give you projection for up to next 3 months on a week-to-week basis. It has capability to do on a daily basis also, but right now we have logged it on a week-to-week basis. In next week में आप कितने ring बेचेंगे, कितने pendant बेचेंगे, कितने earring बेचेंगे, कितने chain बेचेंगे, कितने necklace बेचेंगे और किस price point में. Suppose it says in next 2 weeks you will sell 200 rings. So it would also tell you वो 200 ring में से कितना ring आप 25,000 के नीचे का बेचेंगे, कितना रिंग 25,000 से 50,000 के बीच में बेचेंगे और कितना रिंग 50,000 से 1 लाख के बीच में बेचेंगे या उसके ऊपर. So it gives you the entire distribution of the forecast. And then we have been working on this for last 2.5 years. And then you see, जब आप actual sale करते हैं, you map what was projected versus what you actually achieved. You would be surprised to see that up to 95% it is accurate. So maybe it may predict कि आप 50 रिंग बेचेंगे, आप 50 नहीं 45 बेचें या 55 बेचें, but ऐसा नहीं होगा कि prediction 50 का और आप 5 बेचें.
So that actually, if you see long term, that helps you a lot in working out your inventory. You can very accurately place orders to your manufacturers, to your suppliers. You can decide that this is the first phase. In next phase, which might take maybe another year or so, we are trying to incorporate designs also, that it should be able to tell you which type of designs you are likely to sell. So it is totally, no human is involved in this. All your data, what you share, is all encrypted. आप अपने office में बैठ के, अपनी shop में बैठ के, you enter the data. Okay, it is all encrypted, and then it is machine, it is computer software which runs this data, and this is real time. अभी तक का जो डेटा है उसके बेसिस पे वो आगे का प्रोजेक्शन कर रहा है, नेक्स्ट वीक का आपका डेटा, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग डेली इनवॉइसिंग, आपका वो डेटा अपडेट हो रहा है, सो इट इज ऑलवेज करेक्टिंग, सो इट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. ये उसी तरह से है कि जैसे नीरज चोपड़ा है, वो जेवलिन फेंकता है, तो उसने शुरू किया तो he was not a world record holder, but because of his practice and doing it repeatedly every day, he kept improving. The same way this software keeps improving because it's a real time software, and that is why the concept machine learning. So this is the artificial intelligence कि मशीन जो है, जो कंप्यूटर है, वो आदमी की तरह इंटेलिजेंस को यूज करके it keeps improving. So that is a major thing, and this would not only apply to a physical store, this would apply to anybody who's in e-commerce place also. Now if you are selling 8,000 pieces, that could be an extreme this thing, but what type of pieces you keep on your e-commerce website? Because I have tried and for some gifting purposes, it is very, very difficult. You want a particular type of a thing, the type of designs you see, price point you can choose. Okay, I want between this price range to this price range, or you can choose probably the weight range, but the type of designs you get may not exactly be what you are looking for. So there is a lot of scope of use of AI on a e-commerce platform also. So that is one thing. Second thing, because I am from Skill Council, so I cannot go without talking about skilling and training. So we at GJSCI, we have developed a product, retail store वाले सब लोग हैं, सबके हमारे jewelry आपको retail करना है, बेचना है, तो you have people who sell jewelry. It could be your family, it could be your staff. So we call it as retail sales associate. Some people may be calling them a salesperson or whatever. Now we have a refresher course which is completely digital. Okay, कोई आप अपना फोन पे कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर पे कर सकते हैं, आपके टैब पे कर सकते हैं, ऑन योर सेल्फ बेस्ड है, अपनी स्पीड से कर सकते हैं. अभी मुझे 10 मिनट का टाइम है, मैं 10 मिनट स्पेंड करूं, एंड दिस इज अवेलेबल, दिस इज होस्टेड again on a learning management system portal. So any retailer can engage with us. We will provide this. It is not free, but there is a very basic cost. So we have invested a lot of time and money again in developing this. It is available in English and Hindi both. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी में है, वो हिंदी में भी है, and it has a lot of automation again, a lot of animation built in. So it's very interesting. It is not boring. किताब पढ़ने जैसा नहीं है. It is interactive. After it has 29 sort of units, what we call. After every unit, there are few questions just to refresh what you studied. And if you answer it wrong, it will tell you what the right answer is. And at the end of it, you would get a certificate. The person would get a certificate. Now, standard certificate is obviously GJSCI certificate. But if there is a big retail chain or a retail store, we can customize certificate to include your branding also. Now coming to my question for Nitin, you spoke about ODOP. Okay, and interestingly, ODOP is also one of the criteria for a lot of skilling projects from the government of India. But unfortunately, when we tried finding out, there are out of 700 plus districts in India, how many districts have jewelry as listed on ODOP? You try finding out, you will be surprised. In Maharashtra, there are only 2 districts.
Mumbai city and Mumbai suburban. That's all. In again, if you go to Gujarat, there is Surat. That's all. Yeah, Jaipur. So there are, I think, 4 or 6 districts only. You are doing a $60 billion whatever export and domestic market. But when it comes to jewelry manufacturing or jewelry as a product in entire 730 or 750 districts in India, there are only 4 or 6 districts who have jewelry as part of ODOP. And let me clear one more thing. ऐसा नहीं है कि ODOP में खाली एक ही product है. There are multiple products. ऐसा नहीं कि अगर ज्वेलरी आ गया तो कोई और प्रोडक्ट नहीं आ सकता या कोई और प्रोडक्ट आ गया तो ज्वेलरी नहीं आ सकता. बट एंड इफ यू सी, आप उसमें खाने के पीने के प्रोडक्ट देखेंगे तो यू विल प्रोबब्ली फाइंड 300 डिस्ट्रिक्ट्स which have food as an item on ODOP. So my request to you would be that DJEPC should also take this to the ministry, our commerce ministry, and ask them. We have done a study, NCAR study. You have 390 clusters there in that study. So at least वो 390 को तो ODOP में लेकर आइए. Because sir, because my problem is, I'll tell you. अभी हम ministry में जाते हैं अपने skill development में, तो उनके there are some schemes. So one scheme is कि ODOP में अगर jewelry है तो वहाँ पे हम skilling को support करेंगे. So Maharashtra government, for example, has asked to do us to do some training in Mumbai and Mumbai suburban. But हम जब उनको बोलते हैं कोल्हापुर में, ऊपरी में हम करना चाहते हैं, वो बोलते हैं नहीं वो ODOP में नहीं है. So it would help a lot if GJEPC along with other things, and this would help even the industry, because the moment it comes in ODOP, there are a lot of supports which are available even for export purposes. So I think that is one thing which I would request GJEPC to take up in the next submission whenever you have a So we'll come back to the question. सर मैंने क्या बोला पूरे सर आप नहीं आप पूरा लिस्ट देखेगा. मैं ये बोल रहा हूँ 750 डिस्ट्रिक्ट में हमारा 100, 200, 300 डिस्ट्रिक्ट तो होना चाहिए कम से कम. हम बोलते हैं ज्वेलरी इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अर्नर एंड वी आर not listed on ODOP. In Calcutta, we have 2-3 ODOP. Damjur, Ankurati area is an ODOP declared. I'm saying it's a district. Sir, please Similarly, share that Cuttack list with district. me. I've done a lot of research. Howrah is there, yes. That's what I'm saying. Even Cuttack district is Tarkasi. Gentleman sitting out is showing. He is here because Yes. of me. I got in here, but it is not in ODOP. Please believe me. Okay, we'll find out very soon. I think it's can be shared. I mean, it is available in public domain. So And if it is there, I would request DJEPC to share a list with us, because what would happen? It would help us to go to those districts and seek support in skilling of those artisans. I know, sir. Thank you, Mr. Garg. I think initially जब technology का बात आता है वो तो पहले तो we are troubled with e-commerce, this, that, so much of thing, and then we are talking about inventory management. But I think वो डर को अगर overcome करके अगर whatever you're saying, if it comes to reality, I think it is only going to make our life easier, better, and more efficient, because we are going to have inventory management to the optimal level. So I think it's a brilliant thing if it becomes a reality. But with that, let me come to somebody who's actually doing e-commerce in reality. My next question is from Mr. Nishit Nair. So I know that as a marketer, Nishit, you've been juggling with both online, offline strategies on and off. So as a player for both, what do you think are the main differences or the main challenges to do online businesses? Thank you. Hello. Thank you, Shami. So as a marketer for online and offline, so we generally have to look at a lot of aspects. What is the actual objective of the advertisements or the strategies that we are doing? When we look at an offline strategy, हम लोग क्या सोचते हैं कि customers को दुकान में कैसे लाएं? Our primary objective is to bring the customer to the shop.
उसके बाद सेल्समैन टेक्स ओवर, वो कस्टमर को दिखाता है क्या 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 प्रोडक्ट्स है, वो टाइम लगाता है। ऑफ ऑनलाइन स्ट्रेटेजी में क्या है कि कस्टमर अपने आप दुकान में घुसते हैं। थिंक ऑफ योर ऑनलाइन शॉप एज एन आउटलेट ऑफ योर ओन। हाउएवर देयर इज नो कस्टमर सर्विस। कस्टमर खुद घुसते हैं, खुद प्रोडक्ट चूज करते हैं एंड खुद चेकआउट तक जाते हैं। The strategy that you use when you're talking to a customer for your online shop is to get an immediate reaction. Customers say immediate reaction. You want them to react, you want them to move to the site or to visit anything to do with your products. After that, you can retarget them through our multiple mediums. When जब customer service नहीं है, हमारी strategy change हो जाती है। Online shops में हम लोग we want ease of use, we want the seamless movement of customer from entry to product selection to checkout. Everything must happen so fast that they don't realize that there's no customer service. That is your biggest challenge in on an online store. When you look at all the aspects in play, online obviously has its advantage of being a store that's always open. Customers can come in whenever they want. There are a few challenges, a few things that we must remember when we talk about an online store. E-commerce has changed drastically over the years. Since earlier, when you think about it, customers never spent money online, to now they don't think about it when they spend money. This shift means that customers will be willing to spend online. It's all about building trust. हमें अपने product पे trust, अपने brand पे trust create करना है. And that is where you bring your uniqueness or your brand identity into play. How you do it is the most important thing. There are a lot of things like Mr. Nitin had said, create reels, create your product differentiations, create photographies that creates a product visualization. Offline we talk about हम लोग branding पे emphasis करते हैं, lifestyle पे emphasis करते हैं, but जब हम लोग online जाते हैं, we talk more about the product. We create create that stimulus from the product visuals. Again, when you have no customer service, again मैं क्यों बोलता हूँ customer service नहीं है, because online customers अपने आप product they go through the product range themselves. There's always a debate कि ज़्यादा product रखना चाहिए, which might create product fatigue, or you create a certain range of product that give them less choices but a more distinctive choice कि आगे बढ़ते, they can move faster through the process. The jury is out, but मेरी feeling है product कम रखिए ताकि customers को choice don't have to get confused with choices and move ahead. Online, another thing which we feel, don't make your offers too complicated and keep your pricing as transparent as possible. Don't confuse them. अगर ज़्यादा confusion होगा, ज़्यादा promotions आप दिखाते हो, customer confused होके आगे निकल जाते हैं. They don't stay on. We must also remember कि जहाँ sale खत्म होती है, अपना service वहाँ चालू होता है. आज कस्टमर ने परचेज करके साइट से निकल गया, हमें उसके बाद कस्टमर्स के साथ टारगेट करना है. आफ्टर सेल सर्विस becomes more important because now remember she's made a purchase of a very high value. एंजाइटी होती है, पैनिक होता है कि अगर कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो कंपनी से, क्या होगा, क्या नहीं करना है, कैंसिल करे कि नहीं करे. इसीलिए हमें अपने एंड से कस्टमर को मैसेज करना, इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि आपका पैकेज ये है, आपका प्रोडक्ट रेडी हो रहा है या डिस्पैच हो गया. बिकॉज एक बार प्रोडक्ट अपने गोडाउन से निकल जाए, उस पर ज्यादा कंट्रोल हमारा एंड हो जाता है. Once the logistic partner takes over, your control stops, and it becomes even more important to communicate with the customer here. We must be in touch with them with every step. Package अभी यहाँ पहुँचा, आपके लिए deliver हो रहा है. Delivery होने के बाद भी customer को contact करना हो कि आपको मिला, अच्छा लगा कि नहीं लगा. Packaging becomes important. आपका customer जब पैकेट खोलता है, जो बॉक्स खोलने का जो एक्सपीरियंस है, that is tremendous. India, I think Amazon and Flipkart have changed the game. Customers can return goods without thinking. Nowhere in the world is that product खोलने के बाद पसंद आना चाहिए उनको, पूरा एक्सपीरियंस पसंद आना चाहिए. ये ना बोले कि हमको माल रिटर्न करना है.
So all these have to be taken into account. Difficulties, challenges are there. And one of the biggest things that I think we as marketers and brands must be looking out for is innovations. Disruptive innovations are रहे. अभी हम लोग बात कर रहे chat GPT and AI. Now सोचिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचिए कस्टमर अपना वार्डरोब का एक फोटो लेती है, आपके वेबसाइट पे जाती है, एंड फिर अपना AI से पूछते हैं कि अपना वार्डरोब के साथ क्या ज्वेलरी है जो मैच करता है. That's a game changer. She has choices available, and you can utilize that choice. So we have to keep in mind innovation and disruption that's going to take place, and these are challenges and all opportunities that we can look at. Thank you so much, Nishit, for talking about the challenges of running an e-commerce business. Now we are running short on time for the next session. I just have 2 minutes. Tejas here claims to have the data for what is selling online, the actual, and I believe fact is stranger than fiction. So let's hear it from him. So, it's very interesting. So we started at Osper, started observing what is getting sold across some of the largest brand in the country. So without naming the names, but you will guess when I say the largest brand in the country, you know which name I'm talking about. 85% of their online sales is gold coins. Let that sink in. It's gold coins. So it will count as sold by a certain jeweler, but it's a gold coin that is being shipped out. Why? Because it's a standardized product. I can trust when you tell me 10 grams of 22 karat gold will be delivered, I know what to expect. A brand which was recently, it's been around for 4-5 years, an ex-Tanishq employee started it. They have upwards of 55 to 60% return rate. I mean, it's a closed society. You can name the brands, no problem. Melora is what I'm talking about. These numbers are actually out there in their reports. This is the simple reason that when I receive something, when I see something online, I believe this is how it would look. When it gets delivered to me, oh, it's this small, I didn't realize. These are verbatim, consumer verbatim. Because when you put a picture, Yeah, zoomed in, right? So they write so many mm by so many mm, but when you receive it in hand, then you realize what the size is actually. And the other big factor when it comes to online delivery is the ticket size. And that's why I started with that. How many, what in percentage value, what do you think wedding jewelry is sold online? Is almost zero. It won't be sold online. That's what I mean by ticket size being a key factor. So when you sell online, the average ticket size of all the online players put together, including Carrot Lane and all, is anywhere from 20 to 22,000. And I'm talking about an entire category-wide median. It could be wrong for. There is a huge emotional judgment or decision to be made when you buy wedding jewelry. And it's never something that even you should target to sell online. You're looking at low decision-making purchases like casual wear, gifting, where you don't need too much of a decision or too much of an emotional connect to the product. Those are the products that go online. So you're looking at ticket size anywhere between 5,000 to 30,000. That's your online sweet spot. Which is the key point, right? Which is Nitish is making, and therefore developing that brand and developing a trust and understanding the consumer's very sharp need is where the D2C brands reside. So, and to add, I think we'll have to cut short the session now. Shamik, 1 minute, just to close on that point. So when he mentions also about, when you get the product, it's small, you need to also understand that that is a reality. You show a product zoomed in, but you need to also show it in perspective so that you reduce your return rates. Like as a brand, I can proudly say our return rates are very low. We're talking in the low fives, right? So because we made a point to show the product on perspective. So these are things that we need to consider as a brand marketer, that how to reduce your returns and increase your sales. Okay. Thank you everybody. I think this is a classic debate where we can still debate whether jewelry is a touch and feel product or a see and buy product. So we can keep this debate again next year. So for the time being, I think we'll have to end this session. Thank you all my panel members.
Thank you. Thank you so much, sir. I would request all of you to kindly stay back for the felicitation. Our moderators have been really strict about keeping the time in bound. Ladies and gentlemen, for this session, I'd like to call upon Mr. Harshad Ajmera, MD, JJ Gold Private Limited. Please welcome him with a round of applause. I would request, sir, to kindly felicitate Mr. Nishith Nair, Director, Chandrani Pearls Private Limited. A round of applause again, once again. Also, I would request, sir, to kindly felicitate Mr. Tejas Mehta, co-founder, OSPA. Thank you, Mr. Ajmera. Now, ladies and gentlemen, I'd like to welcome Mr. Ashok Bengani, President, Kolkata Gems and Jewellery Association. Can we welcome him once again? I would request, sir, to kindly felicitate Mr. Pankaj Parekh, Regional Chairman, East, GJEPC. I would also request to kindly felicitate Mr. Nitin Khandelwal, Deputy Director, GJEPC. And I would request all of you gentlemen to kindly have a group photograph. I would request sir to also felicitate Mr. Shomik Roy Chaudhary, Director, MP Jewellers. Gentlemen, what an invigorating session. And what did I just hear about the gold coins? Just imagine 500 years from now, when human beings shall perish, the aliens will come. They will find boxes of gold somewhere subdued under the soil. Oh my God, that sounds like a thriller movie script. But moving on, it's time that I move on to my next session. And the next session is a very, very special presentation by none other than Miss Achal Jaiswal. Please put your hands together as I welcome Miss Achal Jaiswal. Mr. Achal Jaiswal, Vice President, Business Development, National Stock Exchange. Once again, একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক, please. Hello. Yeah. Good afternoon, everyone. Dignitaries, guests, ladies and gentlemen. It's a very short presentation from our side, the National Stock Exchange. Just wanted to introduce the exchange products which are there with regard to metals. And one of the most popular products that currently trade on the exchange is the gold mini options at NSE. I'll just take a couple of minutes to make you familiar with our product offering on NSE's commodity exchange.
NSE is the world's largest derivatives exchange for the fourth consecutive year and ranks third largest globally in the equity segment in 2022. For NSE, the commodity segment is a separate segment, and NSE launched commodity derivatives in October 2018. It's been 5 years almost since then. It's a separate segment on NSE's platform. As I said, the market timings are Monday to Friday, 9 a.m. to 11:30 p.m. The contracts that are currently derivable on the bullion commodities include gold futures, gold mini futures and options, gold 1 gram futures, silver futures and options. We also have options on goods, which is NSE Gold Mini options, which are launched in 2020. Silver options were launched in September 2020. We also have the Brent crude oil 100 barrels contract on NSE's commodity exchange, the platform, which is separate. NSE has also received the regulatory nod from SEBI to launch WTI crude oil and natural gas contracts, futures only. Just to give you an idea about the options, by definition, options is a right to buy or sell a specified quantity of underlying assets at the set strike price on a specified date for buyer of options contract. There are two types of options, put and call, for people who are familiar with the same. The buyer of the option has the right, whereas the seller of the option has the obligation. There is a risk and reward associated with both. From a pricing perspective, the buyer of the option pays the premium for acquiring the right, whereas the seller of the option receives the premium for providing the right. A few salient features of the gold mini options contract on NSE. It's a 100-gram contract, physically deliverable with Ahmedabad pricing. The commodity transaction tax impact is negligible. There are no transaction charges on the exchange. Delivery charges are as applicable. Market timing, they said before, 9 o'clock to about 11:30 at night. The quote is in 100 grams. And we also have a market maker who's able to provide quotes as well as liquidity in the near month as well as the next month contracts. Why are we talking about NSE's gold mini options? Options, of course, are 30 times more cost effective. The transaction tax on options 15 times less than futures. Options will help you to hedge your risk suitably. No options buyer is required to pay any margins. And of course, bullion merchants and jewelers can take or give delivery. It helps them to even hedge their inventory that they might have, apart from taking positional trades. That's about it from our side with regard to gold mini options on the exchanges platform. I have my colleagues there at the stall, Prasenjit and Kunal, and they'll help you further in case you need to know anything more about the exchange product. Thank you. It's time that we felicitate our speaker, Mr. Achal Jaiswal, Vice President, Business Development, National Stock Exchange. Can I once again have a round of applause for him, ladies and gentlemen? I would request Mr. Shubhankar Sen, MD and CEO, Senco Gold, Co-Chairman, ICC National Expert Committee on Jewelry and Lifestyle, to kindly please come up on stage. I would also request Mr. Vinod Bamalva, Director, Nemichand Bamalva and Sons, Chairman, ICC Expert Committee on Jewelry and Lifestyle, to kindly come up and felicitate Mr. Achal Jaiswal, Vice President, Business Development, National Stock Exchange. Can we please have the memento for the felicitation?
Let's give him a round of applause, everybody. Thank you so much, everybody. It's time that we move on to our next and the final session for the day. The next session is on gold and infrastructure growth and gold products on exchange. My panelists for the session would be Mr. Ashok Kumar Gautam, MD and CEO, IIBX. I would also like to welcome Mr. Somasundaram PR, Regional CEO, India World Gold Council. Can we please have Mr. Kamlesh Sharma, GM, Department of Metals and Commodities, IFSCA, RBI representative. Mr. Kamlesh Sharma. And can I please have Mr. Purab Gupta, Founder, Director, Intellectual Institute of Derivatives and Management, IIDM. Ladies and gentlemen, the session shall be moderated by none other than Mr. Shubhankar Sen, MD and CEO, Senco Gold, Co-Chairman, ICC National Expert Committee on Jewelry and Lifestyle. Over to you, sir. Thank you very much. As we always say that, save the best for the last. So the session that we will end today's ICC 5th Gem and Jewelry Summit will be with this. And the most important thing is that this is a very important and a knowledge-oriented session that will determine the future with which the gold industry, the purchase, the standards, the various processes would work. My first question to Mr. Somasundaram, because in terms of determining the policy and the standards with which we in the future in India as a member of the jewelry community, we would like to work. So we have here in our panel IIBX, IFSCI. What, sir, to you would be in your imagination or maybe a reality in the future, the way we are procuring gold, the way gold is coming into the country, the standard, the quality that as jewelers or karigars we will procure? What is it in your mind that we foresee it happening and the infrastructure being built towards the same? This thing is with the India International Bullion Exchange, we should stop thinking of the exchange or the way of the future only from our point of view. We should start taking a global point of view. Globally, gold is playing a far more significant role in the monetary system. We are never going to go back to the gold standard as a this thing, but it is going to play a greater role. I mentioned this morning, 1,000 tons purchased by central banks. What does it tell us? That, to shore up reserves, they are trusting gold. Therefore, what we need to do as India is to actually start taking a global view of everything. If we can be the second largest consumer and India is growing to be 5 trillion, and once we cross 5 trillion, I think 10 trillion will be a matter of probably a couple of years, because then the momentum will be very different. Should we continue to be just buyers of gold through our OTC system resting on banks, or should we actually become a biggest bullion trading center in the world, most trusted for vaulting, for processes, for settlement, and for other things? At the moment, it does not appear very easy for us. It will never be easy. But if we can be a large trusted partner in all IT initiatives across the globe, why can't we be a large trusted partner in the bullion ecosystem? First of all, a vision has to be set and we have to move towards it. And IIBX is the first part of the vision. So to answer your question directly, our way of buying will change. It will become far more easier. You think of gold bar,
Today, you have to know some people. You need not probably, because those known people will be in the exchange and you can buy it. There will be less counterparty risk. There will be more bank funding for the jewelers. All this will happen. But this will happen only when we have a greater role in the global bullion ecosystem. I'm once again saying, at this moment, it will seem laughable. Oh, we are not even there. LBMA is handling it. Bullion banks are there. Indian banks are not there. But in I have now been working for 37 years. I can say I've seen the changes in India, and the changes that we are going to see in the next 10 years are going to surprise us more than what has happened in the last 37 years. Thank you, sir. A question for Mr. Sharma. We have heard of Shanghai Bullion Exchange, and I think that what Mr. Somsudram said, that we might be in 3 years seeing India in a much more powerful position in the bullion world. So what is the steps that IFSCA is taking towards, but ultimately we shall all benefit out of the rules, regulations, and the processes that you create? Yes. So when we talk of infrastructure in any space, so that forms the basis or the foundation for the building which you are trying to make or erect. You gave the example of Shanghai Gold Exchange, very relevant for India. Not things all Chinese or not all things Chinese sometimes may become a good reference point, but then they are never, you can always find something of relevance to us, right? So this is something which we have seen, that how from nowhere, if they built an infrastructure which suited their overall economic policy and their vision. So as Mr. Somasundaram said, so once we have our vision, I believe that we can build an infrastructure the way we built the kind of trust or the name in IT. In fact, today, the kind of road infrastructure for that matter. So why not gold? Now, that's where I believe that when you are making, say, as a regulator or from the policy side, right, the infrastructure is erected for what or for whom? For the participants. Right. Now, whether the appetite is there for the participants to actually try and look at the modern way, that is where the orientation outward, that looking at us from outward, that how do we look? How does the huge, sometimes chaotic gold market to an outsider, how do we view it from the outsider's perspective? Are we willing to do that? Are we willing to then ask ourselves, are we willing to change ourselves also? It is not that the business ethos or the business fundamentals are required to change. So what IFSC is trying to do in its, because the mandate is such that we become the gateway or the global entry point or exit point for India. Yeah. Right. So it's for broader financial markets, whether it is banking or capital markets or insurance or funds. So gold is a very, very important asset. So we have had inherent strength. We have the legacy outside. And IIBX, as Mr. Som again said, that is the first step. But that is just the first step. And while we take more steps, because there are a lot of things in the offing, we are working because these are the initial stages. We are trying to start a debate on multiple fronts. But I believe that a lot has to come from within the industry, and it has to demonstrate the appetite that they are willing to actually at least try this new path, which has become the global. There are already global examples, and in fact, if we fail to catch up, we are already late. But then when India starts moving, the elephant will still be able to actually make its presence felt. So if we fail to actually get interested or try or show or come or to take 2 or 3 more steps ahead, to at least try and look at it, that what is the potential and what are the possibilities through this experiment, which starts with IIBX. Otherwise, we believe that we have everything in place, and the regulatory support and the policy support
In fact, that is something which will not be lacking. Unfortunately, as there again the SRO idea, maybe that one policy point that okay, from the industry, this is one voice of the industry, and that voice or the opinion of the industry is then taken by the policy making side. That is very important. When we are making the infrastructure, we should have this dialogue, and the dialogue should be more honest, and we should all have more trust. All sides should have more trust in each other, and then we build the infrastructure that we need and we want and we deserve. That's what I thought, that from the regulatory side, there are a lot of players, but we can do a much better job than what we have been perhaps believing that we can do. That's what I want to do. So I understand, sir. मेरे को जो लग रहा है कि ये आप लोगों का जो expectation है और from the government somewhere down the line for the greater industry वो आवाज पहुंच नहीं रहा है. And I think the objective should be to make it more inclusive and reach out to the last point. तो वो effort हम लोग को continuously करना पड़ेगा. And I think that's ये जो IIBX है, बहुत सारी चीज जो है ना actually लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है. So we'll come back to you in terms of future में और क्या IIBX छोड़ के क्या आप सोच रहे हो ताकि लोगों को पता चले. अशोक जी, ये क्वेश्चन आपके लिए. हर बार आप आते हो कैलकाटा में और कुछ नया न्यूज और नया इम्प्रूवमेंट और नया अपग्रेडेशंस के साथ आते हो, तो इस बार IIBX कहाँ तक पहुंचा है? मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं तो अप्लाई करके भी बहुत सारे प्रोसेस एंड पेपर वर्क में फंसा हुआ भी रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, बट IIBX कितना दूर आगे पहुंच गए? थैंक यू. सो सेन साहब, क्या होता है कभी कभी, हिंदी चलेगा, हिंदी इंग्लिश? हाँ. क्या होता है सेन साहब कि कभी कभी सेनको जैसी बड़ी पार्टीज जब आ जाती हैं हमारे पास, तो हम लोग को थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ जाता है क्योंकि हम लोग उधर तक सोचे नहीं होते. जस्ट लाइटर वेन. So it's almost there. Okay, so now coming back to what new things and मेरा पुरानी बात जो मैं सबके लिए बोला है कि IIBX अगर बना है एक्सचेंज है, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज, लेकिन लेट मी टेल यू ये आप ही लोगों के लिए है. मैं थोड़ा सा संदर्भ और भी लेना चाहूंगा. अभी एक कोई काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें मुझे बुलाया गया था. उसमें कुछ इंडस्ट्री वालों ने बोला कि साहब ये कुछ मोनोपोली टाइप का चीज हो जाएगा या क्या है. मैं सिर्फ यही सबको बताना चाहता हूँ कि नया चीज ये है कि जैसे जब NSE यहाँ पे लिखा है, तो NSE नहीं आया था या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं हुई थी या डीमेट अकाउंट्स नहीं थे, तो उस समय का आप इक्विटी मार्केट समझिए. और जब डीमेट अकाउंट हो गए और NSE आ गया, तो उसके बाद का आप इक्विटी मार्केट समझिए. तो जो चेंज आया, दिस इज व्हाट everybody in the ecosystem is trying to do. कि क्या हम एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट, जिसको बुलियन डिपॉजिट रिसीट बोलते हैं, उसको एक्सचेंज पे ट्रेड करा सकते हैं. दूसरा, ये एक्सचेंज US डॉलर में है, तो इंटरनेशनल एरिया में IFSC हमारे रेगुलेटर हैं. क्या हम जो डोमेस्टिक इंपोर्टर्स हैं वहां पे एक लेयर को बीच में से हटा के, जो कि नॉमिनेटेड बैंक्स नॉमिनेटेड हटा के, मतलब वो तो है ही, लेकिन पहली बार एम्पावर किया जा रहा है क्वालिफाइड ज्वेलर्स को जो एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते हैं. क्या वो गोल्ड ले सकते हैं डायरेक्टली? दैट मींस कैन दे इंपोर्ट डायरेक्टली? अभी तक तो डायरेक्टली इंपोर्ट का है ही नहीं. सर क्राइटेरिया है 25 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ, राइट? जी सर, 25 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ. लेकिन अगर आप देखें तो IFSC ने एक और रिलैक्सेशन दिया है. जो TRQ होल्डर है उसमें 25 करोड़ का नेटवर्थ की बात नहीं है. जो TRQ होल्डर हैं और वो उनको क्वालिफाइड ज्वेलर की कैटेगरी में डाला गया है फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ importing gold through IIBX within the TRQ quota and within the timeline of that quota. So उसमें, लेकिन हाँ, फिर डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि जो DGFT ने जिनको कोटा दिया है उन्हीं के लिए, which is correct. So सेन साहब, आपकी बात
से, और ये कई लोग ये कहते हैं साहब सबको क्यों नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूँ देखिए साहब, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। हमेशा दिल मांगे मोर तो रहता ही है, ये दिल मांगे मोर साहब, अभी मुझे ये मिल गया, क्या है मुझे मिल सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज को हमें, जिन लोगों ने भी इसको बनाया है, स्टेक होल्डर्स हैं, रेगुलेटर है, गवर्नमेंट की काफी बड़ी बैकिंग है, बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, तो हमको ये उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेज पे क्या हम सक्सेसफुल हो गए हैं, उसके बाद हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे, फिर थर्ड स्टेज पे जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली कभी मार्केट में क्या हो जाता है कि जब हम फर्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो हर कोई थर्ड या फोर्थ स्टेज की बात करने लगता है। होगा, वो भी जरूर होगा, और हम चाहेंगे कि आप सबकी गुड विशेस रहे तो वो भी हो। और धीरे धीरे सुबह से हमने काफी सेशन सुने जिसमें इंडिया को ओपन करने की बात थी, रुपी की कन्वर्टेबिलिटी की बात थी, बहुत सारी चीजें थी। वो सब चीजें जब आएंगी तो दिस विल बी द आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर एनीबडी टू एक्सेस एंड पर ये सिर्फ पहली स्टेज है। मैं क्विकली आता हूं बिकॉज आई नो वी हैव अ वेरी टाइट टाइमलाइन। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको गोल्ड मिल सके। उसके लिए ट्रेड के 30 मिनट के अंदर हम सेटलमेंट साइकिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे अगर एक्सचेंज खुलेगा तो 9:30 से 5:30 तक हर आधे घंटे पे ट्रेड की क्लियरिंग साइकिल होगी, ताकि आपको बीडीआर इमीडिएटली मिल जाए। आज की तारीख में वॉल्ट अभी गिफ्ट सिटी में है, उसके बाद 2-3 और जगह SEZs में वॉल्ट खोलने की तैयारी चल रही है। जैसे ही वो सब चीजें होंगे, रेगुलेटर से भी नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग भी बताएंगे, ताकि हर सेंटर पे आपको गोल्ड क्विकली मिल जाए। तीसरा एक और चीज जो है हमको ये भी बता की जा रही है, हमारे कुछ बैंकों के साथ अरेंजमेंट हुआ है, जो हमारे क्लियरिंग बैंक हैं, उन्होंने बोला है कि रुपी डॉलर कन्वर्जन के 2 घंटे के अंदर स्विफ्ट मैसेज के बेसिस पे आपका डॉलर हमारे पास आ जाएगा, जिससे आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो देखिए, जो जो आप कहते जा रहे हैं हम आपको सुन रहे हैं, और वो सारी चीजें हम करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ स्पॉट की बात है। अभी गोल्ड का जो डेरिवेटिव्स का रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया है, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि गोल्ड फ्यूचर्स के ऊपर काम कर सकें और आपको इंटरनेशनल रिलेटेड प्राइसेस, जिसको आप यहां से बैठ के हेज कर सकें। और उसमें क्वालिफाइड ज्वेलर का कोई जिक्र नहीं है, एक्सपोजर ऑन गोल्ड प्राइस रिस्क अदर देन इंडिविजुअल। तो आप और मैं एज एन इंडिविजुअल छोड़ के जिसके पास भी गोल्ड प्राइस रिस्क है वो उसमें हेज कर सकता है। तो देखिए, स्टेज बाय स्टेज सब चीजें आती जा रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सही दिशा में हैं। इस पे काम बहुत अच्छे से हो रहा है, आप लोगों का साथ चाहिए। देखिए, अगर आप लोग हमारे पास ट्रायल ट्रांजैक्शन भी नहीं करने आएंगे तो हमें लगेगा कि साहब इतना सब खड़ा किया है हमने जो अरेंजमेंट, और आपने जो जो मांगा हम सब करते गए, लेकिन फिर अल्टीमेटली ये किसके लिए है? जैसा मैंने ओपनिंग सेंटेंस में कहा, ये एक्सचेंज आप ही के लिए है, और इस एक्सचेंज को सफल बनाना भी आप ही को है। लेकिन मैं सोम साहब की एक बात और बताऊंगा कि अल्टीमेटली दिस इज इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसके बारे में अभी बहुत सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको 800 टन अगर हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, सुबह आपने बताया था कि $60 बिलियन या कोई नंबर बताया था सोम साहब ने, प्राइस इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते चले जाएंगे, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट आते जाएंगे हम सेमिनार, रीच आउट प्रोग्राम या वेरियस एसोसिएशंस के साथ काम करके आप तक वो पहुंचाएंगे, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें IBX का। राइट। सो मेरा तो यही सोच रहेगा कि हम लोग का कैलकाटा या ईस्ट में जो भी ज्वेलर 25 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ है, दे शुड कम फॉरवर्ड। सेलर्स हो कि बायर्स, जैसे हर्षद जी जे गोल्ड, दे रिफाइनर्स है, दे शुड ऑल्सो बी अ पार्ट, क्योंकि वो मार्केट फिर बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली बाइंग मार्केट बड़ा होगा, सेलिंग मार्केट भी बड़ा हो जाएगा, नंबर 1। And the whole thought of becoming a price maker as an Indian, which will really help us overall in the business scenario. Market का demand up है या down है, price up down accordingly Indian market होता जाएगा। And आज जो एक चीज आप लोग को समझना है, जैसे मिस्टर सोमसुंदरम बोला, रुपी डॉलर कन्वर्टिबिलिटी, धीरे धीरे ये जो वाया बैंक्स हो रहे हैं, थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन, चीजें बहुत ही फास्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। बैंक्स का कमीशन, ये वो चीजें
ब्रिज होते जाएगा. सो थिंग्स विल बिकम फास्टर. इट इज जस्ट दैट हम लोग को परख करने के लिए पहले फास्ट मूव करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. पूरब, आप IIDM में हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेरिवेटिव मैनेजमेंट. तो इसमें आप लोग गाइड करते हो, कंसल्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस. आज गवर्नमेंट में कुछ न्यूज दिया है, वो लोग भी एनालाइज कर रहे हैं ऑप्शंस को लेके. तो सारे लोगों को ऑप्शंस मालूम नहीं होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. अगर आप बता सको कि प्लेइंग मतलब ये जो पूरा ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, ये बिजनेस के लिए कितना जरूरत है, एंड आप कैसे उसको हेल्प करोगे ताकि कि IIBX जब होगा तब गोल्ड लोन में मिले कि ना मिले, आउटराइट खरीदना पड़े, क्या प्राइस में क्या करना पड़ेगा. आप अगर कुछ हाउ डू वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ द एक्सचेंज. आज NSE भी मिनी गोल्ड ऑप्शन के बारे में बताया, सो आप अगर कुछ गाइड कर पाओ. थैंक यू सर. मेरे ख्याल से सब लोग ने इधर आमिर खान का 3 इडियट मूवी देखा है. मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ सर. राइट, एवरीबॉडी हैज सीन 3 इडियट मूवी. तो उसमें आमिर खान ने एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट दबाया, फैन चालू हो गया, इट्स अ मशीन. तो सिमिलरली जैसे अपन मॉर्निंग से सारे सेशंस में चालू है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मशीन ड्रिवन, बहुत सारी चीजें नॉल हो रही है. बट व्हाट वी डोंट रियलाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी जैसे अपन मशीन से सराउंडेड है, टेक्नोलॉजी से सराउंडेड है, वैसे ही अपने डेरिवेटिव्स से भी सराउंडेड है. डेरिवेटिव्स क्या है मैं उस पर बाद में आऊंगा. बट एक सिंपल जो अपन डेली लाइफ में करते हैं, अपने GML कर रहे हैं सारे ज्वेलर्स, CC करते हैं, USD INR करते हैं, फॉर दैट मैटर अपन बैंक से लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, सम वे और दी अदर वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है. ये तो चलो कॉम्प्लेक्स चीज हो गई. अपन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, अपन मेडिकल लेते हैं, एनी इंश्योरेंस वी टेक, एनीथिंग वी टेक, ऑल दीज आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. मैं डेरिवेटिव्स इस समय एक्सप्लेन करना इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. बट बहुत लेमन टर्म्स में ये है कि डेरिवेटिव्स अपने हार्ट में, अपने ब्लड में है, बस अपन अननोइंगली कर रहे हैं. वही सेम चीज अगर जब अपन नोइंगली करें, अभी एक एग्जांपल से जैसे अपने डिस्कस कर रहे थे, लास्ट मार्च जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ एंड ऑल हुआ, उस समय कॉमेक्स पे गोल्ड का प्राइस वाज $2100 तक चला गया था. बट वी वर एट 56,000 ओनली एट दैट टाइम. आज इवन एट 2000 वी आर एट 60,000 वो MCX. व्हाई? बिकॉज USD INR डेप्रिशिएट हुआ है. बहुत सारे लोग अपने जब IIBX पे कॉमेक्स का अपन ट्रेडिंग करेंगे तो ज्वेलर्स वो पर्सपेक्टिव से लेते हैं. बट फाइनली रिटेल में आता कौन है? जब रिटेलर को सेल करना रहेगा तो वो USD INR के कन्वर्जन के बाद सेल करता है. तो USD INR वाला जो एक इनके लिए बहुत, जब 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी तो USD INR फ्री फ्लोट होगा, बहुत अलग गिमिक प्ले करेगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जो इन्फ्लेशन हो रहे हैं, इंडिया जो स्टैंड आउट हो रहा है, इट विल बिहेव वेरी डिफरेंटली. मेरे को उसकी थियरीज में अगेन नहीं जाना है, बट वी आर इनटू द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन द एंटायर ग्लोब. और जब स्ट्रॉन्गेस्ट तो वो नहीं होएगा. एंड ऑप्शंस आर सच थिंग फ्रॉम एवरी रिटेलर टू एवरी मैन्युफैक्चरर टू एवरी बुलियन पीपल. योर आज मेरा बिजनेस क्या है? what we need to analyze more important. मेरा बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस प्राइस रिस्क लेना है या मेरा बिजनेस ज्वेलरी पे चर्निंग करके उस पे ज्वेलरी बनाना है, डिजाइनिंग करना है, उस पे मेरे को मेकिंग करना है और वो मेरे को कमाना है. अगर मेरा प्राइस रिस्क है, अगर मैं प्राइस के लिए अगर कर रहा हूँ तो मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हूँ, फिर मैं ज्वेलरी नहीं हूँ. तो एज अ ज्वेलर मेरा काम प्राइस रिस्क लेना नहीं है. और जब मेरे को प्राइस रिस्क नहीं लेना है तो उसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ? और वो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स होता है. एंड प्लीज बिलीव मी, डेरिवेटिव इट इज नॉट स्पेकुलेशन. डेरिवेटिव बना ही हेजिंग के लिए. तो अगर अपने को प्राइस रिस्क जो अपने पूरे बैलेंस शीट में से निकालना है तो इट इज ओनली डेरिवेटिव्स. एंड आवर बिजनेस इज टू मेक ज्वेलरी एंड डू इट फ्रॉम ज्वेलरी एंड नॉट फ्रॉम प्राइस रिस्क. तो प्राइस प्रोटेक्शन गिव्स फ्रॉम डेरिवेटिव्स. क्योंकि एक प्रैक्टिकल जैसे अक्षय तृतीया हम लोग का 1 महीने बाद है. हम लोग एज ज्वेलर्स वी नीड 15, 20, 25 days टू मैन्युफैक्चर. कस्टमर कुछ खरीदेगा, पर हम लोग अभी डर के मारे उतना खरीद नहीं पा रहे. सो यू थिंक दैट ये डेरिवेटिव्स हो या हेजिंग, जो भी प्राइस है उसमें खरीद सकते हैं? सर अगेन मैं जैसे बताया था कि फॉर अ ज्वेलर द बिजनेस इज टू मेक ज्वेलरी एंड अर्न आउट ऑफ ज्वेलरी मेकिंग एंड एवरीथिंग, डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग. प्राइस रिस्क यू शुड कीप इट सेपरेटली ओनली.
प्राइस रिस्क लेना ज्वेलर का काम नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन का काम है, उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो उन लोगों का काम है प्राइस रिस्क लेना। तो ऑल योर डेरिवेटिव्स, मतलब एज अ कंपनी फ्रॉम IIDM हम लोग हर ज्वेलर को ये गारंटी कर सकते हैं, हेजिंग कम्स विद अ कॉस्ट, कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, बट व्हेन आई कंबाइन इट विद योर इन्वेंटरी गेन जो इवेंचुअली आएगा, शायद जब सेल्स डाउन रहेंगे उस समय इन्वेंटरी गेन बैलेंस शीट्स में नहीं आता, बट इवेंचुअली जब इन्वेंटरी गेन आएगा तो इन्वेंटरी गेन प्लस माइनस योर hedging cost would always be positive, उसमें कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। This is where hedging plays an important role. Right. नहीं ठीक है, since this is the last panel and the whole topic is Vision 2025 with gold infrastructure, the future of gold, मैं हर एक panelist को यहाँ पे as a concluding remark पूछना चाहूँगा कि 5 years from now, where do you think we see the gold industry? Som Sundaram sir, आपने कुछ hints दिए हैं, but एक दो, like maybe top 3, and as jewelers, what will be your advice in terms of what we should do? I think that should be. Sure. One is in the short run. This is again, I don't claim to know anything, but we can clearly see government will allow export of bars at some stage, because now IIBX has come. If you export, you have bar gold here and it is at a discount, you could be able to export it and take your dollar out. I think it is something the government will do once IIBX is now in place. And if you represent properly, it will happen. That's clearly something which will help also. Second, I think broadly, we should now start we should have a outlook on everything in a global way. In the morning also I said, if I ask a question, what do you think is the eastern region, particularly Calcutta? We always used to say it is the Karigar capital of India. No, it's the Karigar capital of the world. We should start changing our mindset, actually. Once that is done, you will start saying, how do I export to US? Not to the Indians in US. How do I export to the US? So it is in such thoughts. In fact, I have already spoken to some people, including ICC, we will work and see, let us build a context. Next 5 years, what are all the big changes we are seeing? You think that people will continue to buy jewelry, gold the same way? It is good, they may, but suppose they change, what happens to your business model? That is where things like IIBX, the unique identification, they all come in handy. Unless you are actually going in at the initial stage, you will miss out. This trend in bullion has started. I think the industry should study in its own way, but be ahead of the curve. That's the only thing I would say. Lots of positives, lots of some pain will have to be taken, but it is better we take coming down. We are far better off. Mr. Sharma, from your side, 5 years, what all you think? Yes, so even as a regulator, perhaps a combination of wish list and maybe some sort of responsibility role in that is that I would want from the policy side, you want to call it, some committee, permanent committee, which is having representation from all sides, central bank, starting from the central bank, which itself becomes a buyer, of course. And then because it's a regulator and the policy decider for the banking system, which has to play a big role in the overall gold infrastructure. So from the policy side, one gold board wherein you will have the revenue considerations. So you know what should the custom duty, the ideal custom duty, which optimizes the revenue as well as it doesn't obstruct the market development, doesn't result in distortions. That is one. Number two, SRO from the industry, one voice. We have to agree. That is, again, that perhaps comes in the category of wish list from my side. That is number two. Number three, I can see India becoming the hub for refinery with the kind of emphasis there is on manufacturing in general. Whatever be the margin there, but we can do a much more efficient job when it comes to cost. It is something which should be possible. So that means that we should be having policy support for encouraging more import of gold ore
I will, again, it's a leap of faith. I won't rule out or exclude the possibility of a Dore product on IIBX. So again, so there may be some shades of wish list in this, but then these are not something which are not, which are out of reach. So this is 3. Number 4, I would want Indian banks to start coming out of the shell of the comfort which is inherent in the present consignment model, their role in the present consignment model. They start looking at themselves as a bullion bank. Because if you have IFSC for India and it is an international character, of course, because we have one thing there is no doubt about is that the globe is more interested in IFSC than maybe the Indian market, Indian industry so far. The globe is actually looking at a more active participation, more excitement from their domestic industry, but so they will be there. They will be there for their own benefit. And that is how we should become the trading hub. And the distinction between an Indian bank and a foreign bank completely disappears and melts away when we talk of IFSC. But again, as a wish list and maybe the regulatory side also, this is another change that the Indian banks will come out and be a bit more of active players in all entire spectrum of bullion banking side, not just financing, even trading support, liquidity providers, market making, look a bit difficult today, not for anything else, which is perhaps a structural weakness or something, but it's more about maybe on the side of the belief first. But I think it all will become reality. Right. And what we hear from the fact that 16 or 18 is closely linked with bullion and gold. I'm sure the industry will benefit largely with that. So thank you, sir. Ashok ji, आपका 5 years में अपना top 5 जो vision, Ashok. So I mean, so that my exchange name is India International Bullion Exchange. So all those out of 5, 4 are written there only. So let me elaborate. So India. So I'm very gung-ho on India and I want brand India. And when I say brand India, that's a much larger brand, but let's concentrate on India Gold. Can we all work together to have an international acceptance of India Gold brand? So any gold which comes out of India is globally accepted, not only for its beautiful designs, not only for its craftsmanship, but also for that purity and guarantee that whatever gold has been used, it has been responsibly sourced, it has been ethically done, and we have followed all the international as well as Indian standards, which are not only matching but better than international standards, and that gold is accepted. Today people talk about Swiss gold, people talk about Canada gold. Why not India gold? So that is my first wish list. Second is the international. Now we have to have our stamp over international bullion markets where we become consumers, so everybody is, very happy, and PAMs where we have to manufacture things for the international market. But that international piece is that as a bullion market, can I have my footprint on the international scale? That is my aspiration in the next 5 years. Third is the name, which is bullion. Now in bullion, obviously, we have gold as well as silver and other metals also. There, can we gain our rightful place, as a largest consumer? Can we also work together with the global bodies where we become a voice, where we take lead in setting standards rather than looking at them, oh, those are the standards, okay, we'll follow it. So that is another wish list which I have.
And obviously exchange. I firmly believe, I have been in the bank throughout my life and I mean, all love and regard for them. But I still believe, what we have seen in the equity and elsewhere in other commodities globally, exchange, because of the transparency, the democratic way, the ease of business, and the risk management which is inherent in the exchange system, is the way to go for the bullion pieces. And that is my wish list. Now comes the fifth point. Fifth point, my wish list is and say, this is yours and you have made it international. Thank you. Thank you, Ashok ji. Finally, Purav, आपके तरफ से, where do you see you're the youngest panelist here and a part of the industry? So, आप बताओ. I will have two different perspectives, one from consumer perspective and one from jeweler's perspective. So first I'll come from a consumer's perspective. To me, just to give you an example, in approximately 2000, gold was around 4,000 rupees, Sensex was around 4,000 rupees. Forget the real estate part. Today, Sensex is at 60,000, gold is at 60,000. So when everybody say equity is the best asset class to invest, people forget gold can equally be a good asset class to invest in. So from a consumer's perspective, making gold as the best financial asset is very, very important from a government of India perspective. We as an Indian have too much of gold in our inventory, too much of gold. Every household has gold. But how do you make it more as an investment opportunity for them? Like how equities are. It is so easy to buy and sell equities. Similarly, it should be very easy for a very common man, just not going to a jeweler because that is my only touch point. But how do I go and buy gold? How do I go and sell gold? Should be very easy of doing business to an individual also. So equity, like equity, gold as an investment class for consumer. Now, coming from the jeweler's perspective, jewelers are no banks, nothing. Jewelers are the only trust from ages, from ancestors. People are buying gold from jewelers and they will continue to do it. What important for them is how do you satisfy the need of an consumer? If you're able to give him the right design, right need at a right price, this is where he will always be happy. And as Ramesh sir said, you need to keep on adapting to the changes. So if you and the way next 10 years will come, the new age people will come, their buying habits will change, their investment tools will change, their trades will change. So if we keep that in mind, and if we make products which are comparative prices, which are absolute prices, and which are affordable prices, this is where the jewelry fraternity will change, and it will stand in global market as well. Because I'm very, very bullish on India, and India, जो strength India में वो पूरे world में कहीं नहीं है. Next 10 years जो उस चीज का अगर India में ताकत है, then why not jewelry as well? So jewelry can do great heights. Thank you. अगर हम लोग ये previous वाला panel में देखे, तो हम लोग देखे कि GJPC is taking the initiative of allowing Indian sell abroad below 8 level. So the opportunity, and as we all spoke from the morning, that it is a global vision with which I think we all in the Indian jewelry community has to work on. So thank you, our dear panelists, for a great session. Is there any questions? I think because we have such 2 minutes for question, if there are questions, yes, you can speak out. Yeah, hi, good afternoon. This is Sanjay Banka. I'm the CFO of Senco Gold. I have a few questions to the regulator. I came late, so may have been discussed. First point is on the gold bond. Like we are importing almost 1,000 tons of gold every year, and 600 tons are used by the jewelry industry. 25% over and above this is by way of recycling. Why don't we permit the gold bond to be raised by the jewelers? Like currently it's only a sovereign gold bond, but that's not very popular and clarity is not there. So that's one. I'm assuming that if the regulators can inform us what's happening on that. Second is on the digital gold. Like we have launched digital gold, but it can be made more trustworthy if the digital gold which we are holding with a third party vault
can be appointed through a trustee. So suddenly in some time around June 21, SEBI came out with a circular and debarred the existing trustees to act as trustee. So they debarred IDBI trustee to act as trustee. If that can be taken up, this DigiGold will be in place. And third is on the AML, the recent AML guideline which have been implemented for the jewelry sector. I don't know whether much clarity is there on that. The 2 lakh limit has been reduced to 50,000 limit, which will become a major handicap for the jewelry industry. So while the large and organized players can still continue, but the small jewelry players will face a lot of difficulty. So on these three things, if we can find some views from the regulator, or if you are taking it up with the government. Thank you, sir. Can I? No, first thing is, let me take the digital gold piece. The second question, clearly we have also represented. We are a little concerned about this digital gold growing everywhere because it's not definitely for a country like us. It's not very good. We need a regulation around it, or the government should simply say it should not. SEBI is looking into it because SEBI is launching the electronic gold receipt. There is some bit of what I would say cross wires. It'll get sorted, hopefully. At this moment of time, let me tell you, we are very concerned as a council also about the digital gold piece. There is no this thing there. Now, the first question was about gold bonds. Why can't jewelers raise gold bonds? See, gold bond is a liability product. Okay, when you take the gold from somebody and you say, I will give it to you 7 years later, government can do it. Even banks can't do it. To say jewelers must be allowed to do it will be a little bit of a stretch at this moment of time, because who will guarantee that? And who will regulate it? Again, sir, what I'm saying is some of the established players like yourself can probably handle it. But what we must always understand in India is rules are made for everybody. It can't be made for A, B, C, and D, but E and F will not have it. If E and F, who are not having same standards, also raise bond and they run away, what will happen? So the government will have to take care of that aspect. So unless we have a proper framework, it can't be done. What we can say is jewelers have been allowed to do gold monetization scheme. They collect it on behalf of bank. We must see how that can pick up, how jewelers can act as agents of banks. The last one I will comment is you spoke about AML. Okay, I have a different view. There must be ease of business. There is no doubt about it. But today, if I go and buy a 5,000 rupee mobile phone, sir, in a small shop in a corner, I still have to give my Aadhaar card, right? We must make a strong case why a jeweler, a minimum jeweler will have at least 1 crore in his stock. A guy who has invested 1 crore can't get Aadhaar card or a PAN card into this. It's a difficult job. I am saying you must be allowed to buy everything in the country without free, because now as it becomes digital, you look at our annual information system, you get very scared. Oh my God, did I spend all this? Okay. But we must make a strong case why we cannot get. I mean, people are coming to you who cannot account for that income or that cash. Is that why you're asking? So we need to make a stronger case. I take your point. Let me tell you, I'm sympathetic, and we also want the things to be faster. But the questions have to be answered a lot more strongly. That was my point. That no, No, comparison with the SIM card is slightly more stressed. I agree, sir. Yeah, but you. you can't, for instance, pledge a refrigerator and take money from a bank, right? You cannot pledge any of the white goods and take money from a bank, technically. Whereas this one, I can buy with a cash. Let's take it is unaccounted cash. I buy gold. I can still go to a bank and take a loan. Now, that in a monetary system will be a problem, because technically, ultimately, that's what I'm saying. We must not look at people like us. We must look at how it will be misused in the larger scheme. The problem is always the laws are never made for 98% of the people or 99% of the people. The laws are made for 1% of the people.
who break the law. That's the way it is. Just because, just if you spare me, just to supplement, in fact, it is actually not necessary now now for me to intervene, because you made it a point question towards the regulator. So I would just support the kind of drift Mr. Somsundaram was going about, that the kind of asks which we are coming up with, we should be really now a bit more careful, because I think in the closed room, we should not be shy away from telling each other or accepting the fact that the perception about the industry, perception about the customer of this industry is something which perhaps we also have to keep in mind. We have to do some work on that also. So these proposals, because they're all coming from well-intentioned, well-meant intentions, but at the same time, so in fact, coming from the Reserve Bank of India, we talk of digital payments. Right? Every payment is digital. In fact, in the DPSs, I may just share that when we are every day being fated globally about having the most advanced digital payment infrastructure, at least on the retail side. The CBDC will be as stronger, right? Now, but we are having this peculiar situation that we have the purchases of 200 or 250 rupees or 50 rupees, they are all done on a UPI. But when it is a land transaction or a gold transaction, people would say, take out some 50,000 rupees in cash. I have seen in Ahmedabad malls, some 20, 30, 40,000 rupees bill being used, settled by cash. So that's where the broader role, in fact, this industry, because of the very fact, it's not just like any other goods. Gold is almost money. It is like foreign exchange. From Reserve Bank's perspective, when I look at, I hear gold, it means foreign exchange. So we have to assume that much more responsibility, and these questions, suggestions, they are all very much welcome, because they address whether it is monetization, can we do a better job of financialization of gold holdings, that's all being there. But I believe that once we have one voice and we organize ourselves, and then on the policy side, there is one gold board, because most of these questions actually are meant for, you think that one regulator is sitting here, but then there are at least 5 or 6 different agencies in the government of India, maybe the central bank, who only can answer those pointed aspects. So I believe that this is where we can move forward. Right. Thank you, sir, for time. Lastly, with HUID coming in, I think one ask for the industry is EMI on gold jewelry. I think if that would help, that would really. I think, sorry to intervene, but we must make a strong case. We must assume everything that is good for the consumer and everything that is transparent will be done. We need the entire ecosystem to change. So the last one I'll tell you, we will not take PAN card. We will not take Aadhaar. As an industry, we say we will never take cash. All payments in the industry will be either through the new digital currency that RBI has brought or through UPI payments. Then we can simply dispense with everything. Is it possible? Thank you, everyone. Thank you, all members, for being a part of this wonderful thing. Thank you so much for that wonderful, wonderful session, and for being a lovely, inquisitive audience. On that note, ladies and gentlemen, I'd like to welcome on stage Mr. Vijay Soni, Director, Mahavir Dhanwar Jewellers. Can we please have him on stage with a round of applause? Sir, I would request you to felicitate Mr. Ashok Kumar Gautam, MD and CEO, IIBX. I would also like you to kindly felicitate Mr. Somasundaram PR, Regional CEO, India, World Gold Council. Thank you so much, Mr. Soni. I now request Mr. Pramod Dugar, Chairman, Indian Gems and Jewellery Creation, to kindly come up on stage. Sir, I would request you to felicitate Mr. Kamlesh Sharma, GM, Department of Metals and Commodities, IFS
CA RBI representative. And I would also request you to felicitate Mr. Purab Gupta, Founder Director, Intellectual Institute of Derivatives Management, IIDM. And ladies and gentlemen, how about putting once again a round of applause for our moderator for the session, Mr. Shubhankar Sen, MD and CEO, Senco Gold, Co-Chairman, ICC National Expert Committee on Jewelry and Lifestyle. What a vigorous session this was. Thank you, all of you gentlemen. And now to put forward the concluding remark, ladies and gentlemen, I'd once again like to welcome on stage Mr. Vinod Bamalwa, Director, Nemichand Bamalwa and Sons, Chairman, ICC Expert Committee on Jewelry and Lifestyle. Welcome, sir. What a fantastic day it has been, with eye-opening seminars and eminent panelists from all over India. This indeed has been one of our highlights at ICC. At the onset, I would like to thank Mr. B.A. Ramesh for being here and enlightening us with your knowledge, and your journey was very, very inspirational and inspiring. And we loved the fact that you spoke from the heart, and your pearls of wisdom will stay with us forever. So thank you so much, sir. I would also like to thank our panelists, Soma Sundaramji, Rajiv Garg, Ms. Vandana Yadav, Harish Ji Chopra, Samarda, Jigar Shah, Sachin Jain, Sunil Ji, Indonil, Shripal Dholakia, Somik, Nishit, Tejesh Mehta, Pankaj Ji Parekh, Nitil Ji Khandelwal, Achal Jaiswal Ji, Ashok Kumar Gautam Ji, Kamlesh Ji Sharma, and Purab Ji Sharma. I would also like to thank our sponsors, GJC, GJEPC, NSC, World Gold Council, and SGL Labs. And I would also like to thank all our associates and all our associations which are part of, which have sent their delegations to this event. We are very, very thankful to them. I would also like to thank the entire ICC team for a wonderful show, and Ms. Aradhana and Ms. Pooja for their hard work, and for the hard work and all the facilitation that they have done, and my GJC committee, and last but not the least, my co-chair Suankar, who has been like a rock. So thank you so much. Have a great evening. High tea is open. Please go ahead, enjoy yourself, and let's call it a day. Thank you so much. Thank you, everyone. That was a beautiful, beautiful day. Let's proceed towards high tea.